Hello, am I audible? Yes, sir, audible. Okay. So, how is it going, friends? Preparation? Any doubts so far? Ethics रे कौन doubt ଅଛି କିଛି? Any doubts so far? We're talking about in general doubts. No? You can see my screen, no? दिखाओ screen. ମୋ Yes, screen sir. share ହେଇଛି screen Yes, share sir. Yes, ହେଇଛି ତ? sir. Okay, okay. ठीक ଅଛି. So actually ଆମେ ଏଇ part ଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ part ଟା last chapter ଟା ବାକି ଥିଲା. So we'll cover this part, then we'll move on to the today's chapter is attitude. ठीक ଅଛି. So we'll move on to that chapter. In any case କିଛି doubt ଅଛି ଯଦି ପଚାରେ in general ethics ରେ କିଛି issue ହଉଛି answer ଲେଖିଲା ବେଳେ? Sir, Yes. ସାର୍ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଟା କୋଉଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ କୋଉଟା ନାହିଁ ସାର୍ ସେଇଟା ଟିକେ ସ୍ପେସିଫିକ କହିଦେବେ କୋଉଟା ମାନେ କୋଉଟା ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାର କୋଉଟା ଚେଞ୍ଜ ହଉନି। Can you just tell me the question again? Which values are permanent, which values are relative and relative to time ତ କୋଉ value ଗୁଡା change ହଉଛି with Yes, time? sir. See, Yes, sir. here very simple thing is कि ଆମେ permanent values କାହାକୁ କହିବା? Permanent values are those values which are some universal values, and these are some values which are related to humanitarian stuff, which is related to values like तो ये value गुड़ा कौन होगा? For example, equality, justice, truth, okay, even beauty को भी बड़े बड़े aesthetics भी कहा. So these are permanent values. माने every माने across time, across place, everywhere, okay, these values would be valued on their own, right? Then there are some values which change with time. Values which change with time are those values which might be, it might happen that those are some cultural values, okay, culture specific values, some country specific values, some values which are maybe due to moral reasoning तार से value गुड़ा change ହେଇଛି. And I had given example of this also. For example, I had given examples की values like कि women ମାନଙ୍କୁ जो घर ଭିତରେ बंद କରିକି रखा होता, so at one point it was considered to be a virtue कि women should be in the household itself, they should not venture out. But over the period ମାନେ time period ଆମେ realize कलु कि नहीं यार किसी point नहीं, एटा gender specific rather एटा gender bias ही होची, and this is also against human rights. So with moral reasoning ये value टा हमर change है ना. You can even talk about extreme values like जोटा ଆମେ negative values भी ଆମେ कहि परिया. For example जो हम देशरे सती प्रथा थिला, ଆମ ଦେଶରେ କଣ dowry system ଥିଲା, ଏଇ value ଗୁଡା ଆଉ ନାହିଁ ନା, due to moral reasoning with time it has now been abandoned. Now consider some cultural values. I had given you an example of lajja. This was considered to be a virtue for women in India. Now we are saying ki why should this be the case? Now with time also our thinking pattern has changed. We are saying ki if you are considering something as virtue, okay, means it is a good value, then it should be universal. Okay. Universal one, even that should be same for both genders. So why is this a gender specific thing? Similarly, if you go across countries, we are talking about female genital mutilation in some African countries. Now, even in those countries, even it's not like African country ମାନଙ୍କର ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ethics develop ହଉନି, ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ବି values change ହଉଛି. So with the development, they now consider this to be an unethical practice. So that value has also reduced. But then associated with this practice, what is the value? Can you say? The value जोटा एटा practice एथिरे होतला कि women ମାନଙ୍କର जो sexual urges को control करिया. So the control over women's body. Now this is something, this value is now being replaced with the value of bodily autonomy. Okay. Bodily autonomy. Even in the case of India, if you see bodily autonomy is in Navtej Singh Johar case re bhi, we also considered ki bodily autonomy, Supreme Court said ki it is a part of a person's fundamental rights, okay, under Article 21.
So these are values which change with time, right? तो स्पेसिफिकली देखियो जो वैल्यू गुडा आगुरु माने मने पकेयो को वैल्यू गुडा आगुरु हम देश रे सपोज जोडा व्हिच वाज अर्लियर वाइडली प्रैक्टिस्ड और दैट वाज प्रेवलेंट एंड एबे को वैल्यू गुडा चेंज हिच देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर कि कोन कोन अछि कोन नै. Okay. So let's come to today's discussion. आज होची ethics and human interface रे lessons from the lives and teachings of great leaders, reformers and administrators. So they have given specifically these three categories: leaders, reformers and administrators. So we will divide this into three parts: the great leaders, great reformers and great administrators के अछंती. We'll see what are the values associated with their lives. Now ये पूरा ये जो टॉपिक था ना, ये पूरा टॉपिक टा होची दुईटा जिंस, गोटे होची वैल्यू, गोटे होची स्टोरीज. तांको लाइफ स्टोरी जहाँ तुम लिखि पारियो जहाँ मने पड़ला. I will also give you some, tell you some few stories, and then associated with that, what is the value. If you can write these two things, then your topic रा समझे basic किछि नाही. So let us see which are the great leaders. Remember, Gandhi was not only a great ethical leader, he was also a great political leader. Please remember this. In the sense that आमे politics को बहुत खराब way रे use करछु आजकल, तो ଗୋଟେ negative connotation ହେଇଛି. But in general, if you see, he was a great politician. Now what does that mean? He understood the polity as well as he also understood the society. तो ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ motivate କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ movement ରେ ନେଇକି ମିଶେଇବା, he understood that very excellent, ମାନେ sorry, very well. So for example, if you see Khilafat movement, you see this Khilafat movement, what was his objective in Khilafat movement? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी खिलाफत मुवमेंट टाको बहुत लोग क्रिटिसाइज करते, करिया भी कथा, तार पॉइंट किसी नथिला. एंड स्पेसिफिकली व्हेन गांधी जी सेड कि ता पूर्व कौन हेतिला, जो हमर देश रे इन जनरल भी जेतले मास मूवमेंट स्टार्ट हबार पूर्व गांधी जी सेड कि ओके से सब जिंस साइड कर दियो, एबे हम पई सब इंपोर्टेंट जिंस होची कि टर्की रो जो खलीफा अछंती ताको जस्टिस देबा, एंड थ्रू दैट वी शुड गिव जस्टिस टू मुस्लिम्स, and this should supersede, this is my point, this should supersede all other national concerns of India also. Now why should this be the case? Okay. So this is why Gandhiji also criticized कि why should you say कि गोटे community को एते importance देवा पड़े, and because of this reason also, it was one of the reasons why communalism, माने communalism बहुत सारा factor भीतर गोटे factor होची early factors भीतर कि ताको सबले गोटे different way रे treat करा हो. So we should have treated them in the same way as everyone else, right? And in any case से वर्ष पर जेतले तांकर ट्रिटी ऑफ सेवरेस से सब जिंस सरला, देन खलीफा जो इंस्टीट्यूशन टा भी बैन ही गला पूरा कंप्लीटली, देन धीरे धीरे दे स्टार्टेड मॉडर्नाइजिंग इन जनरल आल्सो, दिस मूवमेंट डाइड आउट, एंड इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग डन बाय इंडिया इटसेल्फ. But you try to understand Gandhi as a politician, master politician. Gandhi understood that till then the Muslims of the country were not part of the mainstream freedom struggle. So someone को mainstream freedom struggle को आने पे, he said कि okay, we should take up their issue. So this also indirectly he was hoping at least to promote brotherhood and fraternity. Okay. Now a point नहीं कि बहुत लोग ताको criticize करते, but they don't understand कि he was also working very hard for the unification of the country. In fact, even during the time of independence, ଯେତେବେଳେ partition ହେଇ होतला, ସେତେବେଳେ पूरा देश रे बहुत सारा riots चलतिला. So Nehru, Patel, all of these leaders, they were in Delhi at the seat of power. So because नया government formation होची, but Gandhi ji was touring all the riot hit areas. ସେ ଏମିତି କୋଲକାତାର ନୂଆଖାଲି ଏରିଆରେ ସେ ସେଠି ଟୁର କରୁଥିଲେ, because he wanted peace to prevail. So he has also worked a lot towards brotherhood and fraternity, right? These are other generic points प्राय समझते लिखे, सत्याग्रह, दांडी मार्च, these are due to एथिरे कौन ethics आसे, truth, self confidence, justice. So self confidence in the sense आत्म शक्ति, might have read these terms in NCERT also, right? And specifically এই एग्जांपल टा प्राय भी बहुत पिला लिखियो, withdrawal of non cooperation movement, चौरी चौरा इंसिडेंट पर सेतेले non cooperation movement को withdraw करना. Although most Indians wanted him to continue it, but he said कि नहीं, non violence को हमें in no case should we resort to violence. So you see that level of dedication कि तापे तांकर निजर ही इनिशिएटिव को बंद कर देले. So that means he put means above the end. Means above the end माने this is a deontological ethics, right? We have discussed all of these things, deontological ethics, that some things are categorically wrong.
So Gandhi said कि violence is categorically wrong, we cannot justify violence. So these are the values that we learn from Gandhiji. Similarly, if we talk about Ambedkar, what do you learn from Ambedkar? Social justice, constitutionalism. He was the father of Indian constitution, and rule of law. Equality and equity in general. You can say कि every caste class they should be treated equally. Right? You can give example of Pune Pact. For example, he was fighting for equality or justice for the Dalits. Right? At that time, it was called as depressed classes (DC). He had written journals like Muk Nayak, Bahiskut Bharat. All of these you can give examples as these are the values which were championed by B.R. Ambedkar. Right. Now, if you talk about Sardar Vallabhbhai Patel, what are the values which were important for Sardar Vallabhbhai Patel? National integrity, because he was the person who took the most part, or his contribution was the most in the unification of the country, unification of India. You had have read this in post-independence consolidation. Right. So through means of carrot and stick policy, he threatened many people. He also gave them lot of ब्राइब तो कहबनी ल्योर करके आणागला फॉर एग्जांपल प्रिंसली स्टेट्स मान को इंडिया रे मिसिया पई थ्रेट थिला कि तुम यदि न मिसियो तुमको तुम ऊपर मिलिटरी एक्शन एंड माने कैरट कौन थिला फॉर एग्जांपल प्राइवी पर्स okay this was the carrot given to the princely states if you become part of India you will get annually you will get a lump sum amount from the government of India ठीक अछि ताको गोटे huge amount गोटे दिया होतला and Indira Gandhi government later on they abolished it. Now some people also किछि लोग कोन हिस्ट्री न बुझी they will criticize it कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एमन पैसा दउतले नहीं. Okay, so for them it would be as if कि Indira Gandhi was a hero who came in and stopped the private first thing. The point was that at that time this was required to lure them and to bring all the parts of India into under one government, a democratic government. So for that he did whatever was needed at that time. जहाँ को threatening करिया कथा threatening देले जहाँ को threatening रे काम हो नथिला ताको लोभ देकी आना. So he was this he is also therefore he is sometimes known as the Iron Man of India. Right? You can write under his policy you can write about also pragmatism. ये value गुड़ा भी हम लिख परिया pragmatism. Right? You can even write चलो Machiavellianism तो बहुत अधिक है जो so pragmatism you can write. Social unity, administration. This is okay. This part social unity, administration part is really important because if you remember, he was the person who said, "जे की Indian administration को कहते steel frame of India," and which is nowadays being criticized as the plastic frame of India. Right? तो माने कौन के कोई परियो? What is the difference? Steel frame of India and plastic frame of India. Yes, anyone? प्लास्टिक बकल कर जीवो प्रेशर रे लेकिन स्टील टा Very बकल good. करिवो. Excellent. So he envisioned a type of administration which would not bow down to pressure. But actually ଏବେ କଣ ହଉଛି ଏବେ IAS officer हो OPS officer IPS officer whoever you take under political executive ଯେତେବେଳେ political executive ର huge pressure ରହିବ ମାନେ they cannot withstand, right? Because very simply they will feel that at the end of the day our job is in the hand of the political executive. So Sardar Vallabhbhai Patel's idea of administration that should be the steel frame of India is now being criticized that it has become a plastic frame of India because plastic will bend under pressure. Similarly, he also took many steps to establish a robust police system in India. In fact, if you see at the time of independence, 1947 time रे कौन थी there was a huge demand in the country कि हमें entirely IAS IPS institution को IAS specifically ताकि उसमें बंद नहीं कर रहा because at that time it was called as ICS Indian Civil Service. Okay, and they were because they were part of the British administration, so they were the tools for the operation of India as well. But Sardar Vallabhbhai Patel was the person who actually जेटाକୁ support କରି कहले कि नहीं सेटा negative way रे जो tool टा use होतला we can use it in a positive way. So he is the person for whom actually this steel frame of this IS service also exists. Otherwise it is possible that ଆମେ ଗୋଟେ spoil system ଏବେ it is very likely that ଆମର ଗୋଟେ spoil system ବି ହେଇପାରନ୍ତା. Spoil system in the sense कि जो government ଆସିବ power କୁ ସେ ତାର ହିଁ ଲୋକ even executive ରେ ବି ତାଙ୍କର ହିଁ ଲୋକ ସେମାନେ ନେଇ ଆଣିବେ. For example suppose କୋଉ ବି party କୁ power ରେ ଆସୁଛି
तो सी कौन करे, दे विल जस्ट अपॉइंट देयर ओन चूजिंग ऑफ कलेक्टर, बीडीओ तहसीलदार सब है एसपी समस्ते तांकरी लोक पार्टी लोक ओके दैट वाज आल्सो ए पॉसिबिलिटी, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज डिस्कस्ड एट दैट टाइम, बट ही सेड कि नहीं एमती यदि हबो, ही हैड दैट विजन करप्शन सेतले बहुत अधिका हबो, ओके सो इट इज बेटर टू हैव अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दैट इज द आईएएस एंड आईपीएस एमन सब परमानेंट एग्जीक्यूटिव ही के रहे. So similarly you see this story, this is a very intriguing story. से तो 1909 में तांको वाइफ पर डेथ ही गला, से he was a lawyer at that time, so he was arguing in the court, तांको आसी जने चिट देकी गले कि आगे आपनकर वाइफ चली गले, so he just read it calmly, put it in his pocket, then he continued his work, then सब argument सारी की तापरे वापस घर गले. So what is this showing? This is showing dedication to duty. So another value you can also write ki dedication to duty, right? Or you can write professionalism. These are all values. Similarly, Lal Bahadur Shastri in case, I think most of these terms, things you must know. Resigned as railway minister after one railway accident. So this shows what? Right? Integrity. Integrity asla in mind, always you should think about Lal Bahadur Shastri. It was the epitome of integrity in India. So this thing also we had discussed कि जेतବେଳେ ଆମର 1964 war time रे ଆମ ଦେଶରେ food shortage ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲେ କି ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମେ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ଯଦି ୱିକଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବେ ତାହେଲେ କିଛି ଫୁଡ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ. ବଟ୍ ବିଫୋର ଆସ୍କିଂ ଅଦର ପିପଲ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ, ଫାଷ୍ଟ ସେ କଣ କଲେ, ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେ ଫାଷ୍ଟେଡ୍ ଏଣ୍ଡ ଦେ ସॉ କି ଏଟା ହେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ହେଇପାରୁଛି ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଆସ୍କ ଦି ଅଦର୍ସ. ଦେନ୍ ହି ୱେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ and then he asked the country people, our people, that you should try to fast at least one day a week. ସେମିତି ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋନ୍ ଥିଲା, ରାଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା କିଛି ନା ଲୋନ୍ ହିଁ ଥିଲା. ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେ ବୋଧେ ଗୋଟେ କାର କି କଣ କିଣିଥିଲେ, ବଟ୍ in any case his wife repaid that loan after his death. So see, the prime minister of India, he is having loan. So you see the level of simplicity of the person. We had discussed under Atal Bihari Vajpayee Pokhran test, ଆମର ଯୋଉ nuclear test आइतला. This nuclear test came despite the huge pressure of the Western countries, specifically US. I had told you कि US तार ଗୋଟେ naval ship को पठेइथिल to threaten India, but he had the vision कि हमको long term रे हमको nuclear power हवा India रो, it is necessary for our survival. He had the wisdom also. Wisdom कौन कि हमें जदि nuclear power माने at least we don't start a nuclear program, ଯଦି ଗୋଟେ start କରିବା ସେଟା ଆମ civilian nuclear program को भी convert ହେଇପାରିବ ତାର ଗୋଟେ part, because it is a dual use goods or dual use technology, right? It can be used for both civilian as well as military purpose. So he had that wisdom and he also had the willpower to continue despite the pressure. So you can write these values: vision, wisdom, willpower. Abraham Lincoln को विषय कुआ हुए से बहुत तरह से जो this is a myth, I think around 13 time or 8 times he had failed as president to election, but you can write it. I don't think even the examiner would know, but से एत टाइम भी प्रेसिडेंट इलेक्शन पे एत टाइम ठिया ही नथिले. एक्चुअली बहुत लोअर लेवल तांकर कांग्रेस आ सेनेट रे बहुत तरह से माने कंटेस्ट करिया को जाय कि बहुत तरह defeated, he was defeated, but ultimately he became a president. He was also the person who abolished slavery in USA. Similarly, national unity, he united the states of America. Okay, if you माने American history यदि देखियो तांकर actually northern states और southern states मान को भितरे huge dispute थिला. southern states माने कोन करथिले, सेमान के they wanted to promote slavery because सेठी बहुत सारा cotton farm थिला, तांक पे cheap labor दरकार थिला. तो से लेबरर माने को माने थिले जो मन को अफ्रीका रो सब स्लेव करिके आना हितला. And if you know this in polity, जे यूएस यूएस रो गवर्नमेंट इट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम इंडियन, सॉरी यूएस रो फेडरेशन जोटा इट इज अ डिफरेंट फ्रॉम इंडियन फेडरेशन. द डिफरेंस इज दैट इंडियन फेडरेशन हमर तो फेडरेशन ही नो, हमर यूनियन, हमर फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स अछि, बट वी आर ए यूनियन. तो दिस यूनियन इज नॉट द आउटकम ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स, राइट? प्रथमे हमें पूरा एंटायर कंट्री टा इंडिपेंडेंट हला, देन वी गेव फर्दर पावर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर हला स्टेट्स मानु. But in the case of USA, individual 50 something states, they came together by an agreement, and the person who created this country was national unity kariyare. He was the main person. That was Abraham Lincoln. Consider Winston Churchill. Can we write some good
values related to Winston Churchill. The main value is leadership, specifically during Second World War. Tenacity means to continue despite a lot of adversity. So he was actually, if you want, you can watch that movie Churchill, Joda Gary Oldman for a movie. It's a very nice movie. You will see that even political leadersମାନଙ୍କୁ କେତେ difficulty face କରିବାକୁ ପଡେ. Even when you are ethically, you know what is right to do, it is not very easy to do. You can write some current affairs ରୁ ଉଠେଇକି ଲେଖିପାରିବ Zelensky ବିଷୟରେ, who is the president of Ukraine. Right? So initially everyone expected him to run away. ଯେତେବେଳେ Russian invasion ହେଲା, we expected that he will not stay, but he stood with his army. So leadership, patriotism, these are reflected in this person. Similarly, come to these parts, economic leaders. किए के हमें लिख पे रहा Steve Jobs. Here you can give example of entrepreneurship, innovation, leadership, public relation skills. Actually, one of the main reasons why Apple, I had told you that Apple is one of the most profit making company and largest companies of the world, and तार actually जो worth था, it is more than some GDPs of entire countries, which is smaller country मान को GDP to be बड़ा. And how did it come? He started this company from a garage of his house, but he was so dedicated, he was so devoted to his work, and he had this, yes, you can also write vision. He had this vision कि how can we make जो communication जिनसटा काम करते simplify कर परिया. So Apple जिनसटा होची USP जोड़ा पाए होची simplicity or ease of use, and the second is ergonomics. Ergonomics माने how we can human or machine interface को हमें केमती easy कर दे परिया, which will be easy for us to use. Right? So it is also said कि Apple products are very intuitive, वो simplify कर दिया उसमें. So these values you can write: entrepreneurship, innovation, leadership, public relations skills. Steve Jobs gave a very nice college validation speech. देखियो, I think you might have seen that video, very inspiring video. He told 3 stories only, and you just watch it. It's very inspiring. What is the essence of any business? Okay. Or in general, what is the essence of success in life? Elon Musk, you can write, ତିନିଟା ତାଙ୍କର failure, 3 consecutive failures which burned out all of his cash. Our fourth, whatever the left amount thila, ସେଟାକୁ ସେ fourth launch ରେ he used it, and if that had also failed, then entire SpaceX would have gone out of business. But that succeeded, and finally that led to the growth of the first relaunchable or reusable space vehicle. So this was a record at that time, right? SpaceX, Tesla, Boring Company is these 3 are all Elon Musk's company. So what values do we learn from him? Perseverance, because he was working again and again despite failures. In fact, there is one very important, very inspiring quote by Elon Musk. When you have to do something, even if the odds are against it, all of the odds are against it. Okay, something like that. I'm not clearly monopoly, but the point is, even if the odds are very much highly against you, still you have to do it if that work is very important. So what is our goal? For example, for Elon Musk, it is very important that humanity or human species should be a multi-planet species or multi-planetary species. The point is कि he is thinking कि जदि हमर entire humanity गोटे earth रे समस्ते आमे ही अछि, suppose गोटे asteroid केबे गोटे आसला, entire earth will be destroyed. What happened to the dinosaurs can happen to us also. So he wants that at least हम भीतर किछ लोक जाय कि Mars रे जदि रही थिबे और moon रे रही थे कि छोटा अलग planet रे रही थे, so some people would be there to repopulate the earth back again, or अन्य को planet रे जाय कि will be able to survive, our species will survive. So this is, you see, ଲୋକଙ୍କର ଟେନସନ କଣ କି ଆମକୁ ସରକାରୀ ନौकरी ଦରକାର, ଓକେ, ଆମର କେମିତି ଆଇଏଏସ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ବାହାରିବ, ଆଉ ଇଏ ଲୋକକୁ ରାତିରେ ନିଦ ହଉନି କି ଆମ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ମାର୍ସରେ ପହଞ୍ଚେଇବି. So that is the level of dedication. If you want, you can write some Indian innovators ମାନଙ୍କ କଥା, entrepreneurs ମାନଙ୍କ କଥା. You can write about even who is the founder of TCS, sorry, Infosys, Satyamurthy or something. कौन था ना, टाटा कंपनी का Narayan Murthy. Narayan Murthy and his wife Sudha Murthy, simple Sudha. She is very simple.
and Narayan Murthy who is saying we should work for 10 to 12 hours a day. Okay, so you can write those things also. What are the values associated with these people? Again, you can write values like vision. You can write about perseverance, right? Here also you can add one point, which is indigenous technology and talent. Okay. Because if you remember, TCS companies like TCS, Infosys are the companies which put India on the global map of software business. Right? So that is why these are the values we can learn from them. Leaders in sports, some points you can write. Most people will write about MS Dhoni. MS Dhoni के पाखरे कौन better जिनसा street smartness. Right? That is sometimes it is also known as practical intelligence. Something which is academic intelligence what is, and there is one which is practical intelligence. Academic intelligence which is suppose one person who is topping the maybe UPSC or PSC. Practical intelligence is some person who is able to, for example, better deal with people. Okay, who can, for example, do very well man management. These are all examples of street smartness. Emotional intelligence in general, he knows how to, again, how to use his people or how to use his players very effectively. Leadership, of course. Similarly, Muhammad Ali, Mary Kom, you can go through the PDF. Some generic points you can write. Right. Now come to reformers. Reformers के भल अच्छा राजा राम मोहन राय. In general, तुम हिस्ट्री जब देखियो ये चैप्टर उठे देखियो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया. ये चैप्टर you will get enough content by. I have picked some few reformers of my own choice. For example, if you talk about Raja Ram Mohan Roy, abolition of Sati kartile, reform of Hindu religion, he was also against casteism. So what are the values we learn from him? Gender equality and empowerment. We learn about equality, rationality. Rationality is Hindu religion reform. Similarly, Ishwar Chandra Vidyasagar, he actually established a lot of many schools for girls education. Widow remarriage, actually 1856 if you remember, that widow remarriage act was passed, and he was also against religious superstitions. Vidyasagar in Kolkata, I think he established around 35 or so schools along with his associates like Drinkwater Bethune. So modern Indian history. So what are the values that we learn from Vidyasagar? Upliftment of women, spirit of scientific inquiry, equality and fraternity. Right. सावित्रीबाई फुले कथा मुझे कहती. डू यू रिमेंबर दैट स्टोरी? मु को क्लास रे कहती मोर मन नहीं. से जेतले से शी एस्टाब्लिश्ड स्कूल फॉर girls in Pune, and this was the first such school which was established by Indians. Agro Christian missionary man established करथिले, but she was the first Indian to run this girls school. So जेतले से स्कूल को पढ़ाया को जाउथिले, किछि सेठिकार जो लोकल लोक थिले which are very orthodox people, conservative people, they protested against her, and से बाहर को जाउथिले तांको ऊपर गोबर माडा कर. And she was that kind of person कि से जेतले एमती लोक माने तांको ऊपर गोबर फिंगंते रास्ता रे जाउथिले, she will come back to her house, she will change her sari, गोटे साड़ी सब रखिथिए लाइन में, गोटे change करिए, then she will go out again, and this happened multiple times a day. So imagine what is the level of courage of this woman who was facing the society like this. Okay, ଏବେ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ସେ ତ ହେଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡା କରିପାରିବେନି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, because the majority opinion overwhelmingly ଥିଲା କି it was against women education. Okay, even that was a time when it was said ki if a woman is getting any education, then they should lead to early death of her husband. ମାନେ ଏତେ irrational କଥା ତମେ କେବେ ଶୁଣି ନଥିବ, but this ମାନେ these are all well documented things. Okay, जो से लोग पाठ पढ़ियो तारो husband जल्दी मरिଯିବ. So this is the level of opposition they had faced. Girls' school, untouchability and casteism. If you remember Jyotiba Rao Phule and Savitri Bai Phule, they had worked a lot against untouchability and casteism. They were also working towards the upliftment of Dalits. Similarly, Sri Narayana Guru. If you remember, he established one Sri Narayana Guru Dharma Paripalana Yogam SNDPY. He was one of Ezhava caste of Kerala. This is considered one of the untouchables, and they were not allowed entry into
temples. So what Narayan Guru did was that he went to a stream, गोटे झरना को गले, झरना रो गोटे पत्थर आनले, गोटे मंदिर तैयारी कले, से मंदिर रे कोनोसी आइडल को रखि नथिले, he just kept that rock. आ से टेम्पल रे लिखा हितला कि एटा होची सेमतिया गोटे rock which we consider as god, and people from any caste can come to this temple and worship this rock. Okay. So equality, justice, rationality. He was also a propounder of rational or logical thinking. So he was against religious superstitions, against religious rites and rituals and superstitions. Similarly, if you see Swami Vivekananda, कौन करते religious reform movement करते okay. Actually, Swami Vivekananda was the person who very emphatically put Hindu religion on global stage. Specifically, after the Hindu तो कहा ठीक है, rather Sanatan, that is a bigger thing. Sanatan religion on global stage, as well as he also gave this tolerant vision of Indianism or Indianness, right? कि सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव. So एटा के माने ऐड करके संभव लिखंती, that means समभाव. Okay. सर्वधर्म समभाव माने सब धर्म को हमें इक्वली ट्रीट करिया. He was also he was an activist also. So Ramakrishna Paramhans मिशन नो से लीडर थिले. So this was doing a lot of charity. It is also called as, sometimes called as a man making mission. Man making mission माने this will build character. Okay. Similarly, he was also involved in cultural renaissance. Cultural renaissance here means rebirth. Cultural rebirth माने Indian culture or rebirth. Rebirth कौन हला कि back at that time जेतले colonial rule चलथिला सेतले हमरो culturally भी आमे निजको inferior बोली माने करथि. So he was one of the earlier persons जे कि कहले कि नहीं Indian culture रे बहुत दम अछि. Okay, it's not as if कि these people who are coming outside they are superior, we are inferior, सेमतिया नहीं. But the point is we have to reform it. So he not only reformed the Indian culture but also emphasized कि we what culture we have that is adequate. Okay. It is not inferior to any other culture. Fraternity or common brotherhood, initiative taking, for example, youth empowerment. ता पे बहुत काम करते. Here you can write a few quotes. Arise, awake, and stop not till your goal is reached. Right. Then Odia leaders and reformers. These are something that we had discussed in our co-classes society. I think we had discussed all these points. गोपबंधु दास कर कौन कौन वैल्यूज अच्छी, चैरिटी, वेलफेयर, अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, नेशनलिज्म. मधुसूदन दास को पाखर हम कौन वैल्यूज शिखु, सोशल रिफॉर्म, पैट्रियोटिज्म, फिलांथ्रोपी. फॉर एग्जांपल, आई रिमेंबर वन स्टोरी that Madhusudan Das, if you remember, yes, you can even write entrepreneurship also. Madhusudan Das, he had a few किछि तांको घरे गाई थिला. ओके. देन कोन हला कि तांकर जे घरे जे काम करथले लोकडी. So after some time Madhusudan Das came home and से देखिले कि से लोकडी तांको घर आगे लंबा लाइन लागिछि किछि गरीब लोकंकर. तो से आसे पचले कोन हो चलछि एठी, सान कहले कि आज्ञा एठी पूरा क्षीर मिलुछि. तो मधुसूदन दास वाज सरप्राइज्ड. ही वेंट टू घरे जे काम करथले तांके पचले कि बाबू हम क्षीर को किए लोकन दउछि. तो से लोक तांको कहला कि आज्ञा हमर तो एते सारा गाई अछि, तो मु भाबली कि गाई मानगोटो काहेकि ना क्षीर बाहर करी लोक मानकु किछि बिक्री करा जाओ. तो मधुसूदन दास बहुत रागिले एवं कहले कि जदि क्षीर दबार अछि फ्री दे देई दियो. एंड ही हैड सेड वन थिंग कि मधुसूदन दास गाई बिक्री कर दो बट क्षीर बिक्री करियो नाही. द पॉइंट इज कि इसो खुचरा माने व्यापार करी मु कोन धनी जी कोन है. द पॉइंट इज आई कैन सेल द काउज जदि मोर डिस्ट्रेस सेलिंग हला मु गाई बिक्री कर दी बट मु क्षीर बिक्री करिବି नाही. किछि गरीब लोकन को एंते अल्प अल्प पैसा को नबार किछि पॉइंट नाही. रादर गिव इट टू देम फॉर फ्री. You see the level of thinking of that person. I'll tell you another point. मते एक्चुअली पर्सनली बहुत दुख लागे. आम राज्यर गोटे अच्छी मधुबाबू पेंशन योजना. मत एटा बहुत दुख लगे कि पेंशन योजना को नाम दिया है आफ्टर मधुबाबू. गोटे एंटरप्रेन्योरशिप वाला किसी गोटे प्रोग्राम ना दिया जावा कथा. इनफैक्ट इफ यू सी ही वाज अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग.
he had that kind of mentality back hundreds of years ago when hundreds तो no चलो जब भी हो he had that kind of mentality कि you have his actually approach was capability approach जो तुम देखियो हम इकोनॉमिक्स रे को approach एटा को हबो that was a capability approach कि हम लोगों को capable करे establishing factories giving people jobs if you are naming welfare program after him what is the point rather you name after Gopinath Das na but chalo these are my personal opinions don't write in the exam okay भीम बोई भीम बोई पाखे आम कौन शिखु सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इनफैक्ट जो महिमा धर्मर से वन ऑफ द मेजर प्रोपोनेंट्स थे महिमा गोसाई ही वाज द फाउंडर भीम बोई वाज वन ऑफ द प्रोपाउंडर्स so humanism sacrifice welfare you can here also write that quote ki प्राणी को आरत दुख प्रमित देखु देखु केबा सब मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगते उद्धार हो तो सेटा को ओडिया रे लिखियोनी तारो ट्रांसलेशन टा इंग्लिश रे लिखियो so from Biju Patnaik कौन आम शिखु लीडरशिप पैट्रियोटिज्म वेलफेयर all of these basic stuff you can write now come to the most these you can write but point is कि यहाँ पे तो बहुत सारा examples almost घिसा पिटा example cliched examples many people will write okay so if you are writing some examples from administrator's perspective then it will be a better hang on a second any doubts so far କିଛି doubt ଅଛି नहीं am I audible or not ନାଇଁ କିଛି feedback ନାଇଁ okay ସାର୍ okay 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 तो एगुड़ा तो सब स्टोरी भलिया लागुथो ना these are all stories स्टोरी भलिया ही लिखियो okay ये टॉपिक टा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बट सेमती बेसी କିଛି बुझियार କିଛି नाही similarly come to this part administrator ମାନଙ୍କ ଭିତରେ write about SR Sankaran he was actually chief secretary ex chief secretary of Tripura ର ସେ chief secretary ଥିଲେ he is very simple life ପାଇଁ he is very well known led a very simple life and he was also known for the enforcement of abolition of bonded labor act because the bonded labor Tripura ରେ भी ଯେତେ ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରା କରିଥିଲେ see by that time even if there is an act but implementation is something which is different so he is sometimes also known as people's IAS officer ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ statue ବି ଅଛି which is very rare ଗୋଟେ IAS officer ଯେତେ କାମ କଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ statue ତିଆରି ହେବା politician ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଯିବ but IAS officer ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ ଗାଁର ଲୋକ ହିଁ ନିଜେ out of their own initiative they are making a statue and that's a big thing so he is that kind of a person people's IAS officer Kiran Bedi if you want you can write but I would suggest you don't write because most people would write these Kiran Bedi examples बहुत that but in any case what are the values we learn from her life tenacity willpower dedication to duty public service reforms if you remember reforms one for example when she was Tihar jail ର ଯେତେବେଳେ ସେ IG ଥିଲେ inspector general of Tihar jail ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା jail reforms को introduce କରିଥିଲେ and in fact that became also part of the standard operating procedure of jails across India ସେଟା jailers manual ରେ ସେଟା include कर दिया गला ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଭଲ initiative ଥିଲା for example jail inmates ମାନଙ୍କର mental health ପାଇଁ ସେ yoga ଆଉ meditation program start କରିଥିଲେ vipassana meditation से start କରିଥିଲେ dedication to duty you can write about her struggle with or her conflicts with जो lawyers ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା in general କଣ ହବ ଯେତେବେଳେ lawyer ଆଉ police ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ହବ police ମାନେ ଟିକେ ଦବିଯାନ୍ତି right because the law is always will be in favor of the lawyers but she was the person who took head on with the erring lawyers right अशोक खेमकाଙ୍କ ବିଷୟରେ मोस्टली ମାନେ very honest and highly integrity वाला person ठीक ଅଛି ଯିଏ କି आयस ରେ बहुत बार ତାଙ୍କୁ repeated transfer ପାଇଁ he is ହ୍ୟାଲୋ very well ସାର୍ known yes ସରି ସାର୍ ଟିକେ ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଝିପାରିନି ଲାଷ୍ଟ ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଲୟାର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ରିପିଟେଡ ହୁଏ ପୁଲିସ ମାନଙ୍କର ସେଟା କଣ पुलिस ସେଇଟା लॉयर ये तो बहुत बेसिक जिनिस आई थिंक मोस्ट पीपल नो दिस बाय द वे एग्जाम रे मे बी एते जिनिस लिखिया को स्कोप में मिलियनी मे बी यू शुड नॉट इवन राइट बट द पॉइंट इज कि लॉयर और पुलिस मान 36 का आंकड़ा सब चलता है द रीजन इज कि पुलिस मान पाखे एक्चुअली जो मसल पावर अच्छी बट अल्टीमेटली जो कोर्ट ऑफ कन्विक्शन जोटा जहाँ भी हबो सेतरे कोन सेतरे लॉयर्स मान पावर अच्छी आउ सपोज पुलिस माने जाई काको अरेस्ट कले सो लॉयर्स विल कम टू डिफेंड दैट एंड लॉयर मैंने आर्ग्यू करके पुलिस मान सब भूल बाहर करे ये गोटे कनफ्लिक्ट सब चले एंड यूजुअली जेहेतु फाइनाली देख
जोटा कह जाए बार एंड बेंच। ओके, सो बेंच माने होची जज, बार माने होचंती लॉयर। ना बार एंड बेंच टा सबले मन रखियो, एटा कोऑर्डिनेशन ने चले। इवन जजेस डोंट थिंक कि जजेस आर ऑल पावरफुल। प्रैक्टिकली कोन जजेस आल्सो डिपेंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन लॉयर्स ऑफ द कोर्ट, राइट। तो से कोडियली बहुत सारे जिनस मेंटेन करिया सो एटा सबले प्रेशर तांको ऊपर थाए। सपोज पुलिस संगे किसी लॉयर्स मान को झगड़ा हेला, सीधा कथा लॉयर माने आसी प्रेशराइज करिवे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जजेस मान को। यूजुअली यू विल सी दैट माने नो डिसीजन विल गो certainly against the lawyers. Okay, decision might come against the policemen but very rarely against lawyers. Okay, just see the statistics कि गत 10 वर्ष भितर केते जन लॉयर एमती कन्विक्ट हेचंती, केते परसेंटेज ऑफ लॉयर एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पुलिसमैन हु हैव बीन कन्विक्टेड। so is it possible कि बहुत कम लॉयर एथପାଇଁ कन्विक्ट हेई नांती बिकॉज़ इन जनरल दे आर वेरी, चलो ये तो बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव जिंस है, बट पॉइंट इज दीस आर ऑल प्रैक्टिकल थिंग्स। यू शुड प्रैक्टिस को असले यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। Our point is not to कहा संगरे हमें झगड़ा वगड़ा करियर। What is our point? We have to understand if someone from outside is able to take on this. For example, what Kiran Bedi did was that she was able to withstand the pressure. So is this not an example of tenacity? This is also an example of willpower, right? So other policemen इतने कौन नहीं जानते, से मैंने immediately sorry वरी मांगी कि किसी किसी action ही नहीं होता, so they would have withdrawn. But Kiran Bedi actually pursued a lot of such cases जो थे erring lawyers मान को against से action नहीं थी। यूजुअली लॉयर एमती लॉ स्टूडेंट कहदेले भी हमर ट्रैफिक पुलिस छाड़ दूची। सो इमेजिन समवन ट्राइंग टू टेक ऑन द लॉयर्स, राइट। ने यार एते पॉलिटिकल कथा मते क्लास रे कुआ कराउनी तो केतले कोन वायरल हो वीडियो, सो प्लीज डोंट मेक मी टॉक अबाउट सच थिंग्स। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अशोक खेमका, repeated transfers because of his honesty, because he was trying to expose a lot of corruption in the department. So he acted as a whistleblower. So आमे तांगटू कोन वैल्यू शिक्षे पब्लिक सर्विस, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, राइट। दुर्गा शक्ति नागपाल, इफ यू रिमेंबर, शी टुक ऑन द सैंड माफिया ऑफ उत्तर प्रदेश। सो तो तांको ट्रांसफर कर दिया हला, तांको ऊपर एक्शन जतले नेले सैंड माफिया ऊपर, बिकॉज़ द सैंड माफिया वाज लिंक्ड टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। सो व्हाट आर द वैल्यूज दैट वी लर्न फ्रॉम हर? पब्लिक सर्विस, करेज, कॉन्साइंस, इंटीग्रिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, ऑल ऑफ दीज आर वैल्यूज। बाय द वे एथरे मते गोटे कथा मने पड़ला, सपोज यू आर इन द सर्विस, ओके, एमितिया किछि इनिशियली स्टार्टिंग रे एमति किछि इंसिडेंट हो। सो इफ यू थिंक कि अरे आमे यदि एमितिया किछि एक्शन नबा माफिया अगेंस्ट कि छोटा डेयरिंग काम करी कि विल गेट आउट ऑफ द, माने हम ट्रांसफर हे जिवो त हम रेपुटेशन खराब हे जिवो। आई एम टेलिंग यू अनदर फ्रॉम थिंक फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव। सपोज व्हाट हैपेंड टू दुर्गा शक्ति नागपाल, ताको ट्रांसफर कर दियाला गोटे अलग जगह को दिया। सो इनिशियली जतले केसटा हे नथला ता पूर्व मे भी ताको ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर पड़तो कि तुम सैंड माफिया को धर नहीं, तुम ये काम कर दियो, हम फाइल पास कर दियो, सेटा कर दियो, एटा कर दियो। नाउ थिंक कि जतले ये केसटा बहुत हाईलाइट हला एंड नाउ पीपल रियलाइज कि वी कैन नॉट प्रेशराइज हर। नाउ यू रियलाइज कि ता परे ताको ऊपर कोन पॉलिटिकल प्रेशर बेसी किछि पड़ी थियो, रादर दे वुड नॉट, पॉलिटिशियंस इवन वुड नॉट वांट टू डील विथ हर। सो सेमाने कोन करिवे कि सेमाने ताको ऊपर बेसी पॉलिटिकल प्रेशर पकेन, जो नुआ आउ जो माने आछन ताको ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर पके। So this is also one advantage to what we think as punishment posting or something. But once you create a name for yourself कि you are honest and all, तापर तुमको basically लोग bother करिवे नहीं, then you can, माने तुम पे move करियाटे easier है जो, right? Initially it will be difficult, so you have to take a stand initially. सर तापर फ्रेम करियर माने किछि एमते पॉसिबिलिटीज थाए कि कौन करियार? माने रॉन्ग चार्ज माने रॉन्ग केसेस से फ्रेम करियर। Wrong cases रे frame करियार हुए यस माने तामते बहुत suspicious हवा तो ताल तो they can do a lot of things. You remember, if you go into administrative service, you will deal with hundreds of files every day, and any single file out of them can also land you in jail. जो तुमको किसी आइडिया भी नथि। ओके, जदि जने गवर्नमेंट बहुत एमती एक्स्ट्रा परस्यू करिया चाहिए, इट कैन हैपन, बट डोंट बी दैट काइंड ऑफ सस्पिशियस। यूजुअली हुए रादर तार उल्टा हुए, बहुत लोग एडमिनिस्ट्रेशन थाई बहुत खराब काम करके हम धरा पड़ना। द पॉइंट इज कि फॉर गुड और माने वर्स आम सिस्टम टा एमिति अछि कि जो मन कि इन जनरल बाय डिफॉल्ट इट विल गिव यू प्रोटेक्शन। तुम यदि ता परे भी बहुत खराब काम कलो, देन ओनली एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू, स्पेसिफिकली इन ओडिशा एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट। ना किछि लोग कोन अछि ऑपोजिट आडू प्रेशर केतले पड़े ना, याकर भी देखो क्रिटिसिज्म कोन कि आमे ऑनेस्ट हवा और रिजिड हवा, ऑनेस्टी वर्सेस रिजिडिटी भितर भी गोटे डिफरेंस। किछि लोग कोन अछि ऑनेस्ट संगे बहुत रिजिड इन द सेंस कि
semane it's like my way or highway. Okay. Now it is possible कि तांका जागारे आउ किए officer थिले, they could have dealt with it a bit differently. They could have simply just returned the file. ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତେ कि political executive ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ कि sir ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି issue ହଉଛି, you try to stop it on your side, otherwise I will take action immediately. Okay. So but point is कि it is possible that she might have gone there without any notification and she would have apprehended the persons and ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରିଥିବେ ଇଏ ବି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିବେ ତାଙ୍କ against case ଫେସ୍ lodge ହେଇଥିବ. So these are the ways in which ମାନେ different way ରେ ଆମେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ deal କରିବା. Okay, you can be honest as well as you can be slightly flexible in the sense କି system କୁ work କରିବାକୁ time ଦବ. ତୁମେ ଯଦି କହିବ କି ମୁଁ ପୁରା exactly ମୋ way ରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବ ନାହିଁ. System ରେ flexibility ଏଥିପାଇଁ ବି ଦରକାର because ବହୁତ ସାରା protocols ଅଛି. Okay, ବହୁତ ସାରା protocols ଅଛି which is for your own safety also. For example, if you are going to the sand mafia ଯୋଉଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯାଉଛ ଯଦି ତାହେଲେ ତମେ ଆଗରୁ ପୋଲିସକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବ. बट एमाने हवंती कि यार पुलिस को इन्फॉर्म कले पुलिस तांको आडू लीक कर देबे, देन सेमाने सब जानि जिवे, सेमाने आउ किटे नथिबे, व्हिच इज आल्सो समटाइम्स करेक्ट. बट माय पॉइंट इज व्हाट यू कैन रादर डू इज कि लास्ट मिनिट रे पुलिस को इन्फॉर्म कई कयो चलो मो संगे लेट अस गो एंड कैच द सैंड माफिया. गिव देम वेरी लेस टाइम टू रिएक्ट बट गिव देम टाइम. सो ऑनेस्टी और रिजिडिटी भितर एमती गोटे माने ट्रेड ऑफ अछि कि यू हैव टू स्ट्राइक ए गुड बैलेंस. यदि बैलेंस स्ट्राइक न कर पारलो देन in that case system will punish you. Okay, बहुत वैसे rigid है. For example, in the case of Ashok Khemka also, overall my impression of the person is the person is very honest, but the point is it is very difficult to work with this kind of person. Even you would not like to work with this kind of person. ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ତୁମକୁ ବହୁତ inspiring ଲାଗୁଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ତମ ବସ୍ ହେଇଯିବେ ନା, you will not understand any of your concerns. ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଇଗଲେ, it is likely, it is my own feeling. Okay, so sometimes you have to also be a bit flexible. You have to understand how the system works. एठी मु सिस्टम को पॉजिटिव कनोटेशन में कहूची, खराब वे रे कहू नै. राइट, आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, बहुत सारे इंट्रिकेसीज अछि. डोंट थिंक एटा बहुत ही माने स्ट्रेट फॉरवर्ड जिंस कि हमें ठीक जिंस करिया चाहले बहुत क्लियरली जाना पड़ जो एटा ही ठीक जिंस. राइट, सिमिलरली कम टू दिस पॉइंट, ई श्रीधरन, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया. ही वाज द पर्सन दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, रेल कॉर्पोरेशन सॉरी, डीएमआरसी रो से he was the leading leader and he brought this metro revolution to India. तो एते तांको तो हमें कौन सीख पारिया, values, innovation, leadership and teamwork, patriotism. सगयम आईएएस वाले जने अछंती, he has uploaded the details of his financial assets on the internet कि समस्त देख पारिए कि मोर बैंक अकाउंट केते अछि, मोर लैंड एंड कोन अछि. तो तांको तो कोन वैल्यू हम सिखे पाउछु, ट्रांसपेरेंसी वेरी इंपोर्टेंट, honesty, integrity as well as dedication or public service. तुकाराम ओंबाले एंड हेमंत करकरे एमान होचन 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स रे मार्टिर. फॉर एग्जांपल, तुकाराम ओंबाले वाज द पर्सन हु कॉट कसब. से तां पूरा हाथ रे धरि पकेले. से कसब वाज शूटिंग एट हिम एंड ही जस्ट वेंट एंड ही जस्ट ग्रैब्ड द टेररिस्ट. सो आमे तांको कोन वैल्यू शिखचे, सैक्रिफाइस, पैट्रियोटिज्म, पब्लिक सर्विस, डेडिकेशन टू ड्यूटी. इन जनरल बहुत सारा सोल्जर्स मान को केस है सब सेम जिंस लिख करे. यू कैन राइट अबाउट मेजर उन्नी कृष्णन. Justice HR Khanna, if you remember, ADM Jabalpur case re, he gave the dissenting opinion कि what is this case? Can anyone remember? ADM Jabalpur case, polity re पढ़िथियो, polity students. Yes, इमरजेंसी रे राइट टू लाइफ जोटा. very good. तो से कौन कहिथिले, से तांकर verdict रे कौन कहिथिले? Suspension of fundamental rights, specifically tomorrow freedom. Okay, whether that can be suspended or not. तो very simply the court said कि हाँ government can suspend. Okay, but he was the person who gave a dissenting lone dissenting voice. So sorry, lone dissenting opinion. And for that actually if you remember, तांको जेतल तांकर टाइम आसला कि से प्रमोशन तांकर हेइतांदा टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेइतांदे, तांको सुपरसीड करिकि तांकर लोअर जज मान को कर दिया गला चीफ जस्टिस. So in protest he also resigned. So what do we learn from his life? Human rights, constitutionalism, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन रो ये प्रोपाउंडर थिले. केशव नंद भारती केस रे ही वाज वन ऑफ द माने बेंच मेंबर. राइट, एंड रूल ऑफ लॉ कि रूल इज सेम फॉर एवरीवन एंड इट शुड इक्वली प्रोटेक्ट द पीपल.
So this is a very good example. Usually polity case रे समस्ते लिखंती, ethics रे case टा लिखिबे नहीं, बहुत पिलांको mind को आसिबो नहीं. So you can write, it's a good example you can write. Prashant Nair, we are talking about Prashant Nair, IAS. Sometimes he is known as collector bro. So he encouraged the people of his district to call him, youth मान कहले कि तो मत collector sir कोने, मत collector bro को. Bro कौन की तो यार point कौन है? Accessibility. See, try to understand this. Accessibility माने you are accessible to the people. You are a people's, you are a public servant, so you should be accessible to the people. But most of माने IAS officer और IPS officer देखियो, तुम्हें तांको जाई देखा करिया भी तुम पे difficult हो, तो तुम्हें cheat नहीं के बाहर छिड़ा हो घंटाटे तापर जाई तांको देखा कर period. But he was very accessible to the people. So grievance redressal भी तांको बहुत fast करनी. So we are learning what are the values we are learning: grievance redressal, accessibility, public service, okay. Compassionate कोझिकोड बोली से गोटे एनजीओ लेड और volunteer driven program गोटे स्टार्ट करथिले. तो सेतरे कोन हला कि लोक मानन कहले कि तुमरो जहा माने आउटडेटेड जहा जिंस सपोज पुराना कपड़ा कपड़ा अछि तो यू गिव इट टू द पीपल, जो मानकर नीडी पीपल मानको दिए. सेमती ऑपरेशन सुलेमानी से गोटे स्टार्ट कले कि जो खाଇବା वेस्ट होची ताको हम वेस्ट करिया बदले हाउ वी कैन चैनलाइज इट. सो से गोटे सप्लाई चेन वाला तयारी कले कि जो मान गरीब लोक मानको से डेली जाई कि से वेस्ट होतवा फूड मानको वेस्ट हवा पूर्व ताको दे दिया ऑपरेशन सुलेमान. देन किसी सर्विंग पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया को कैसे लिख करियो: अजित डोभाल, एस जयशंकर, अश्विन वैष्णव. Although this is a bit controversial, some people also suggest कि serving public servant मानकर केस लिखिया कथा नुह. The point is कि very clear point is कि suppose तुम आज ही example लिखी दी जो exam पर बाहर लो, suppose he or she is convicted in some case or something, so it would be difficult. But in any case बहुत सारा भला example अच्छी, it will be understood कि you have meant it in a good way, right? And these are some other important administrators. Please go through the list, okay. And if you want, you can google the names, you will be able to know कि भलो भलो story समस्या case रे बाहरी. TN Session, Ira Singhal, Aishwarya Pradhan, Odisha Financial Service. She is actually the first openly transgender officer of civil servant of India, okay, openly transgender. So Nirmal Singh, he was actually the sub inspector जे कि इंदिरा गांधी कर कार को जबत कर देथिले तले ट्रैफिक रूल को से भांगी थिले. कौस्तव दिवे गांवकर, याको कथा में इमोशनल इंटेलिजेंस रे देखिए, okay. Armstrong Palme, you know, many people will write about his case also. He's known as Miracle Man of Manipur. So what a People's Road, 100 kilometer long People's Road तैयारी करते with his own funds, okay, because government was not providing funds. Manjunath Shanmugam, he was a whistleblower in what IOCL Indian Oil Corporation Limited रे से देखले तो corruption होची, so government को तो notify कले तांको मार दिया गला. सत्येंद्र नाथ दुबे सिमिलरली नेशनल हाईवे मान को ऊपर जो स्कैम होची ता ऊपर से तो जणाइले तांको भी मार दिया गला. So all of these names you can Google and you will find some interesting stories. So this concludes our this last part of ethics and human interface. Any doubts so far? Please ask. सर गोटे इन जनरल डाउट थी हाँ हाँ पचार. सर हम ये जो वैल्यू गुड़ा पढ़िले एडमिनिस्ट्रेटर समवन लाइक is not expected them to do these things, like what is so special about बुझी पाले. Can you repeat it again? सर जेमती कि हमें कहले जे ऑनेस्ट इंटीग्रिटी एगुड़ा की माने बेसिक एक्सपेक्टेड वैल्यूज नो कि माने हम Yes, yes. No, I agree, completely agree. What can we do? हमको एग्जाम रे पॉइंट बाहर करिया रे चला. I will tell you another thing. I 100% agree with you. मते सबले बहुत हस लगे कि जते बेले न्यूज रे बेले आसे कि आईएएस ऑफिसर सेंड हिज चिल्ड्रन टू गवर्नमेंट स्कूल. तो मु भाबे यार गवर्नमेंट स्कूल तो तांको छडा भी बहुत लोग पठाउछन, है ना, चिल्ड्रन को पठाउछन. सो व्हाट अ ग्रेट थिंग आईएएस ऑफिसर डिड. पॉइंट इज कि इफ द आईएएस ऑफिसर सी तांकर से न्यूज रो पॉइंट होची कि ही इज गिविंग एन एग्जांपल कि हम पाखरे बहुत फंड्स है कि रिसोर्सेस है कि भी वी आर चूजिंग टू सेंड आवर किड्स टू गवर्नमेंट स्कूल कि आम प्राइवेट स्कूल को पठेई पारथन, बट आम गवर्नमेंट स्कूल को पठाउछ. बट आई फील कि वुड हैव बीन मोर इफेक्टिव कि से यदि से गवर्नमेंट स्कूल डेवलपमेंट पई पिला को पठेया संगे संगे तांकर गवर्नमेंट स्कूल डेवलपमेंट पई भी किछि मे बी फंड्स देथांते किछि काम करथांते. एंड द न्यूज वुड हैव कम लाइक दिस कि माने not only the IAS officer sent his or her kids to the school, but they are also taking steps to promote the school. So that would have been a better headline. Just आम चिल्ड्रन को गवर्नमेंट स्कूल को पठाया यार पॉइंट कौन सेमती मैं कहला खाली ऑनेस्टी इंटीग्रिटी वी एक्सपेक्ट फ्रॉम. यस वी एक्सपेक्ट. कथा होची कि सर्विस इटसेल्फ एते खराब ही कि से बेसिक जिंस जो माने करछन दे बिकम आवर माने आइडल काइंड.
But in other way also, some people have gone above and beyond their call of duty for sure. Okay. Some people like even Kiran Bedi when she was police officer, or you think about okay, SR Sankaran, they have gone above and beyond. Okay. Those kind of things we can praise. Okay. You take up example Armstrong Pame. ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ନଥିଲା ବଟ୍ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ କି ଏଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡ କିଛି ମିଳିଲାନି ସୋ ହି ୱାଜ୍ କମ୍ପେଲ୍ଡ ଟୁ ବିଲ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ରୋଡ୍ ସୋ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ତାଙ୍କର କିଛି ନେସେସିଟି ନଥିଲା he did not have any necessity he went above and beyond, right? So those things we can admire. Okay, anyway, let us move on to this point. Attitude chapter ଟା ବି ଟିକେ ବଡ ଅଛି so ଆଜି ଆମକୁ ଟିକେ time ଲାଗିବ but we'll try to finish if possible maybe ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାର୍ଟ ରହିଯିବ so ସେଟା next class ରେ ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ମୁଁ ପଢେଇଦେବି no issues ଛୋଟ ଛୋଟ ଟପିକ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ରହିଯାଏ will cover everything. So let us talk about this thing ki attitude kon. So usually when someone says attitude ଆମର ଗୋଟେ layman understanding ଅଛି. What is the layman understanding? କି attitude ହଉଛି the way people think or ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ personality trait କୁ ଭାବୁ ଏଇଟା ହଉଛି attitude. Personality trait ମାନେ କଣ? Suppose traits like politeness. Okay. କିଏ ଟିକେ haughty ଅଛି. haughty ମାନେ ଯାହାର ଟିକେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା ଯୋଉ ଯାହାର ଟିକେ ଖରାପ attitude ଅଛି. Okay. Who is like କି aloof ରହିବା ଯୋଉଟା. ଠିକ ଅଛି. So ସେଇ କେସରେ ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକଲି କହୁ କି ଆରେ ୟାଙ୍କର ତ ବହୁତ attitude ଅଛି. କିଏ friendly ଅଛନ୍ତି ତ ସେ କି friendly attitude. So see, these should not be called as attitude. The point of this thing is ki layman understanding of attitude is bit different. Our understanding of attitude should be the attitude or exact mane kon. For example, let me tell you a very funny story. कि लोक attitude कहले कौन बुझांदी मे बी स्टोरी टा सुनि दियो कि I don't know, just let me know. This is a real story by the way. मिशेल ओबामा एंड बाराक ओबामा सी प्रेसिडेंट हला पारे ओबामा प्रेसिडेंट हला पारे सी समाने दुई जन थरे जाइथिले गोटे छोट टाउन रे बसी खाया को जाउथिले सो से रेस्टोरेंट रे जतले समाने गले देन मिशेल ओबामा सी रिकॉग्नाइज द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट से ओनर ता से आसी कथा हले से ओनर के लिए हेलो मिशेल एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग देन आफ्टर ही लेफ्ट देन बाराक ओबामा आस्क्ड हिज वाइफ की सी के देन तांको वाइफ कहले कि सी होचंदी मोर एक्स बॉयफ्रेंड तो बाराक ओबामा स्टार्टेड लाफिंग इन कहले कि देखो तुम यदि तांको बाहा हितांतो ताहले आज तुम ए रेस्टोरेंट टा चलाउथांतो और ए रेस्टोरेंट टा काम करथांतो तो मिशेल ओबामा हसी कहले ना एक्चुअली मु यदि तांको बाहा हितांती से लोक आज अमेरिकार प्रेसिडेंट हितांता ओके सो दिस इज व्हाट कैन वी कॉल दिस इज कॉल्ड चैंपियन माइंडसेट ओके आमे बहुत सारा जो डिस्कस कले दिस इज आल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ चैंपियन माइंडसेट कि यू वैल्यू योर वर्थ कि इट्स नॉट लाइक कि मु यदि से लोक को बाहा हितांती मु भी ता लेवल को रे रहि थांती इट्स माय पॉइंट इज कि जदि मु से लोक को बाहा हितांती ताकू मो लेवल को मु नहीं आनी so usually लोक माने एटीट्यूड कहले ए टाइप रो जिंस बुझांती although this is also one layman understanding जोटा हम कहउछे एटा को एटीट्यूड कहबा ठीक न this is rather a sort of outlook towards life or a sort of temperament right but for our own understanding also मु तुमको ए जिंस कहली जो हमें ask बहुत सारा डिस्कस करथि ask माने कोन एटीट्यूड स्किल एंड नॉलेज मु कहली कि एग्जाम रे कोन नॉलेज रो हते बेसी इंपोर्टेंस रहइबनी ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସର୍ଟ ନୋଟିସ ରେ ବହୁତ ସାରା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆନ୍ସର ଲେଖିବାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ସେତେବେଳେ ରାଦର ୟୁ ୱିଲ୍ ମୋର ରିଲାଏ ଅନ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସୋ ଇନ ଦ୍ୟାଟ ସିନାରିଓ ଯୋଉ ଚାମ୍ପିୟନ ମାଇଣ୍ଡସେଟ ସେଇ ୱେରେ ଆମେ ୟୁଜୁଆଲି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ କୁ ବୁଝୁ ବଟ୍ ଦ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡେଫିନେସନ ଅଫ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଇଜ a bit more different. So actual definition of attitude କଣ and this is the more classic definition. In fact, if you see this entire chapter attitude, this is heavily drawn from psychology. सब साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ए सब जिंस साइकोलॉजी रे ही माने साइकोलॉजी रो ही चैप्टर टा पूरा आछि सिमिलरली इमोशनल इंटेलिजेंस आल्सो इन फैक्ट 30 to 40% of entire your ethics chapter this can be very well answered by through knowledge of psychology right? So if you see this some standard definition this is considered a standard definition what is the meaning of attitude attitudes are learned enduring predispositions to behave consistently either favorably or unfavorably towards objects, events, people, or a class of these. Now, usually तुम देखते हो मैं सबले तुमको कि definition टा हम simple definition रखिया, right? But in this case, I would encourage you to practice and remember this definition. The point is कि यदि ये definition टा मन रखिया बार बार practice करके ताले
how would a question तुम्हारा short question solve ହେଇଯିବ, which is what is the nature or characteristics of attitude. So nature and characteristics of attitude ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହବ ସେତେବେଳେ if you remember this definition, ତ ଏ definition ର point ଗୁଡାରୁ ହିଁ ଆମେ ତାର nature ବାହାର କରିଦବା. Right? So let us try to understand କି attitude ର ମାନେ କଣ, ଇଏ କଣ କହୁଛି, what is the nature or characteristics. First is that it is a predisposition. You see here attitudes are learned enduring predispositions. Predisposition ମାନେ କଣ, which predisposes us towards something. Predisposes us ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମକୁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ tendency create କରାଏ ଆମ ଭିତରେ to behave in certain manner. That is the meaning of predisposition. That increases the likelihood of our behavior. For example, ତମର ଯଦି attitude towards something is hatred, कि ତୁମେ ସେ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ hate କର, then it predisposes you, ମାନେ likelihood ବେଶୀ ଅଛି କି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ next ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ, so you will behave in certain way which is out of hatred, right? Suppose तुमको, what do you hate? You suppose you hate milk, okay? ଗୋଟେ ବହୁତ ବେସିକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନଉଛି, ଏବେ କ୍ଷୀର ସମସ୍ତେ ପିଅନ୍ତି ବଟ୍ ତା କ୍ଷୀର ଉପରେ ସରଟାକୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, so it is likely କଣ next time ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଲୋକକୁ ସର ଆଣିକି ଦବୁ ସେ କଣ କହିବ, so the attitude will predispose the person to behave in certain way. We can guess कि this person will reject this thing, right? Predisposition. चलो एटा तो बहुत ही lame definition ହେଲା, sorry example ହେଲା. Let us take another example. Suppose your attitude towards, for example, one community, suppose Muslims, this is you have some negative attitude, so you are a very biased person, you have a negative attitude towards Muslims. So we can guess कि when if you are seeing an Muslim in the, माने next time जब तुम्हें काहाକୁ meet करूଛ, we can guess कि it is likely that you will not behave in a good way towards the person. ଏବେ ହେଇପାରେ situational factor ପାଇଁ you have to act in a good way. Situational factor କଣ, suppose that person turns out to be a police officer, ସେଇ ଆଗରେ ତମର କଣ ତମର attitude ଟା ଦବିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ you will act according to the situation. But when the situational factors are minimum, when it is entirely up to you how you want to behave, seteବେଳେ କଣ attitude will determine your behavior. Okay? So in that sense, one of the nature of attitude is that it predisposes us. ସେମିତି second important point is that it is learned. Learned ମାନେ ଆମର ଏଟା innate ନୁହଁ, ମାନେ inborn ନୁହଁ, right? ଆମେ ଏଟା learn କରୁ, ତା ମାନେ ଏଟା externally learned, externally ଆସିଥାଏ. ଏଟା ବହୁତ ହି simple ଜିନିଷ ତମେ ବୁଝିପାରିବ कि suppose our feelings or attitude towards some people or something, some objects, ଆମେ କଣ ମା ପେଟରୁ ଶିଖିକି ଆସିଛୁ, so ଏଇଠି somehow through experience we gained that kind of attitude. ହେଇପାରେ कि suppose your attitude towards certain kind of activity is negative. suppose तुम्हारो attitude कौन कि तुमको मंदिर ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ହେଇପାରେ କାହିଁକି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସିଲା, ଇନିସିଆଲି ତମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଥରେ ଦୁଇଥର ଗଲ, ତମକୁ ସେଠି ନନା ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲେ, right? Because of those a few experiences, bad experiences, you learned not to trust them, right? So this is something, attitude is something which is learned, that means ଆମର inborn. Similarly attitude is also enduring. Enduring ମାନେ it is not easily changed. तो ଯେତେ change କରିବାକୁ try କଲେ ବି change ହବ, see not easily changed ମାନେ change ହବନି ନୁହଁ, in fact ଆମେ ପରେ ବି ଦେଖିବା ବହୁତ ସାରା ଟେକ୍ନିକ ଅଛି କେମିତି attitude କୁ change କରାହବ, but easily change ହବନି, right? If you have positive attitude towards reading, for example, तो suppose ଜଣେ ଆସିକି କହିବେ କି ନାଇଁ ପାଠ ପାଠ ପଢିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ତ ଆଜିକାଲି ଚାକିରି ବାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ immediately ତମ ତା କଥା ଶୁଣିକି change ହବ ନାହିଁ attitude. ହେଇପାରେ over the period of time ଯେତେବେଳେ ତମ ନିଜକୁ ଚାକିରି ମିଳିଲାନି ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ପାଠ ପାଠ ପଢା ପରେ ବି ଭଲ ପାଠ ପଢିକି, gradually your attitude would change, but immediately it will not change, right? Similarly consistent means consistent across different time or situations. Different situation भी consistent है, ଯେ ତ ମାନେ ନୁହେଁ ନା କି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଆମ attitude ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ପଜିଟିଭ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ରେ immediately negative ହେଇଯିବ, ତ ସିଚୁଏସନ ପାଇଁ ଆମର behavior change ହେଇପାରେ, right? but ସିଚୁଏସନ ପାଇଁ attitude immediately change ହବ ନାହିଁ. attitude change, always remember attitude ଟା ସବୁବେଳେ change ହବାକୁ ଗୋଟେ internal ତୁମର motivation ଆସିବା ଦରକାର, internal conviction or motivation ଆସିଲେ ହିଁ attitude change ହବ. externally you can behave in certain other way, but attitude actually change happening to internally you have to be convinced, तापर जाइए तुम्हारा change होगा behavior. Similarly it is also either favorable or unfavorable. Favorable or unfavorable माने यही पर एटा we can have a positive attitude or negative attitude. Some people also argue कि neutral attitude भी अच्छी, it can also happen, you can also write कि favorable, unfavorable, favorable or neutral, but my point is कि यदि
तुम भावुच किसी गोटे जिन तुम न्यूट्रल एटीट्यूड अच्छी तार रादर बहुत सिंपल आउटकम और कंक्लूजन हो तुम से जिन एटीट्यूड ही किसी ना फॉर एग्जांपल सपोज तुमको पचराला कि तुम यूएस रो इलेक्शन आड़ को कौन एटीट्यूड अच्छी यूएस अमेरिकन पॉलिटिक्स प्रति कौन एटीट्यूड अच्छी तुम कह आज्ञा मु तो यूएस इलेक्शन कौन मुझे सब फॉलो किसी करेनि मु तो आज्ञा मोर बिहार इलेक्शन कथा सब देखे तामाने कौन कैन वी someone will say कि this is a neutral attitude but I think it is better to say कि you don't have any attitude at all माने नहीं कि आम सब जिन आमर किसी गोटे attitude थी किसी जिन आमर किसी attitude ही नहीं जो जिन आम बदड़ ही नु से जिन आम attitude पड़ो आसी so in general you can say that attitude can be positive or negative and एई वे रे सेत भी आम एटा डिवाइड कर परिया कि attitude रो दुईटा कंपोनेंट अछि गोटा हला बैलेंस गोटा हला इंटेंसिटी बैलेंस माने होची whether it is positive or negative इंटेंसिटी माने हला कि whether it is positive or whether it is negative तारो इंटेंसिटी केते माने तारो लेवल टा केते हे पारे कि किछि जिंस तुम इंटेंसली लाइक करछो किछि जिंस लेस लाइक करछो हे पारे किछि जिंस तुम इंटेंसली डिसलाइक करछो किछि को माइल्डली डिसलाइक करछो बट इट कैन वेरी और नॉट कैन डेफिनेटली वेरी हमें एंती किछि खाइबा पसंद अछि ओके तुमको देखो तुमको वेज भी पसंद पनीर भी पसंद अछि मटन भी पसंद अछि तो एटीट्यूड टुवर्ड्स बोथ आर पॉजिटिव बट मटन को तुम बेसी प्रेफर करो तो एका संगे दुईटा ऑप्शन तुमको दिया तुम मटन खाइ so that means the intensity of this attitude is more towards on a mutton case re basic and the last characteristic is that attitude is always towards by an attitude holder towards an attitude object ऑब्जेक्ट एठी सेही मीनिंग रे नहीं कि केवल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी ए पर्सन पॉइंट होची कि किछि गोटे जिंस प्रति हमर एटीट्यूड अछि ओके सो दैट मींस देयर इज ए डायरेक्शनल गोटे डायरेक्शन गोटे अछि similarly this object would also have some kind of might have ए लोकोडा this object is a person now तार जदि आउ कहा प्रति कोन एटीट्यूड अछि now in that case that person will become the attitude holder and the other person will become the attitude object right so आमे जो जहा कंटेक्स्ट रे डिस्कस करूचे सेही लोको को आमे कहया एटीट्यूड होल्डर ए टर्म टा पछरे में बहुत बार यूज करया एटीट्यूड होल्डर एएच एनी डाउट सो फार definition of attitude and characteristics of attitude किसी बुझी हो ना किसी डिफिकल्टी हो कि गिव मी सम फीडबैक आई एम अनेबल टू नो सर बुझी बुझी होछि होची सर ସାର୍ ବୁଝି ହଉଛି। वेरी गुड ଭଲ ଲାଗୁଛି କି सर ନାଇଁ को ଭଲ ଲାଗୁଛି इंटरेस्टिंग ଲାଗୁଛି ତ ओके यस सर। यस ठीक सर ଅଛି ମାନେ ଗପ ଭଳିଆ ହିଁ ଶୁଣ ହେଲା ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଟପିକ ଟା ହିଁ ଗପ ବଟ୍ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି କଣ କରିବା ସେଥିରେ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଟର୍ମସ ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ବାହାର କରିନି ସାଇकोलॉजिस्ट ମାନେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି बट व्हेन यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली जिनसर मीनिंग कौन सेतल तुम भाबियो कि यार एटा तो गोटे जेनेरिक जिनस जोटा कि तुम ऑलरेडी जानिथिलो बट से माने ताको खाली गोटे टेक्निकल टर्म दे दिछ राइट तुमरो एटीट्यूड अछि बोली तुमे जानिछ बट ताको से टर्म दे देले एटीट्यूड होल्डर सो डोंट गेट इंटिमिडेटेड बाय दीस टर्म्स ए टर्म्स गुडा बहुत सिंपल जिनस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि द अंडरलाइंग मीनिंग कौन मीनिंग टा बुझियले जिनसटा इजी हिजो यस यू आर आस्किंग समथिंग एल्स सर बिहेवियर एटीट्यूड भितर डिफरेंस कोन आसीबो ताले माने तो मतलब सर एटीट्यूड भितर बिहेवियर आछी अरे बाप रे तुम बहुत ही माने इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस बाय दिस पॉइंट यू हैव टू एड्रेस दिस इमीडिएटली attitude और behavior भितर try to understand attitude is something which is in the mind of the person okay so this is internal attitude टा कहा को immediately देखा जाउना behavior होची हमर action this is external for example and एई जिंस विषय रे हमें परे आसिया कि attitude behavior भितर लिंक टा अछि कि नै एंड अछि यदि सेटा केते स्ट्रांग इज इट स्ट्रांग और नॉट एटा भी यार भी परे हमें डिस्कस करिया बहुत सारा लैपियर रो स्टडी देखिया से डिफ्लर एंड वेस्टी रो स्टडी देखिया but you have to understand this immediately otherwise entire chapter ର point କଣ attitude ଟା ଆମ mind ରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି immediately ତମର କଣ attitude ଅଛି କାହା ପ୍ରତି ଆମେ immediately ତମ ମୁହଁ ଦେଖିକି ତ ଜାଣିପାରିବୁ ତମର action through ରେ ଆମେ ତାକୁ ଗଜ କରିବୁ otherwise ତମକୁ ଯଦି ପଚରା ହେଲା ତମେ ସତରେ truthfully ସବୁ କହିଦେଲ କି yes ମୁଁ ତ ଏଟା ଖରାପ attitude ମୋର ଏମିତି ଅଛି ତାହେଲେ ତ ଅଲଗା କଥା but otherwise it is internal we cannot see it so it is something which is in our mind and behavior is something which others can see so it is also sometimes known as overt this is overt this is covert means এটা কভার ହେଇକି ଅଛି এটা openly it is visible ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି attitude in most cases will manifest in behavior but not in ମାନେ ସବୁବେଳେ ହବନି ବର୍ତ୍ତମାନ try to understand କି behavior ର କଣ କଣ component ଅଛି behavior କେମିତି ଆସେ ଗୋଟେ factor important factor ହଉଛି attitude
And attitude, if you see, this is a subset of many other internal factors. How we both are internal factors. For example, in general, what is your level of motivation? Motivation is a different thing. What is your intelligence? Okay. What is your other decision making ability? ये सब गुड़ा हम mind रे अछि, right? So ये गुड़ा सब internal factors. आउ किछि अछि external factors. External factor कौन? जोड़ा suppose हम society रे कौन चलछि, से situation टा कौन अछि, को जगह रे तमे अछ, ये दुईटार mix ହେଇକି ବାହାरिବ outcome. Now sometimes it will happen कि तुमर internal factor गुड़ा overpower कर जियो, in the sense कि you will think कि मु मोर internal जिनस ପାଇଁ ही मु decision नेबी, आउ बेले बेले कौन हम external factor पे तो decision टा sorry तुम behavior टा बाहरियो. यार I will give you a very simple example. Suppose तुम्हारा internal factor or attitude or motivation होगी कि you are a fun loving guy, ठीक है, this is your attitude. तो fun loving माने तुमको suppose car race करे बहुत भल लागे, तो in general this will reflect in what kind of behavior कि तुम speed fast driving करियो, speedy drive, right? But suppose तुम्हें जो जगह जाओ तो suppose एटी गोटे पुलिस गाड़ी अछि, एबे तुम immediately ब्रेक मार दो कि नहीं, एबे देखो तुम behavior change हेगा. But was that behavior due to your attitude? That was not because of any internal factor. This was because of an external factor. External factor की police. अब police अच्छे चालान काटे दो. So behavior change हेगा. Think of another thing. Suppose you are a suppose तुम गोटे बहुत unethical person. Suppose तुम गोटे बहुत ही खराब person. Okay, तुम बहुत लोगों गाली दियो कौन कर. तुम जाइछो काहा को गोटे पुओ देखियो कि झियो देखियो जाइछो काहा को. पता सेठी कौन सी सेम बिहेवियर देखियो कि सेठी तो तुम गोटे नाइस फेस तुमरो प्रेजेंट करियो ना कि मु तो बहुत ही नाइस गाय नाइस कर. Right? Now I can try to understand internal factor अलग था, किंतु external factor टा overpower करियला in the sense कि you understood कि मते एबे external factor way रे behave करियार अछि, because this is in my interest also. So internal factor और external factor ର difference. So attitude होची something which is internal and behavior is something which is external. कथा होची कि हमें काहे की attitude पढुचे, because we expect that by understanding what is a person's attitude we can predict कि what that person is going to do and accordingly we can control. ये सब जिनसा हमें पछरे भी देखिया गोटे टॉपिक छोटा टॉपिक रे अंडर रे अछि कि how strong is the attitude behavior link. This is not a small difference, this is a big difference. Attitude and behavior. Okay, now come to this part कि components of attitude कौन. सो आमे सब बेले देखो साइकोलॉजी रे सब बेले डिस्कस करा जाए किछि भी जिंसर साइकोलॉजिकल कंपोनेंट तुम यदि बाहर करियो तीनटा जिंस बाहरियो ए बी सी, अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव. हम एटा बार बार बहुत जगह डिस्कस करछु. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफेक्टिव? अफेक्टिव माने होची इमोशन और फीलिंग्स. कॉग्निटिव माने होची थिंकिंग, जहा तुम अगेन देखो एटा भी माइंड रे अछि एटा भी माइंड रे अछि, ए दुटा मिसी की तार आउटकम होची बिहेवियरल एक्शन प्लस आउ बाहर किछि ए दुटा जिंस होची इंटरनल प्लस बाहर किछि एक्सटर्नल फैक्टर भी आछि. So everything if you psychologically analysis करियो सब जिंस एबीसी तीनटा जिंस ही बाहरियो अफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव. तो ए तीनटा को जिंस होची से पर्सन रो एक्सटर्नल जिंस गुडा होची से पर्सन रो नो एटा होची एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट एठी ए वे रे यूज कराइ छै एक्सटर्नल जिंस से पर्सन रो एक्शन और बिहेवियर, पर्सन रो थिंकिंग, पर्सन रो इमोशन और फीलिंग. So similarly attitude will also have three components. गोटे होची attitude रो emotion और feeling, attitude related emotion और feeling. Similarly attitude related thinking सेटा हला तार attitude रो cognitive part. आउ attitude जतले behavior रे turn हिजे सेटा we call it the action component or behavioral component of attitude. Okay, again try to understand attitude or behavior, these are different things, right? These are not the same thing, but attitude पाई हमरो certain behavior बाहर, and that component will be called as behavioral component of attitude. So I have taken this example कि suppose we are trying to understand कि attitude towards cows. Suppose जनकर attitude towards cows होची positive, गाई गाई को प्रति तार attitude positive अछि, ताले तार हम केमते एनालिसिस करिया कि तार अफेक्टिव, कॉग्निटिव और बिहेवियरल कंपोनेंट कोन हो. तो अफेक्टिव और इमोशनल कंपोनेंट हो कि गाई को देखले तो खुशी लागे, पॉजिटिव इमोशंस आसियो, काइंडनेस माने ता भीतर काइंड फीलिंग दा आसियो. कॉग्निटिव कंपोनेंट देखो एगुडा सब ऑल इमोशन रिलेटेड थिंग कि नो, इमोशन और अफेक्टिव थिंग. कॉग्निटिव जिंस कोन हो, थिंकिंग जिंस कोन हो, तो माइंड को तार ए जिंस आसियो कि गो माता, राइट. रिलीजियस सिग्निफिकेंस यार अछि, तार बेनिफिट कोन दोची. सपोज ए बेनिफिट विषय भाबी कि यार से हमको क्षीर दोची, से किछ लोग एटा बिलीव करछन कि गाई होची
ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करके ऑक्सीजन दोची although they don't believe in such kind of thing, but point is many people think that, and also it is also many things are also true कि गाई होचे हम इकोनॉमी को आम लाइफ को आम सोसाइटी को बहुत जिन कंट्रीब्यूट करुच्चे सो से सब थॉट्स जो मुंड को आसला से थॉट्स गुड़ा को पार्ट हो दोज आर कॉग्निटिव पार्ट्स ओके और थिंकिंग पार्ट्स ऑफ द एटीट्यूड ना ये दुटा जिन मिसी तुम बिहेवियर रे कौन रिफ्लेक्ट हम जो तो ये सब जिन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन योर बिहेवियर जो गाई गोटे आस तुम फीड कर खाया दब पेटिंग कर पेटिंग गेल कर प्रोटेक्ट कर किसी असुविधा प्रोटेक्ट फॉर एग्जांपल तार देह खराब है टेक इट टू द हॉस्पिटल so this is how I have through an example I tried to explain ki gote attitude ro kemti different component achi you can take any number of other attitude you can for example say ki attitude towards certain community तो certain community towards तुम्हारा attitude positive और negative जहाँ भी हो ताको we can also divide it into affective behavioral and cognitive कि से community विषय कथा आसिले तुम्हारा feeling कौन आसे से community towards that community तुम्हें behave केमतिया करो और से community topic उठले तुम्हारा mind को thoughts कौन कौन आसे so these would be affective behavioral and cognitive components. Okay. Any doubts in this? Components of attitude. Then now come to this part, functions of attitude. Okay. Try to understand क्या माने कौन by the way कार मन अच्छे आम गोटे कथा मालिनोस्की किए मालिनोस्की थिले कैन एनीवन टेल मी सर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ओके से कौन आइडिया देथिले यू रिमेंबर ओके ऐसे like I think social sanction ସେମାନେ ଗୋଟେ festival को ଯାଉଥିଲେ those who are criminals but they are not allowed to go to that function very good so function of culture how this is in their case how that was regulating society okay so এটা কোন religion লিখতে sorry regulation of society right so that means in general যেতବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଆମ ପାଇଁ culture ଟା କଣ usually ଆମ ପାଇଁ culture ଟା which something that we enjoy but some other people might have some practical use तो ସେ practical use को ଆମେ କହୁଛୁ function ସେମିତି attitude କୁ ତୁମେ କେବଳ ଭାବନି କି it is something which is just there sometimes it also has many uses तो ଆମେ ଦେଖିବା कि attitude ର कौन कौन use ଅଛି so the question इधर आसला कि what are the uses of attitude or what are the functions of attitude these are the same points okay majorly चारिटा function ଅଛି you can remember this as bank value expressive ego defensive need and knowledge value expressive function ego defensive function need function and knowledge function ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କଣ and with that I have added this point also कि जदि गोटे टाइप रो एटीट्यूड यांक भितर जेकोसी गोटे रीजन पाई और फंक्शन पाई अछि ताले ताको हमें केमितिया चेंज कर पारे हाउ कैन वी चेंज दैट so we will see ki what are the different functions of attitude and depending on their function how we can change them पता ना अच्छा बाय द वे काहे कहि पारे काहे कि हमें कहू चेंज करिया बिकॉज़ पॉइंट इज बेले बेले बहुत सारा जो एटीट्यूड लोक माने एटीट्यूड होल्डर रो जो एटीट्यूड अछि ना दोस माइट बी अनडिजायरेबल फॉर अस so we will try to convert that into some kind of desirable attitude for example suppose this person's attitude होची anti social attitude ताको हमें pro social attitude रे करदा suppose there is a criminal अछि जदि हमें तार attitude somehow if we are able to change it to pro social attitude then that person will no longer be a criminal so बहुत सारा practical application अछि हमें यदि लोकंकर lack of civic sense इंडिया रे in general देखियो लोकंकर किछि भी गोटे civic sense बहुत ही कम थाए ठीक अछि किछि लाइन फाइन किछि मानिबेनी लाइन में सब लंबा लाइन लोक छिड़ा हिचंती पछरु आसी जने सामने छिड़ा हेना so if somehow we are able to change their attitude so we will now make them better citizens so this is the need for which we want to change their attitude so हम देखिए कि different function first कथा है attitude रो कौन काम हम पई अछि and depending on what is their function how we can change them towards a better attitude so the first and foremost function is value expressive function so from the name itself we can understand कि जेतले attitude किछ गोटे value को express करछि okay जेतले attitude गोटे simple value आमे previous class रे value विषय पढ़छे there are different types of values intrinsic values instrumental values core values cardinal values right? specifically say value को express टा करियो which are the salient or cardinal values so value expressive function of attitude होची सेही टाइप रो attitude जोटा सेही लोकर किछि कार्डिनल वैल्यूज माने सेंट्रल वैल्यूज को एक्सप्रेस करतो
Now try to understand यार माने कौन. You think of one example. Suppose Mother Teresa. What is her attitude? ତାଙ୍କର attitude suppose ଯୋଉଟା ସେବା ହିଁ ଧର୍ମ ସେଇ type ର attitude, right? Her attitude was something which is welfareism or charity. Okay. चलो एठी मु synonymously attitude और value को synonymously use करछि. Now you can understand कि एई value गुडा तांको attitude value expressive attitude तांकर कोन हबो जोडा एई value को express करतो, right? So she will act in the such kind of way which will maximize these kind of values. So in other words, people माने सब लोकंकर किछि ना किछि maximum लोकंकर किछि ना किछि गोटा cardinal or central value थाए. Accordingly that will also shape their some of their attitudes. And आमे सही attitude मानको कहया कि सही attitude मानकर function कोन, that is the value expressive function. एथरे गोटे जिंस नोटिस करो कि गोटे लोकर different objects and different events ପାଇଁ different attitude ଅଛି. Suppose this is attitude 1 towards one type of thing, this is attitude 2 towards another type of thing. But आमे सब attitude को consider करने, आमे सेटा को consider करछे which is central to the person. So सही attitude गुडा को आमे कहूछु value expressive function. For example हे पारे कि आमे मदर टेरेसा को जाई पचारे कि आज्ञा फुटबॉल प्रति आपनकर कोन attitude अछि. फुटबॉल ठीक अछि मते पसंद अछि बट मु फुटबॉल खेले नहीं कहीं ना मोर पर्पस होची सेवा करिया, right? So we can say कि towards football Mother Teresa's attitude is also positive. But again if we talk about what is her value expressive function, that is that attitude which is expressing her core values, and that value is seva or that is welfare or charity. And what will be those values? Those values are, for example, sorry, those attitudes will be the attitude towards the oppressed, attitude towards leprosy patients, attitude towards the poor. Now, she is more concerned about these things. She is not concerned about football. So football or other, other things, those are less relevant for her. So say attitude habani value expressive function. We are only talking about the central functions. Now ame a attitude guda ko kemiti change kariya? Now, to change, remember this is the most difficult attitude to change. Most difficult. Because एटा होचे से लोकर central or salient or cardinal values को जोटा express करछ. But still this can be changed over a period of time if you show to the attitude holder of the inadequacy of the current attitude and how a new attitude can better define him or express his core values. माने आमे एबे सपोज मदर टेरेसा को जाई कहया काहे आज्ञा देखंतु जमाना बदली जाईची एबे लेप्रोसी पेशेंट मानकर सेवा करी किछि फायदा नाही एबे हमर नुवा पोप कहिसंती कि जो माने फुटबॉल खेलिबे से माने हेवन को जिवे. I'm giving a ridiculous example but I'm telling you how difficult it is to change one person's value expressive function kind of attitude. So सेठी तुमको कोन करिया पड़ियो central और core value को change करिया पे you have to convince the person कि तांकर जो existing attitude अछि सेटा somehow inadequate अछि. Okay, and गोटे नुवा attitude आनले that can be better. Suppose in other way you can express this कि instead of serving the poor आमे यदि poor मानक ପାଇଁ football match organize करिया सेतरु मे भी किछि मनी आसबो ता थ्रू we can serve them, something like that. Okay, so you have to replace the existing attitude with another attitude, otherwise that person will not accept your suggestions, right? So therefore you can understand why this is most difficult, because this is something which is salient values or cardinal values related. And if you give more examples of how देखो examples कौन देबा हमें cardinal value कहा कहबे. You take up any historical persons, Hitler देखिया तारो cardinal value थला मेगालोमानिया माने power hungry. If you similarly think of okay, one person Don Juan, तांकर cardinal value कहा जाए lust. Okay, is very famous for माने flirty kind of guy. Similarly, if you talk of another person like for example Napoleon, again Napoleon was also power hungry, control. Right? So these are all cardinal values, single values. Now, if you want to change the value of this person, it is very difficult. Now come to this part, ego defensive functions. Second function of attitude is ego defensive. Now yeah, माने कौन? Before that, we have to understand what is the meaning of ego defenses. I have told you कि ये सब जिन पूरा chapter टा ही बहुत heavily draw करिछि psychology. So if you know one of the major proponents of psychological theory, usually psychology कहले भी लोगों को माइंड को सिगमंड फ्रॉइड रो ना आसे. So सिगमंड फ्रॉइड करो theory रो ए idea टा आसे ego defenses. So what Sigmund Freud said कि human mind, this entire thing is the human mind. See human mind को इमती classify करो. By the way, I will tell you another thing also.
don't blindly believe anything that Sigmund Freud is saying. In fact, around 90% of ideas of Sigmund Freud right now, it is discarded. We do not believe in anymore. But these theories were useful for us. One thing is truth, another thing is useful. Many of his theories were useful for us to understand human behavior. So that is why his theories are still being used. Right? So Freud कहले कि human mind रो तीनटा level अछि. गोटे होची conscious level, गोटे होची pre-conscious level, गोटे होची unconscious level. Conscious level कौन? Conscious level माने आमर waking condition ने आमे जोटा को clearly जानी पारछे कि thought गुडा feeling, a thought, feeling, perception ए सब जिनसा हम mind रे अछि. Those are conscious mind. For example, suppose right now you are quite aware that तुम गोटे class रे बसिजो, class रे सुनुचो किछि, पाठ पढुचो. You also have certain kind of maybe attitude towards the subject itself. So all of these are conscious that you are aware of. Then there are some pre-conscious things that you are not completely aware of at the moment, but ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ you can recall it. Right? So these are memory, for example, these are memory stored and the knowledge stored in your mind. So right now तुमको यदि immediately कुहाब कि तुम मने पकाओ आ कुह कि आम कंट्री रो सब states मान को ना कुह, name all states. So you can recall them, but you are not thinking about all of these things right now. So these are all in your pre-conscious mind. Then most interesting part is this part, unconscious. If you see actually diagram टा एते ठीक से correctly कराएं, से जो iceberg theory देले, से diagram रे एमतिया थे. Okay. He said कि this part is the only the conscious mind. This is the pre-conscious mind. And this entire 90% around is the unconscious mind. So Freud करो theory थी कि major part of our mind is in the unconscious. Unconscious होची सेही part of our mind जहाँ को हमें easily access करी पारो नहीं. Say feelings, thoughts, desires, they are all in our unconscious mind, but we are unable to access them. ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ସେ unconscious mind ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କେମିତି? Freud କହିଲେ କି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣୁଛୁ, for example ଯୋଉଟା dream ରେ ଆମର ଆସୁଛି. ତ Freud କହିଲେ କି ଆମେ conscious ଥାଉ ନା, ଆମେ ଏଇଠୁ ତଳୁ ଉପରକୁ ଆସିବାର ବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥାଏ. Okay. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇ ପଡୁ ସେ ବାଟ ଗୁଡା କିଛି କିଛି escape route ତିଆରି ହେଇଯାଏ. So now these unconscious level ରୁ ଆମର deepest desires, okay, feelings, thoughts ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଆସିବ. So this is one example. ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା different way ରେ you can express your unconscious feelings. For example, there is something which is known as Freudian slip. ମାନେ କଥା କହୁ କହୁ ଗୋଟେ word କହିବା ଜାଗାରେ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ word କହିଦବ, which is maybe what you actually meant. So Freud କହିଲେ କି this is also another example through which we can access the unconscious ମାନେ mind ର କଣ content ଅଛି. But most importantly, unconscious ରେ ସେଇ ସବୁ thoughts, desires and feelings ଅଛି which are unacceptable. This is the most important part to understand. Unacceptable ମାନେ ଯୋଉଗୁଡା କିଛି dark type of desire. Suppose you have a deep hatred towards one of your friends. Friend तो ना ऊपर चलो pretend करते, but you want कि अरे याको तो देखला ने मोर हाड़ जळुଛି. So हेई पारे तुम unconscious mind रे desire टा थाई पारे कि तुम ताको मर्डर कर दियो. तो एटा हमें केमती जानिया बेले बेले कोन गोटे ड्रीम रे तो देखियो कि तुम एक्चुअली ताको मर्डर कर दोछ. At least this is what Freud is saying. So Freud कहले कि suppose Freud पाको जण लोक आसी कहले आज्ञा मु तो देखली मो सांग को मर्डर कर दू. So Freud कहले तुम पक्का से एक्चुअली चाहो ताको मारियो. सेति में तुम ड्रीम रे देखिला से नाइ आज्ञा मु तो सांग को मोर बहुत भल पाए. Then ताको Freud somehow he will be able to convince him कि नाइ तुम तो चाहो ताको मारियो. So this is an example कि there are many unacceptable thoughts and desires which are in the unconscious mind. Now why are we reading about this? Point is कि many a times ये जो unacceptable desires and thoughts थाए सेटा बेले बेले कोन हठात ऊपर को बाहरी आसे. जेतेले ऊपर को बाहरी आसे this makes the person uncomfortable. That creates anxiety in the person. तो ये जो uncomfortableness और anxiety है सपोज से लोग को confront करा हला कि भाई तुम्हें तो तुम चाहो तो तुम संग मारी दबा. Now to prevent this kind of uncomfortable or anxiety inducing event or experience, the person has something which is known as ego defense mechanism or EDM. So ego defense mechanism होची same mechanism जोटा कि इरा को prevent करे. Now there are different types of EDMs also. हमें एते डिटेल जीवा दरकार नहीं, but it is in this PDF. You can go through this and पढ़ियो, बहुत ही interesting. It is really interesting topic. But point is you don't need to go into detail. So ego defensive mechanism होची सेही भलिया जिंस ओटे uncomfortable or anxiety producing thoughts, feelings, desire को suppress करके रखे. So
गोटे टाइप रो एटीट्यूड रो फंक्शन होची सेमितिया काम ईगो डिफेंसिव माने से हमको प्रोटेक्ट करियो कि हमर अनकॉन्शियस माइंड रो जो डिजायर थियो से गुडा को ऊपर को आसिया को से हमको प्रोटेक्ट करियो. So these are attitudes which protect people from deep internal conflicts or unacceptable desires or hurtful memories. So I'll give you another example. ଗୋଟେ famous example ଅଛି. ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ସେ କଣ ହେଲା କି ଦିନେ ସେ ବହୁତ ଏମିତି ଭୟାନକ ଡ୍ରିମ୍ସ ଦେଖିଲା ଯେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଡରିଗଲା. ସେ ଆସିକି କହିଲା କି ତାର ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଆସିକି କହିଲା କି ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖୁଛି କି ଆମେ ଗୋଟେ ପାହାଡକୁ ଯାଇଛୁ ମୁଁ ତମକୁ ଉପରୁ ଠେଲି ଦଉଛି ତଳକୁ ଆଉ ସେଇ ଡ୍ରିମ୍ ଟା ମୋର ବାର ବାର ରିପିଟ ହଉଛି. So he was very worried. तो से ग्रैंडफादर कौन कले ताको नेकी फ्रॉइड को पाखु गले. तो फ्रॉइड ताको डिटेल रे बहुत सारा जिंस पिलाटा को पचारले. देन ही आइडेंटिफाइड वन इंसिडेंट जोटा से नरेट कर से ताको आइडेंटिफाई कले. व्हाट हैड हैपेंड वाज दैट दिने कोन हला से चाइल्ड ता जेजेपा संगे कथा हो से पचारले कि जेजे तुमर तो एते सारा प्रॉपर्टी अछि एते सारा जिंस अछि तुमर ए बंकुली बाड़ी अछि चश्मा अछि तो तुमे मरि गला पर एटा का को दो. तो जेजे कहले मरि गला पर तू नउसु. तो पिला खुशी हला कहला अच्छा हो ताले मु वेट करूची. So maybe Freud, according to Freud, so that thought that went and worked its way through the unconscious mind of the child, and that reflected in this incident कि से ताको ठेल दूची. जोड़ा से actually करी पारी न था but तार feeling थिला. सेटा को से dream रे देखला कि से dream रे ताको से जिनसटा fulfill हेई होची. Right. So you can understand कि in any case let me ମୁଁ बार बार तुमको एथପାଇଁ एक କଥା कहूची कि फ्रॉइड कर 90% theory right now it is discarded. Okay, we don't believe in any of these things because ପରେ ଆମେ realize କଲୁ କି ଏସବୁ ଜିନିଷର evidence କିଛି ନାହିଁ. But in any case from that theory these all functions are also derived. Ego defensive function ଆମେ ଏଥିରୁ derive କରିଛୁ. These are attitudes which protect people from deep internal conflicts. ତା ମାନେ କଣ suppose ଏଇ same case ରେ what will be the attitude of this person. Suppose ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି child को एमती anxiety inducing thoughts आସୁଛି कि से ता जेजेबापाଙ୍କୁ मारि दଉଛି. तो एठी repressive kind of attitude काम करियो. सो एठी गोटे तार एटीट्यूड एमती डेवलप हबो कि से रियलिटी को आउ फेस करिवो नाही. सो रियल जिंस को से रिप्रेस कर दो ता माइंड रे. सो दैट इज व्हाई आल्सो अल्पोर्ट गॉर्डन अल्पोर्ट बोली जने साइकोलॉजिस्ट थे ही हैड सेड दिस थिंग कि एटीट्यूड्स आर साइकोलॉजिकल क्रचेस फॉर दोज क्रिपल्ड इन द एनकाउंटर्स ऑफ लाइफ. तो बहुत बड़ बड़ कथा कुआ होची यार माने कोन बहुत सिंपली कहूची. तुमे देखिथियो किछि लोक कोन होतनी बहुत रूड थिबे राइट बहुत फालतू वे रे कथा होतबे. तो सपोज तांको संगे जाई कि तुम बहुत भल से बसे दिने कथा हो तांको पचरे कि बाबू जे आपण काहे के एते रूडली कथा होन ताले इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ देम विल से कि एक्चुअली आगुरु त हमें भलो थिलु हमें भलो वे रे कथा होतु हम लाइफ रे एमती किछि एक्सपीरियंस आसिला जोटा को कि जोटा हमें माने लोकंकर खराब साइड टाको देखिलु तापर हमें भी रियलाइज कलु कि नहीं हमको रूड हबार अछि हमें भी लोकन संगे खराब बिहेव करी बिकॉज़ आगुरु हमें तांको द्वारा बहुत हर्ट ही. So this is the meaning of ये जो attitude टा ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ develop ହେଲା this was because of they were crippled in the encounters of life. ମାନେ ଲାଇଫ ର ଏନକାଉଣ୍ଟର ରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିପଲ କରିଦେଲା. ଲାଇଫ ର କିଛି ଏମିତି ଖରାପ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସେଇ ଟିପିକାଲ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଟା ଡେଭଲପ ହେଲା. So these kind of negative attitudes are known as ego defensive functions. तो ସେଇ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ର କାମ ହଉଛି ତମକୁ ଆଉ ଫର୍ଦର ହର୍ଟ କରିବାରେ ଅଟକେଇବ. ସପୋଜ ତମକୁ କିଏ ଚିଟ୍ କରିକି ଚାଲିଗଲା ତାପରେ ତମେ କଣ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଆଉ କୋଉ ପୁଅ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ. So this kind of distrust or mistrust जो develop ହେଲା this is also an ego defensive function from attitude ର. तो यार सॉल्यूशन कौन हम सब देखछे कि से एटीट्यूड को चेंज केमते करिया. यार सॉल्यूशन होची साइकोथेरापी. साइकोथेरापी माने होची से बडा थेरापी जोटा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल बेस रे किसी गोटा काम करी. फॉर एग्जांपल यू विल क्रिएट a psychologist will create a rapport or trust with the attitude holder which is the person. किसी प्रथम ट्रस्ट प्रथम बिल्डअप करा सब थेरापी रे प्रथम ट्रस्ट बिल्डअप करा. Then he will create a conducive environment to change the attitude. Then through the conducive environment, he will help the person to gain insight into the inner conflicts. या माने से लोको को ही से रियलाइज करिया को दिया हबो कि मोर ए सो एटीट्यूड टा काहे की अछि मोर प्रॉब्लम टा काहे की होछि. सपोज ए जो रूड पर्सन थिला ताको हमें साइकोथेरापी करी ताको बुझेइबु कि बाबू तुमरो खराब एटीट्यूड हवार रीजन होछि तुम आगर पास्ट खराब एक्सपीरियंस थिला सेथि पे एंड नॉट बिकॉज दैट यू आर अ बैड पर्सन. Then we'll make him or her realize कि now if you want you can change your attitude and you can also be a good person. ଭଲ behave କରିପାରିବ ନା. So ତା ଦ୍ୱାରା ତାର ଗୋଟେ insight develop ହବ କି ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇ କାମଟା କରୁଥିଲି. ଯେତେବେଳେ ସେ insight ଟା develop ହବ ସେତେବେଳେ ସେ problem ଟା solve ହେଇଯିବ. So based on the realization then insight based he or she will change the attitude.
Any doubts in this? So it is a complicated part of attitude chapter. It is also ego defensive mechanism. If you want at home, at leisure, you study through it. What so ego defensive mechanism? There are examples we see. Repression, denial, projection, displacement, regression, sublimation. Very interesting stuff. But we are not going to discuss in detail. दरकार नहीं से attitude आमो ethics में दरकार नहीं. Now the third important or main function of attitude is something which is need function. Need function माने किसी attitude जोड़ा हमारा need को meet करछन. That is, they are helping us to achieve some goal or adjust better to life. Okay. किसी भी certain need को हमारा fulfill करछन. For example, need कौन? Suppose you are a public servant. So initially तुम एबे preparation करछो. Suppose तुम extrovert total ना. Suppose you are completely introvert. I have seen many such people. But once ସେମାନେ successful ହେଇଗଲେ service ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବେ ତ ତାଙ୍କୁ public dealing କରିବାକୁ ପଡିବ. Now they had to change their attitude and then from introvert then they became extrovert. I've seen many people. Okay. ସେମାନେ study time ରେ ସେମାନେ ବହୁତ introvert ଥିଲେ but service ରେ ଆସିକି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ extrovert ହେଇଗଲେ. because ତୁମକୁ deal କରିବାକୁ ପଡିବ. Now ଏବେ now are you able to understand ଏଇ ଯୋଉ attitude ଟା change ହେଲା this was because it was serving some need. because they realize କଲେ କି ସେମାନେ ଯଦି service ରେ ବି introvert ହେଇକି ରହିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କାମ କିଛି ହବ ନାହିଁ. right? Suppose you have been posted as district magistrate. ତମେ introvert ତମେ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ତ କାହାକୁ କିଛି କଥା ହେବିନି ତମେ କହିବ ମୋର steno ହିଁ ସବୁ କାମ କରିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରେ ଶୋଇବି ତ district ତ ଚାଲିବ ହିଁ ନାହିଁ. So you had the need कि तुमको तुम्हारा legal obligation तुम्हारा professional duty fulfill କରିବାର ଅଛି. So for that you were forced to change your attitude. So in any case ଯଦି suppose ଏଇ ଭଳିଆ କିଛି attitude ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି change କରିବା? ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି change କରିବା କି ଆମେ ସେ attitude holder କୁ ଦେଖେଇବା କି ତୁମର old attitude ଯୋଉଟା ତୁମର existing attitude ଅଛି ନା ସେଟା ତୁମର need କୁ adequately meet କରିପାରୁନି. Maybe meet କରୁଛି but adequately meet କରୁନି. ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ new attitude ଟା ତୁମକୁ adopt କରିବାକୁ କହୁଛ it will serve you better. Okay. For example, to give you a different example, suppose one person से कौन करती से suppose तो देखी तो बहुत bus conductor. Okay. How do they behave? बहुत rudely behave करते. Now this is also a type of need function ये attitude. Because I realize कल कि हमें ये job रे nicely deal କରିବାକୁ try करा लोग हम ऊपर चढ़ी तो हमें ताको संगरे we have to be rude. So suppose we are trying to change their attitude. हमें ताको जाई कहया कि बाबू देखो ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା attitude ଠିକ ଅଛି ଏଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ अगेन ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କ mental peace disturb ହବ. So rather than being nice rather you have to be assertive but assertive with politeness. ତ politely assertive ହେଲେ କଣ ହବ ଆପଣ କହିବେ କି ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ମତେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଏତିକି ବାଟ ପାଇଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର. You say it politely but you say it firmly. Okay. So politeness plus assertiveness ଏଇ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣ ଯଦି attitude change କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ mental peace ବି କାयମ ରହିବ plus ଯେତିକି ପଇସା ଆପଣ ଯାହା ଦରକାର whatever purpose you have daily in your life that will also be met. So now we are saying ki this change of attitude will meet your needs in a better way. It will serve you better. ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ convince କରିପାରିବା now this rude person will also become a polite person. This is the point कि need attitude को एमती change करें. So if you see it further दिया है these are all not required. ऐसा detail दरकार नहीं but in general need based attitudes are utilitarian that is goal oriented and or they are also adjustive माने adaptive function किछि अछि. For example utilitarian mode example दउथि public service रे administrator मानकर कोन attitude रहया कथा pro people attitude. So that is a utilitarian approach. Adjustive approach कौन? This is also an accommodative thing that it will help you to function better. Pro people हेले तुमको काम करियारे easy हो rather than if you are anti people, right? So need based attitudes are either utilitarian and or adjustive. Again we are discussing कि these attitudes may have formed in the past rewards or punishments. For example आम जो कथा जो rude थिला गोटे लोकटा attitude से कौन से किसी गोटे punishment ପାଇଁ ସେଟା ହେଇଥିଲା ନା ସେ ଆଗରୁ मे बी से starting रे से nice थिबो but ଲୋକମାନେ ତା ଉପରେ ଚଢି କଥାବାର୍ତ୍ତା करते थे खराब ଲାଗିଥିବ then he changed his attitude because of some punishment. Similarly suppose one person is very sweet it might happen that because of some rewards given to her she is sweet he or she is sweet. Suppose because he realized कि sweet हवा द्वारा ମୋ କାମ ହେଇଯାଉଛି ଆସାनी से because of some kind of rewards or punishment these need attitudes are formed. And finally this is the final kind of function
that is known as knowledge function. Knowledge function माने कौन से attitude सही type ର attitude जोटा कि हमको କିଛି ଗୋଟେ knowledge ଭଳିଆ କାମ ଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ knowledge ଟା normal knowledge ର point ନୁହଁ ମାନେ normal knowledge ତମେ ଯଦି ଭାବିବ କି ଦିଲ୍ଲୀ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର capital ସେଇ type ର knowledge ନୁହଁ ଏଠି ଏଇ sense ରେ knowledge use କରାଯାଇଛି कि କିଛି ବି information whether that may be right that may be wrong but some kind of information on the basis of which we function ଆମେ daily functioning କିଛି କରିପାରିବା so that in that sense this knowledge is used so attitudes which provide us some kind of basis for quick decision making माने immediately देखो attitude ଆଉ decision making ଭିତରେ ଏଇଟା ହଉଛି relation attitude ଆଉ decision making ଭିତରେ this is the relation what is the relation that if you have certain kind of knowledge based attitude this will help you to take better decision now how will you say that this is better in the sense that sometimes better will be in the sense of quickness sometimes it is better in the sense that it is the right decision so for example when we need quick decision there we use what is called as heuristics try to understand these points again ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ସବୁ ଟର୍ମ ଗୁଡା ଦେଖିକି ଡରି ଯିବନି ଏ ଟର୍ମ ଗୁଡା ବହୁତ ବେସିକ ଜିନିଷ ଏବେ ଦେଖ heuristics ବି କଣ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ସବୁ ୟୁଜ କରିଛ only thing is that you might not know କି ଏଇ ଜିନିଷର ମାନେ ହଉଛି ଟର୍ମ ହଉଛି ଇଏ heuristics ହଉଛି those mental shortcuts which help us to take quick decisions mental shortcuts for example even different kinds of prejudices they are also certain kind of heuristics suppose ତମେ କହିବ କି certain community ର ଲୋକ ଏମାନେ ତ ହଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କଥା କହିବା କଥା ନୁହଁ because if we talk to them it is possible that କିଛି ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ conflict ହେଇଯିବ so you might be very biased but it is helping you to take quick decisions in the sense କି ଯଦି next time କେବେ ସେଇ community ର ଲୋକ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ କାହାକୁ ତମେ ଭେଟିବ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବନି it is possible that again this kind of experience has developed because of some of your past experiences similarly ତମେ କହିବ କି so what is the meaning of heuristics these are mental thumb rules or mental shortcuts जोटा को हमको क्विक डिसीजन मेकिंग रे हेल्प करे फॉर एग्जांपल सपोज तुमको कहबो कि अच्छा तुमे ट्रेन ने जीवो कि गोटे जगह को ट्रैवल करियो जो तो यू हैव ऑप्शन कि ट्रेन रे जाय परियो फ्लाइट रे जाय परियो सो तुम यदि मेंटल शॉर्टकट तुम माइंड रे एटा अछि कि ट्रेन इक्वल्स टू डर्टी ताल तुम इमीडिएटली डिसीजन नै जो कि नाही मु ट्रेन रे जीवी नु फ्लाइट रे जीवी ऑन द अदर हैंड जदि तुमरो माइंड रे मेंटल शॉर्टकट अछि कि फ्लाइट होची रिस्क ताल तुम इमीडिएटली डिसाइड कर नाही मु ट्रेन रे जीवी फ्लाइट रे जीवी so do you see our attitude will also help us to take decisions based on mental shortcuts so this kind of attitude is serving what kind of function this is serving our knowledge function ei sense रे हमको now it is possible कि knowledge टा wrong भी हेथै पारे हेथै पारे किछि ट्रेन एमते अछंती जोटा डटी नै हेथै पारे किछि फ्लाइट एते भी रिस्की नै but so it is not a matter of whether it is factually correct or not it is in this sense it is knowledge use heji ki it is the basis for our decision making right similarly there is another term ki this is also serving our cognitive economy या माने कोन cognitive economy माने होची जोथरे हमरो cognition को कम यूज करिया पड़ियो so you use less cognition माने thinking हमें कम thinking यूज करके decision नहीं परिया okay which is also similar to this point कि think or reason less हमें कम भाबिया संग संग decision और संगे संग न नेले भी हमें बेसी न भाबी कि decision नहीं परिया okay similarly it will also help you to have consistency in the existing attitude जो attitude अच्छी से attitude टा will continue all of these will come under what kind of function this is the knowledge function of an attitude now what is the एटा को हम चेंज केमतिया करिया Sir, can you let me tell you explain once again cognitive economy? cognitive economy माने देखो suppose तुमको कहबा कि तुमे कौन तुम कैरियर चूज करियो ओके सो तुम चूज करिया जाउछ कैरियर तुम यदि कौन करियो तुम पाखरे ऑप्शन अछि तुम डिटेल पूरा रिसर्च करियो डिटेल रिसर्च करी देखला कि ओके मु यदि सिविल सर्विस करबी ताले मते एती पाठ पढिया पडियो जदि मु एमबीबीएस करबी ताले मते या करिया पडियो जदि मु एटा सो दिस इज वन मेथड एथिरे बहुत कॉग्निटिव कॉग्निशन स्पेंड होउछ ओके हाई कॉग्निशन बिकॉज़ तुम बहुत सारा थिंक करूछ ऑन द अदर हैंड यू कैन आल्सो डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम काइंड ऑफ एटीट्यूड एटीट्यूड बेसिस रे कोन
IAS equals to best, others are worst or not as good. Okay, तो एबे तुम्हें कौन तुमको किसी भाबिବାକୁ पड़ला कि एबे तुम्हें किसी न भाबिकी यू जस्ट डिसाइडेड कि चलो मु ताले एबे सिविल सर्विस एग्जाम दे। तो एठी आमे जो कॉग्निशन टोटली स्पेंड होने और बहुत कम स्पेंड होची, so the level of thinking that you are using is less. This is known as cognitive economy. एठी इकोनॉमी सही सेंस रे यूज होची जोतरे कम खर्च होची, less is being spent. So this is how your attitude will help you to use your mind less. बतन एटा भलो कि खराब सेटा हम कहूना, हेई टाइप रे एटा खराब। इनफैक्ट कॉग्निटिव इकोनॉमी इन मेनी केसेस इट टर्न्स आउट टू बी डिजास्टर्स। तुम यदि किसी न भाबी के एमते डिसीजन नै कियो, यू later on you will face the consequences. Our it is not a prescription, it is only a description कि many people take such kind of decisions based on their attitude. Okay, now এই attitude को हमें केमती change करिया, এই type attitude you have to provide the attitude holder with better ways of decision making. बर्तन आमे एई जो लोक एमितिया डिसीजन नौतला कि देखो आईएएस होजी बेस्ट, मु तो कोठी गोटे वीडियो देखि देइथिली हला, टॉपर एंट्री वीडियो, ग्रैंड एंट्री वीडियो मु देखि दी, सो somehow that attitude has formed आउ से ता ऊपर किसी रिसर्च करिया चाहू ना। सो आमे कहया बाबू देखो एई भलिया थिंकिंग रे तुमे जाओ नाही, तुमे डिटेल ले जिंसटा पढी कि बुझी कि तापर यू कैन डिसाइड, बट डोंट गो विथ दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड कि आईएएस इज बेस्ट आउ सब जिंस करा। ओके, सो विल से कि फर्स्ट यू डू सम रिसर्च। सो एबे हम तुमको अल्टरनेटिव वे ऑफ डिसीजन मेकिंग सिखोचे, हम तुमको कि तुमे डिसीजन टा एमितिया नियोनी एटीट्यूड बेस रे नियोनी, तुमे प्रॉपर रिसर्च करके कॉग्निशन माने थिंकिंग करके डिसीजन। सो यू हैव टू प्रोवाइड alternative or better ways of decision making. For example, logical reasoning. एबे हम तुमको logical reasoning ही देखिल ना। You can even tell them कि you take decision on the basis of algorithm. For example, stock market रे हमें invest करिया, तो से लोक कहयो कि अरे मु आज पूरा 10 20 30 40 करके जो कंपनी रे 100 पड़े सेठी इन्वेस्ट करी। हम तुम कहया बाबू एमितिया रीजनिंग करो नाही, किबा तुम एटीट्यूड बेसिस रे रीजनिंग करो नाही, यू इन्वेस्ट यू माने एल्गोरिथम बेस रे, किछ गोटे मशीन बेस रे, किछ गोटे आउटसोर्सिंग बेस रे you take your decision, right? So ei way we can change their attitude, otherwise it will be difficult। न से माने कहे कि हमें कहीं कि हमें देडा immediately जिनसटा हेई पारुची, ताले हमें कहीं कि अन्य way रे decision नबा। So you will say कि अन्य way रे decision नले that is better for you because you will arrive at the right decision, right? Sometimes you also have to provide them counter intuitive logic। counter intuitive logic माने कौन देखो, counter intuitive logic and counter attitudinal knowledge या माने कौन देखो, this is also a lesson for you guys by the way। Okay, try to understand, I think you will be able to better relate। मते कह सपोज एबे गोटे कोचिंग सेंटर 1 अछि आ गोटे कोचिंग सेंटर 2 अछि। सपोज कोचिंग सेंटर 1 इज सेइंग कि आमे तुमको गोटे कोर्स ऑफर करूछु, से कोर्स रे कोन अछि, सपोज से कोर्स टा अछि 10,000 hours of content and for that we are charging you 10,000 rupees। another coaching center 2 is saying कि हम पाखरे 1,000 hours ही content अछि, for that we are also offering you 10,000 rupees। you tell me which coaching center will you join if you don't know any other fact about this। तुम्हें quality of the content ये सब जिनसे किसी जानना, this is the only fact you know। तुम्हें को coaching center join करेगा, tell me। price same अछि, hours of content कम बेसी अछि। तेरे यहाँ गोटे thought experiment करिया, anyone? अरे कुह किस तो फीडबैक दियो, हमें ऑडिबल सर टूटा सर टूटा टूटा कहीं कि ଆଜ୍ଞା तुम्हें कहीं ସାର୍ कि ଅଧିକା पैसा देगी कम कहीं कि कंटेंट नबो। ସାର୍ ଯୋଉଠି କମ ସମୟରେ ଅଧିକ ନଲେଜ ଟାକୁ ଗେନ୍ କରିପାରିବା ସେଇଥିରେ ଆମକୁ ଲର୍ନିଂ ମିଳିବ ଯେ କେମିତି ଏକ୍ସାମ ରେ କମ ସମୟରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବୁ। Very good, this is ଆଉ an excellent reasoning। another kind of reasoning is also that कि is it possible, practically possible for you to study for 10,000 hours? even this coaching center knows कि तुम्हें 10,000 hours रो hardly 500 घंटा भी देख परियो कि नहीं, that is doubt। just to make their point माने तांकर एडवर्टाइजमेंट पे ସେମାନେ तुमको मैक्सिमम ସେମାନେ ह्यूज कंटेंट दे दउछन एंड तुमको लागुची कि यार 10,000 hours को यदि 10,000 दउची त माने मु कते 1 hour को 1,000 दउची त माने मते बेसी मु गेन करूची, माने कम देकी अधिका पाउची। एठी यदि 1000 hour को मु 10,000 दउची तन पर आवर 100 टका अधिका दउची, है ना। सो if you make this kind of mechanical decisions it will turn out कि
एइथिरे जेतिक अछि तुम देखि ही पारिबो एठी भी फाइनली मैक्सिमम तुम 1000 आवर्स देखलो okay so my point is on the basis of this you should not make any decision. I'll tell you another thing what also happened with me. I also joined one test series mains test series मुझे join करती many years ago. So the test series से माने मते convince कले कि देखो 30 टा टेस्ट अछि 30 टा टेस्ट पे तुम्हें 30,000 टका दो तापर मत से देखले कि देखो अन्य कोचिंग सेंटर कोन माने 10 टा टेस्ट को माने 25,000 टका नौ मते कहले ताल देखो तुम कोथि लाभवान हो कहले आज्ञा 30 टा टेस्ट कहले ठीक है ताले एटा नहीं जाओ कहले हो ठीक अछि I joined this. Then I realized कि how many in 1 year entirely I took exactly 11 tests. बहुत कष्ट रे मैं 11 टा टेस्ट लिखी. Okay, year long flexible test series. The point is even they know their own statistics says कि ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଫର କରାଯାଏ ହାର୍ଡଲି 5 to 10% ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ମାନେ ଏଣ୍ଟାୟାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ୟୁଟିଲିଟି କରନ୍ତି ବାକି 90% ୱେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ବିକଜ ଏଗେନ୍ ତୁମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଥିବ ତୁମେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ନବନି ତୁମେ ଭାବିବ ମୁଁ ଆରାମସେ ପଢି ଆଉ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପରେ ଦେବି ତ ଏମିତି ପୋଷ୍ଟପୋନ କରି କରି ଫାଇନାଲି 1 year ତୁମେ କଟିଯିବ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ମେ ବି ମରି ପଡି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଦବ ବଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ଲଟ୍ ଅଫ ଟେଷ୍ଟ my point was I should not have made this kind of reasoning. I should have thought it is better to take rather 10 tests because एथिरे rather 5,000 save हो if money is the only consideration. हमें क्वालिटी वालिटी विषय रे जाउनो but this is the way they lure you in. ଏବେ ସେମାନେ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁମେ 30 ଟା ଟେଷ୍ଟ କେବେ ଲିଖିବ ନା but ସେମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନମ୍बर ଅଫ ଟେଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବେ ତୁମକୁ ଲାଗିବ କି यार ମୋର ତ ଏଟା କଗ୍ନିଟିଭ ସରି ମୋର ତ ଏଟା ଇକୋନୋମିକାଲ ଆପ୍ରୋच ହେଇଯାଉଛି ତ ମୁଁ ଏଟା ନେଇଛି so this is a counter intuitive logic कि it is not always माने desirable or possible कि extra content और extra जिनस ही हम पे good rather I will say you should be माने counter way रे you should think कि less amount is actually good तुम्हें less amount पढ़ो but ताको revise करो less test दियो भलो से test दियो okay so 10,000 hours रो study अपेक्षा 1,000 hours of quality study you should look for them. So this is a counter intuitive logic ଆମେ ଏଇ ଭଳିଆ logic through ରେ also we can say कि देखो तुम normal intuitive logic जोटा that is wrong that means ଆମର normal और counter attitudinal knowledge similar point कि तुमर ଆମର normal attitude जहाँ अछि the reality is that तुम यदि इसको change कर दो counter कर दो then it will rather be more beneficial to you right? Okay now there are some other kind of examples of knowledge function केमिति ଆମର attitude different types of attitudes are also performing knowledge function now let us see what are the examples suppose we talk of prejudices prejudices को हम ପରେ पढ़िया in detail prejudices in short means negative irrational intergroup attitude negative irrational intergroup attitude माने गोटे अन्य ग्रुप ପାଇଁ ହିଁ ତମର ନେଗେଟିଭ ଆଉ irrational attitude ଅଛି ଯେମିତି କି ସପୋଜ देयर इज दिस attitude କି नॉर्थ इंडियन वर्सेस साउथ इंडियन तो सपोज तमे मन भावछ कि साउथ इंडियन माने बहुत खराब so this kind of attitude is known as prejudice कि entire group ପାଇଁ जो टाइप रो ଗୋଟେ खराब attitude so there is one very this is a very well known example कि तुम जानथियो कि केरला रो बहुत सारा नर्सेस माने जाई कि बाहर कंट्रीज रे ସେମାନେ एस्टाब्लिश होछन स्पेसिफिकली इन यूएसए तो इनिशियली जतन ସେମାନେ माइग्रेट करथले अन्य कंट्री रे जाई काम करथले तो अमेरिकन जो व्हाइट डॉक्टर स्पेसिफिकली जो माने दे आर वेरी सस्पिशियस ऑफ देम कि यार एमाने इंडिया रो आछन एमान कोन जणाथियो बट व्हेन दे स्टार्टेड वर्किंग विथ देम दे रियलाइज्ड कि नहीं actually they are very hardworking they are very knowledgeable so their attitude gradually change so prejudice टाको हमें केमिति चेंज करि परिया through actual experience जेतरा हमर actual experience will be counter to our attitude हमें attitude जहा भाबुतलु तार against हम experience आसीगला then these people ए जो attitude holder माने these are the attitude holder in this case they will change their attitude towards the attitude object एठी attitude object हले जो मलायली नर्स मान similarly talk about stereotypes माने कोन fixed or rigid irrational categories again this is also an outcome of certain kind of attitude कि तुम्हारा stereotypes अछि कि नॉर्थ इंडियन आर लाइक दिस साउथ इंडियन आर लाइक दिस नॉर्थ ईस्ट इंडियंस आर लाइक दिस तो ये जो stereotype माइंड रे अछि कि सब नॉर्थ ईस्ट इंडियन माने हले ए सर्टेन काइंड ऑफ पीपल कि से माने समस्त मोमो खाउछंदी तो ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन माने मोमो खाउछंदी दिस इज अ stereotype हाउ विल दिस चेंज थ्रू एक्सपीरियंस इट विल चेंज तमे दिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया गलो देखले कि से माने भात डाली खाउछंदी तुम्हार माइंड ब्लोन हे गला अरे वाओ मु तो भूल बुझतिली ताले so actual experience will also work to change their this kind of attitude similarly cognitive bias हमें गोटे एई स्टडी टा परे पढिया या परे पढिया टेस्टिंगर एंड कार्ल स्मिथ कर गोटे स्टडी अछि cognitive dissonance ऊपर cognitive dissonance based attitude change
In any case, we'll come to attitude change afterwards. Take 5 minutes break. 7:56 around, 7:57 around we'll meet. 5 minute break. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. कौन डाउट अच्छे यदि पचार so far if you have any doubts screen दिखाओ जे मोर
Is my screen shared or not? Yes, sir. Okay. कौन डाउट अच्छे पर्यंत किसी पार्ट बुझी पारलानी पढ़ियो ए सब इगो डिफेंसिव मैकेनिज्म पढ़ियो बहुत ही इंटरेस्टिंग जिंस अछि ओके सो फॉर एग्जांपल जंते रिप्रेशन टा होची कि रिप्रेस करदा अनडिजायरेबल थॉट्स फीलिंग्स को रिप्रेस करदा डिनायल होची जस्ट सिंपली तुम डिनाय करियो कि एटा तो नहीं अब बहुत सारे जिंस मु एक्चुअली आई हैव आल्सो सीन इन सम पीपल ओके फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय फ्रेंड्स स्टिल इन सर्विस सो ही हैड फोन ओके तापर तार गोटे बहुत ही प्यारा फोन फॉर सम रीजन थिला से फोन टार एक्चुअली खराब हे से फोन आउ चार्जिंग हो नहीं पॉइंट वाज दैट हिज गर्लफ्रेंड हैड गिफ्टेड हिम दैट फोन तो से फोन टा फॉर सम रीजन चार्ज हो नहीं तो से चार्ज जतले करूची बहुत धीरे धीरे चार्ज हो तो आमे ताको बहुत सारा डिफरेंट चार्जर रे भी लगे देखिए चार्ज हो नहीं तो फॉर एवरी टाइम आमे से कहली कि भाई चेंज कर दियो एटा तो ही वाज सेइंग कि नहीं एटा एट वन पॉइंट ही सेड कि नहीं चार्जिंग पॉइंट टा खराब अछि देन ही सेड कि चार्जर फर्स्ट कहला चार्जर खराब अछि तमरो ही चार्जर खराब अछि तापर कहला कि आमे कहला हम समस्त चार्जर खराब अछि कहला हां तापर कहला नहीं चार्जिंग पॉइंट खराब अछि तापर फाइनली आई सेड कि भाई तुम ପାଇଁ ବୋଧେ ଫାରାଡେସ୍ लॉ भी ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉ आई थिंक जो एसी रू डीसी हो डीसी रू एसी होची सेही सेटा भी दैट इज समथिंग रॉन्ग इन दैट थिंग आई थिंक माने पॉइंट इज ही कंप्लीटली डिनाइड कि फोन मो फोन में तो किसी गलती ही नहीं so this is one example you will see many of these ego defensive mechanisms you will see प्रोजेक्शन बहुत लोगों भितर तुम प्रोजेक्शन देखियो ସେମାନେ ନିଜେ ଯାହା ଥିବେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ସେଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେ in the sense कि suppose they are suspicious or they lack trust they will tell the other person कि you lack trust right ସେମାନେ ଅନଏथिकल ନିଜେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଅନ୍ୟମାନେ ଅନଏଥିकल ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସପୋଜ ଏ ଖୁଚୁରା କାମ କିଛି କରୁଥିବେ ଚୋରି ଚୋରି କରୁଥିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପିशिୟସ୍ ନଜରରେ ଦେଖିବେ दैट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्शन सो यू प्रोजेक्ट योर ओन फीलिंग्स एंड डिजायर्स टू अदर्स ସେମିତି ଦେଖିବ डिस्प्लेसमेंट कौन कि सपोज गोटे लोक तार ऑफिस रे जाई कि गाली खाई कि ऑफिस रे बहुत बॉस टू गाली खाई कि आछि सो ही विल डिस्प्लेस दैट फ्रस्ट्रेशन ऑन हिज माने तार अन्य फैमिली मेंबर घर को आसले ता वाइफ को गाली दବ बिकॉज व्हाई बिकॉज ऑफिस रे से बॉस को किसी रिप्लाई दे पारलन बट से रागटा ता भीतर था सो हेटा तो कहा ऊपर डिस्प्लेस करियो से he displaced it on someone else so all of these are very interesting topics you want to read through it ego defensive mechanisms they are very interesting okay now let's move on to the next part changing attitude and this is actually something remember ये जो entire chapter ଅଛି ना this is not just GS4 केवल नो you can also write in essay okay you can write in society in some parts of society for example किसी society रे suppose किसी societal changes कथा पचरा हला okay suppose तुम पचरा हला कि स्वच्छ भारत मिशन को आमे केमती सक्सेसफुल करिया you write some provide some give some suggestions in those cases also you can write these way forward रे तुम एटा लिख परिबी केमती हम लोकंकर attitude change करिया remember सब बेले जो भी टॉपिक टा हमें पढ़िया तार गोटे थ्योरी पार्ट थियो तार आउ किछि गोटे प्रैक्टिकल पार्ट थियो सो दिस इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हाउ वी कैन अप्लाई द थ्योरी टू रियल लाइफ सो आमे यदि एटीट्यूड रे एते डिटेल विषय पढुछु कि एटीट्यूड कोन तो फाइनल पॉइंट होची यू शुड ट्राई टू चेंज एटीट्यूड इन अ डिजायरेबल वे किछि लोकंकर एटीट्यूड चेंज करिया निहाती दरकार तो आमे देखिए केमिति आमे चेंज कर पारि you see how this actually changes so what is our goal our goal होची कि आमे अनडिजायरेबल और anti-social attitude को change करिया towards desirable or pro-social attitude. Just to give you one example, suppose littering. Okay. Littering माने जो माने अपरिष्कार करूचंती बाहरे अळिया आवर्जना पकाउचंती तांको आमे somehow effect we can change their attitude then they समाने pro environmental attitude तांकर आमे केमती आने this is just one example okay there are different way for example criminals तांको केमती आमे normal society रे गोटे normal member करी आनी सो हमको कौन करिया पड़े हमको एटीट्यूड चेंज करिया पड़े तो मु कहितली कि एटीट्यूड टा समथिंग इंटरनल डीपली हेल्ड तो एटीट्यूड बिहेवियर को तो ऊपर चेंज करियाटा इजी सपोज तुम पार्टी दंड करी जन को किछि टाइम में सप्रेस कर दला बट जनकर एटीट्यूड टा चेंज करियाटा डिफिकल्ट एंड एटा को ही हमको चेंज करिया पड़ियो जदी हमें लॉन्ग लास्टिंग चेंज आनिया को चाहिए सो दैट इज आवर गोल कि हमें एटीट्यूड को चेंज करिया now the point is why is persuasion acha changing of attitude is known as persuasion this is the meaning of this term persuasion attitude is what they have persuasion is that you are able to change their attitude मतलब mind ही change कर दो
So but the point is, why is persuasion so difficult? Persuasion is difficult because attitude are, first of all, these are deeply held. ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ, this is deeply held. For example, you have seen in the Freud's theory there are different levels. ସେ ଏମିତି କହିଥିଲେ conscious, preconscious ଆଉ unconscious, u ବାଲା use କରିଥିଲେ. ଅନ୍ୟ theorist ମାନେ subconscious to use କରନ୍ତି, s, conscious and subconscious. So usually many of these attitudes are in our subconscious also. So these are very deeply held. ଆମ ଭିତରେ internally ଏତେ deep ରେ ଅଛି, even many of times we don't know. So that is why it is difficult to change. Second is, it is persistent or enduring. हमें definition नहीं देखिଥିଲେ कि this is enduring माने this is resistant to change, एते जल्दी change हुए नहीं. And these are predispositions or tendencies. गोटे tendency को change करियाटा difficult. Okay. तुमे immediate गोटा लोकर behavior को भी even regulate कर पारियो, but कहारो tendency को change केमतिया करिया, so that is much more difficult because tendency is something which comes from internally, right? But before we go towards this, এই পার্টটা আমি যে ডিসকাস করଥିଲେ कि जने for example one person asked कि attitude और behavior रे difference कौन ଅଛି? The point is कि attitude and behavior are different and attitude influences behavior. And our final goal is कि through attitude change हमें behavior को change करिया in the long term. And this change of behavior is something in a desirable way. For example, criminal को हमें केमती society रे integrate कर परिया, तो जदि तार attitude change कर परिया से गोटे भल लोक होई, तो तापरे हम ता उपरे continuous नजर रखिया दरकार नहीं. So that is our long term goal. But the problem here is, एबे समझ जण कहे कि तुम तो कहूछ कि attitude change करी behavior change कर दो, so then you are assuming कि attitude और behavior भितर गोटे direct link अछि. So who will say कि ए link टा अछि कि नहीं and केते strong अछि? Okay. That is the point. कि what is the attitude behavior link? So only if there is a link, then we will study कि how to change the attitude. नॉले attitude change करी हम फायदा कोन हो? नॉले तो आमे केवल immediate behavior change ऊपर फोकस करिया. For example, आमे law rule ए सब जिंस ऊपर फोकस करिया कि केमती situational और external factor through रे आमे लोकंकर behavior को माने control करिया, rather than कि internal factor through रे control करिया. So for that reason, we are trying to understand कि why should we study attitude anyway? The argument here is कि there is an assumption कि attitude which are relatively fixed, and this there is a direct link between behavior. And if we can understand attitude, then we can understand behavior. And if we understand behavior, then we will be able to predict that behavior. And if we are predicting that behavior, finally, we will be able to control the behavior. And this is something also another thing which is known as the goals of psychology, or in any case in any kind of science. If you see in many disciplines, तुम first chapter रे बहुत सारा topic रे पढ़ी दियो कि तुमरो goal कौन अछि. चारिटा usually goal थाए, गोटा थाए description, then there is explanation, then there is prediction, then there is control. Means suppose आमे theories of laws of motion कहीं पढ़िया. Laws of motion आमे प्रथम कौन करिया, describe करिया कि how objects move. Then we will explain माने जेमती Newton's laws of motion that explains कि how objects move. Okay. एटा description में simply कि object को आमे देखिलु कि ସେମାନେ एमती straight line रे जाउछंती. Then आमे देखिलु गोटा object आउ जो गोटा object रे बाडे गले से घुंची जाउची किछि बाटा. This is only the description. Explanation हला जे न्यूटन जेमती कहले कि माने गोटे force टा होची गोटे equal amount of reaction create करी. Okay. Action will produce same amount of reaction. Then we come to prediction. Prediction on the basis of this understanding, we are able to predict कि गोटे ऑब्जेक्ट जदि एतिकी वेलोसिटी रे गला आउ गोटे ऑब्जेक्ट देहरे बाडेला ताले कोन रिएक्शन हे करी. And when we are able to predict that, then we will be able to control it. Then we will be able to control, for the example, आमे सेही बेसिस रे सबु जिंस तयारी करिया, गाड़ी तयारी करिया, स्पेस लॉन्च व्हीकल तयारी करिया, एवरीथिंग. For example, think of this thing. गोटे प्रैक्टिकल एग्जांपल मु तुम कहूची. For many a time आमे जान नथले कि हम अर्थ रो वेलोसिटी केते. Or even for example, take off this case कि माने जो किछि planets माने अछन से माने को रेट रे मूव करछन. We did not know this. Now first we described this, then we explained तांको मोशन कोन. एक्सप्लेन कला पर हमें प्रेडिक्ट कर परलु कि एई दिन एई टाइम रे से प्लैनेट टा एठी थिबो. Once we are able to predict it, then we can take action. In the sense कि suppose action माने कोन, suppose you have to find मतलब तुम फोटोग्राफी नवार अछि जे जिंस, then you will wait at this place for this object, right? So this is also the goal of
attitude change कि attitude और attitude को हम यदि understand कर पाले ताले behavior को understand कर पारे behavior को understand कर पाले ताको हम predict कर पारे and finally ताको control कर पारे तो that means suppose we try to understand कि criminal मानकर attitude कौन तांकर attitude जदि हम तांक criminal mindset बुझी पारिया ताले तांकर behavior बुझी पारिया behavior यदि बुझी पारिया ताले हमें predict कर पारिया कि एई situation रे गोटे criminal केमिति behave करियो then we will be able to control it. This is the entire goal. But then we come to this part कि okay चलो हमें कह देले कि एटा link भी अछि suppose we also said कि there is a link but how strong is that link हेई पारे it is possible कि attitude of हम चलो मानि गले attitude behavior with link अछि but maybe this link is very weak in the sense कि attitude ऊपर बेसी डिपेंड करनी बेसी डिपेंड करछि अन्य फैक्टर ऊपर फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल फैक्टर्स ऊपर यदि बहुत वीक हबो ताले हमें attitude पढ़िया दरकार नहीं so go through these studies okay एते डिटेल हम जिबा दरकार नहीं just gave you the studies but you see कि usually most of the studies say कि attitude behavior भितर link अछि and that link is relatively strong not very strong but relatively strong and again that strength comes from different factors also बहुत सारा factor ऊपर depend करे से जिनस कोन for example suppose किछि ओटा attitude ता तमरो survival को impact करछि ताल तो से attitude ता बहुत ही strong है but suppose किछि ओटा attitude अछि which is not that relevant to your life तो से attitude ର strength ता एते बेसी होबो नै accordingly सेही attitude basis रे हमें predict करि परिया नाही एते accurately कि तमरो behavior कोन होबो so this there is this link and the point is the strength will also vary but there are some these counter intuitive studies go through these studies you will be able to understand the study ro mane kon these have said ki actually attitude or behavior vitre link ta ete strong nuhe but again these are just counter arguments okay जोड़ा सब counter argument so किछि study एमती अछि जोड़ा कहूची कि नहीं एते strong नहीं but most studies says कि actually the link is strong right? Now to come to this part कि actually से strength टा कोठु आसे so this is we are talking about attitude strength ना बहुत सारा साइकोलॉजिस्ट माने रिसर्च करके जिनसा पाइछंती कि चारिटा फैक्टर थ्रू रे वी आर एबल टू चारिटा फैक्टर होची एटीट्यूड बिहेवियर लिंक को डिटरमाइन करे और गवर्न करे कौन कौन फैक्टर एक्सेसिबिलिटी रेलेवेंस स्ट्रेंथ स्पेसिफिसिटी तो ता माने कौन फर्स्ट हला हम देखिए एक्सेसिबिलिटी माने से कहूची सही एटीट्यूड जोटा बहुत ही इजीली तमे एक्सेस करि परिबो दोज एटीट्यूड्स आर मोर एंड्यूरिंग माने सेटा बेसी टाइम पर्यंत लास्ट करि परिबो फॉर एग्जांपल सपोज तुम माइंड रे एटीट्यूड अछि कि आई लव माय कंट्री so maybe due to many external factors also बार बार तुमको रिमाइंड करा होची कि you should be patriotic okay सब जोआडे जाउछ चारिडे नेशनल एंथम बाची for some reason so that means for that time that attitude is easily accessible जेतले attitude ता easily accessible थाए सेतबेले तुमरो एक्शन भी अकॉर्डिंगली बहुत ही प्रेडिक्टेबल हे जी ता माने होची सपोज सही टाइम रे जदि नेशनल एंथम कोठी बाजिला we can accurately predict कि तुम संग थी आई पड़ियो टू पे रेस्पेक्ट बट अदर टाइम रे हे पारे जते कि सपोज बहुत टाइम धरि कि से सब जिंस तुम माइंड को एक्सेस तुम करि ना हो से एटीट्यूड को देन सडनली कोठी गोटे नेशनल एंथम बाजिला तो इट विल टेक यू सम टाइम ओके टू रिएक्ट सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेसिबिलिटी बहुत सारा एटीट्यूड एमती थाए जोटा डीपली तुम अनकॉन्शियस माइंड रे थाए इट इज नॉट इजीली एक्सेसिबल टू यू तो अकॉर्डिंगली तुम बिहेवियर को भी प्रेडिक्ट करियाटा डिफिकल्ट हो बिकॉज़ इवन यू डोंट नो हाउ यू विल बिहेव राइट suppose your attitude towards lawyers or court so that is of certain kind suppose there is a negative attitude but एते भी strong नुहे आ एते भी prominent नुह तो तुमर सेटा unconscious mind रे अछि तुम जतले कोर्ट को जीवो भी इमीडिएटली से जिंसटा बाहरी बट आफ्टर माने किछि पूरा गोटे दिन स्पेंड कला परे इवनिंग बेल को तुमको बहुत विरक्त लागियो सताल धीरे 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 तुम रियलाइज करे कि अच्छा मे बी इट इज बिकॉज मो निज भितरे भी गोटे एटीट्यूड थिला व्हिच वाज अगेंस्ट एंटी दिस प्लेस राइट सिमिलरली रेलेवेंस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेलेवेंस now what is the relevance of the attitude to the attitude holder that means it is performing some need function जदि गोटे attitude ता तुम need function को meet करछि adequately that means सेही attitude तार relevance तुम पे बहुत अधिक for example suppose हम यदि example देले public servant ना public servant मान पई outgoing होबा और pro people होबा ए attitude ता very relevant because pro people no हेले तुम निज काम करियाटा difficult हे जो so it is meeting some need function therefore in this person this attitude will be strengthened and this will be a strong attitude in this person on the other hand गोटे यदि
सपोज गोटे डेस्क वर्क किसी गोटे लोक करुच्ची गोटे कंपनी रे कंप्यूटर आगे से बसी कोडिंग करुच्ची फॉर दैट पर्सन प्रो पीपल हवार एटीट्यूड टा एते स्ट्रांग हबो नाही बिकॉज फॉर हिम इट इज नॉट दैट रेलेवेंट से दिन सारा बसी कंप्यूटर आगे कोडिंग करुच्ची से लोकन संगे डील लोकन को डील करू नाही सिमिलरली स्ट्रेंथ इन जनरल स्ट्रेंथ एटीट्यूड रो स्ट्रेंथ केमतिया डिटरमाइन हबो ना डायरेक्ट एक्सपीरियंस थ्रू रे जो एटीट्यूड फॉर्म हेतियो दोज विल बी स्ट्रांगर इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस थ्रू रे जोटा हेतियो इट विल बी वीकर एटा तो बहुत ही ऑब्वियस कथा तुम्हें डायरेक्टली फेस करछो किछि लोकन को ऑफ सपोज सर्टेन कम्युनिटी और प्रोफेशन और सर्टेन काइंड देन सेथरु तुमर जो एक्सपीरियंस हबो तुम सेटा लाइफ टाइम मन रहयो तापर से लोकन आडू तुमर एटीट्यूड भी चेंज हो सपोज यू मेट ए पर्सन फ्रॉम बिहार बिहारी so suppose he deals very nicely with people तो तुमर गोटे बहुत भल राप हो गला सब किछि बहुत भल फ्रेंडशिप हो गला नेक्स्ट टाइम तुम गोटे बिहारी को देखा तुमर गोटे पॉजिटिव फीलिंग रहयो बिकॉज इट इज फॉर्म ड्यू टू डायरेक्ट एक्सपीरियंस इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस थ्रू है कि के तुम जन तुमको कहना अरे यार बिहारी लोक तो एते भल नुहं तो सेही एटीट्यूड रो स्ट्रेंथ का एते स्ट्रांग हबनी सो ऑन दैट बेसिस योर डिसलाइक विल नॉट बी दैट स्ट्रांग और इवन लाइकिंग विल नॉट बी दैट स्ट्रांग वेरी सिंपल थिंग डायरेक्ट एक्सपीरियंस थ्रू स्ट्रांग हो सिमिलरली स्पेसिफिसिटी जो एटीट्यूड गुडा बेसी स्पेसिफिक हबो दे विल बिकम मोर बेटर प्रेडिक्टर्स ऑफ बिहेवियर माने यदि स्पेसिफिक एटीट्यूड माने सपोज तुमको बिरयानी आडो तुमर एटीट्यूड कोन अछि तुमको हाईली फेवरेबल हाईली पॉजिटिव इन जनरल फूड आडो तुमर कोन ए अछि ओके ओके टाइप एटीट्यूड कि हां चलो चले दा फूड हां खाइ इच्छा ले खाइबी नॉन नहीं सिमजा अछि तो स्पेसिफिक एटीट्यूड जोटा है ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी कैन प्रेडिक्ट कि सपोज सौरभ को दिया है बिरयानी सौरभ खाएगा कि नहीं वी नो कि ये सौरभ विल ईट आई एम टॉकिंग अबाउट माय ओन experience also okay I will never say no to biryani but in general other food whether Saurav will eat or not it depends more इच्छा ले खाएगी ना खाएगी right? So the more specific the attitude the more better you are able to predict कि whether the person will act in a certain way or not okay. Then come to this part कि changing attitude through cognitive dissonance now try to understand in point यार माने कौन बाय द वे डिसोनेंस हमें आगरो भी देखिछु एई वाला किछि डायग्राम करछु कॉन्सोनेंस वर्सेस डिसोनेंस तुम रखो डिसोनेंस माने कोन डिसोनेंस होची गोटे अनकंफर्टेबल फीलिंग मेंटल डिस्कंफर्ट और अनकंफर्टेबल और इजीनेस अनइजीनेस मेंटली तुम्हें डिस्कंफर्ट फील करे जगह सो दैट इज नोन एज डिसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस होची जोथरे कंफर्ट अछि और किछि प्रॉब्लम नाही सो कॉन्सोनेंस और डिसोनेंस रो फॉर एग्जांपल अदर एग्जांपल भी हे परियो एठी हमें कॉग्निटिव कॉन्सोनेंस और डिसोनेंस होता एठी कथा होना एठी नॉर्मल कॉन्सोनेंस और डिसोनेंस होता होची for example this comes from Carl Rogers theory Carl Rogers was a very well known psychologist he said कि there are two kinds of self दुईटा सेल्फ गोटे लोकर थाए रियल सेल्फ गोटे थाए आइडियल सेल्फ रियल सेल्फ होची सेही एक्चुअल सेल्फ तुमर जोटा आइडियल सेल्फ होची तुम कोटा आइडियल भावछ कि मु एमितिया हबा कथा राइट सपोज you are very lazy kind of person so that is your real self बट तुम आइडियल पर्सन भावछ कि मु पूरा जिम डेली जाउथवा गोटे पिला हे जानती सो दैट इज योर आइडियल सेल्फ ना जेतले रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ भितरे ओवरलैप बहुत अधिका अछि सेतले हमर कंफर्ट रहयो सेतले कॉन्सोनेंस वी विल फेस कॉन्सोनेंस माने किछि इशू होबन यू आर कंफर्टेबल माने सपोज से लेजी अछि सॉरी से हार्ड वर्किंग अछि एंड ही इज गोइंग टू द जिम देन देयर इज कॉन्सोनेंस आइडियल सेल्फ बट से लेजी अछि आ तार आइडियल सेल्फ भी कि मोडे लेजी लोक ही रहे ताहले भी ओवरलैप हो ताहले भी तक किछि इशू होबन से आराम से रहयो बट डिसोनेंस केतळे हबो डिसोनेंस केतळे हबो जतले रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ भितरे देयर विल बी डिफरेंस मींस तारो रियल सेल्फ होची से लेजी बट आइडियल सेल्फ से डेली भावची काश मु डेली जाई परथांती जिम जाय के एक्सरसाइज करी दिए पतला हे जान बट सी जाओ नाही डेली तनु ता मन रे एंजाइटी क्रिएट करे मेंटल डिस्कंफर्ट फील करियो कि यार मु चाहि कि भी छाड़ा मु जाओ नाही जिम maybe for any reason it might happen but he or she will feel discomfort similarly suppose your real self is that you are a dishonest person but your ideal person is honest person तो तुम्हें हबा को चाहो honest and maybe लोगों को you are publicly showing कि एटा publicly show करछो कि you are an honest person but in your mind you know you are dishonest you will face dissonance mental discomfort feel हो तो मतलब बहुत प्रवचन दो तो अन्य को honesty विषय निजे dishonest हो at the end of the day you will not be able to sleep peacefully so similarly consonance और dissonance जतले
cognitive level ले हिजो माने thinking basis रे level ले आसियो, that kind of dissonance will be known as cognitive dissonance. So cognitive dissonance is the perception of contradictory information and the mental toll of it. Contradictory information तो mind रे जेतले आसियो कि reality गोटे जिंस अछि आ तुमे शो करछो आ गोटे जिंस सेतले तुमरो mental toll नबो माने mentally तुम ऊपर taxing हबो. हम गोटे example थ्रो रे एटा देखिया. This is an example कि cognitive dissonance कोन. Suppose you are तुमे smoke करछो, ठीक अछि. So the smoking tobacco or cigarette रो example हम नीजो. So you know that tobacco causes cancer, and you also know that I smoke. तुमे smoke करछो बोली तुमे जानिछो. So this will create cognitive dissonance because you understand that tobacco causes cancer and I also smoke, so that means मते भी cancer हब. So तुमे smoke बाध्य होछो, तुमे addiction ही smoke करछो, पर तुम mind रे anxiety जो आसियो, that anxiety is known as cognitive dissonance. Are you able to understand cognitive dissonance को? सेमिति एबे तुम मान को इतरे cognitive dissonance किछि पिलांकर already अछि, maximum पिलांकर थिबो. You want to study 8 hours 10 hours whatever it is, but you are studying 6 hours. सेति पई ही तो तुमको टेंशन लागुछि ना. किछि पिला मते पर्सनली मेसेज करन कथा होनी सर पढी पानु बेस समय. So let us see now then तार रीजन में बुझ परलो. तुम्हारो रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ रो गैप होछि से. तुम्हारो आइडियल सेल्फ होछि मु दिन को 12 घंटा पढे, तुमे एक्चुअली पढुछो 5 घंटा. So the difference will create dissonance in your mind कि I am not able to study more, मु काहे की पढी पारु नाही. अरे यार कोडे पळेला एटा. Attitude and aptitude. Okay, so this is the difference. Now हमें देखिए कि suppose ए लोकर एमितिया dissonance ହେଇଛି, तो what is the option for him? कौन करि परियो से लोक? So resolving dissonance, cognitive dissonance, तीनटा main option से लोक पाखरे अछि. एटा होजी either this is a behavioral change, either से behavior को change कर दो, माने smoking करिया छाडी दो, but this is very difficult because smoking रो addiction already ହେଇଛି. तो smoking गोटे only example. बेले बेले कोन होय addiction न होले भी सेटा habit भले है. Suppose it is your attitude or तुमर attitude कोन कि तुमे you are rude to others. So after certain time तुम हटा behavior रे sorry habit रे convert ही, तो हटा change कर behavioral change टा difficult. then other option तुम पाखरे कोन अछि, you can also do trivialization. Trivialize माने trivial word रो आसी. trivial माने अरे एटा तो गोटे छोट जिंस. तो ए लोक कोन कहयो कि स्मोक करियाटा तो गोटे छोट जिंस, एते बड़ जिंस कोन. तो छोट जिंस केमतिया से कहे कि टोबाको हेले कोन समस्त कैंसर होउची, एमतिया तो किछि गारंटी नै. से हेटा ता मन निजो बुझौची कि मु तो जानि छी से अमुक बाबू, मु तो जानि छी मिश्र बाबू बहुत सिगरेट पियंती, तांको तो कहीं कैंसर हैनी. तो एटा किछि बड़ कथा नु. ऑन द अदर हैंड सपोज सेटा भी से जानि छी कि नै टोबाको और कैंसर भितरे लिंक वेल एस्टैब्लिश्ड अछि, ताहाले से ता पाखरे आउ कोन ऑप्शन अछि. ही कैन आल्सो डू व्हाट इज नोन एज जस्टिफिकेशन. से जस्टिफाई करियो ट्राई करियो कि आई स्मोक बिकॉज़ आई नीड इट टू फंक्शन इफेक्टिवली, or any other reason he can give you. I have just given one example कि मु स्मोक कहीं करछि ना, स्मोक कले ही भलो पाठ पढि पारि, भलो काम करि पारि. आई नीड द स्मोकिंग, मु स्मोक कले ही बेटर फंक्शन करि पारि. देयर आर आल्सो सम अदर वेज ऑफ रिड्यूसिंग डिसोनेंस. आउ कोन वे रे करि पारियो, यू कैन चेंज द बिहेवियर. चलो बिहेवियर तो हम कथा हल, एटीट्यूड भी चेंज करि पारियो. एंड दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ आवर मेन ऑब्जेक्टिव कि या थ्रू रे हम केमती एटीट्यूड चेंज करिया, हम परे हेटा देखिया. बट द पर्सन कैन आल्सो प्रोवाइड पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशन. निजो को निजे सेल्फ अफर्मेशन से करियो कि नहीं मु तो भलो पिला, आई स्मोक बट आई एम ए गुड गाय, सो स्मोकिंग इज माय ओनली बैड हैबिट. तो ए लोकंकर केते खराब हैबिट अछि, मद पिउछन, ड्रग्स होछन, मु तो खाली स्मोकिंग करछि, असुविधा कोन गोटे खराब हैबिट अछि, ठीक अछि. सो दिस इज आल्सो वन वे द पर्सन इज ट्राइंग टू रिड्यूस द कॉग्निटिव डिसोनेंस. एंड देयर आर फाइनली मेनी मैल एडेप्टिव कोपिंग वेज. मैल एडेप्टिव कोपिंग माने, एडेप्टिव कोपिंग माने होछि ठीक वे रे कोपिंग करिया, कोप करिया माने एडजस्ट करिया. ओके, करेक्ट वे रे एडजस्ट करियाटा होछि माल एडेप्टिव कोपिंग. माल माने होछि बैड. सो माल एडेप्टिव कोपिंग माने होछि बैड वेज ऑफ एडजस्ट. सो बैड वेज ऑफ एडजस्टिंग केमति करियो कॉग्निटिव डिसोनेंस रे, अल्कोहल पीबो, ड्रग्स करियो, अब्यूजिंग अदर्स, ओके, aggression for example, these are also can be an example of displacement type of ego defensive mechanism I may discuss करते. All of these will be also can be how the person will adapt to the attitude. So for example, say cigarette पीले ताको टेंशन होची,
से कौन करे ताको डील न करया पे से मद ही पिया स्टार्ट करे मद पीले तो भूली जीव ना एंड एक्चुअली पॉइंट इज मेनी पीपल एक्चुअली डू दिस काइंड ऑफ स्टफ घरे बहुत प्रेशर जेतले जनका ऊपर पडियो से धीरे धीरे कौन करियो that person will resort to this kind of maladaptive coping methods they will start drinking drugs कौन किछि से स्टार्टिंग रे कहते कि यार किछि टाइम पे मु भूली जाऊ चाहूची जिंसटा बट पर से जिंसटा एडिक्शन हो जाए so these are bad ways of adjusting maladaptive coping but these will also temporarily these can also help to reduce the cognitive dissonance only temporary case okay बेसी टाइम एटा करिवो नै एपन किछि डाउट अछि यदि पचा ସାର୍ ଯାହାର କଗ୍ନିଟିଭ ଡିଜୋନାନ୍ସ ହଉଛି ତା ମାନେ କଣ ତାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ନାହିଁ? ନା 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 से कथा के कहला integrity not always necessary ki integrity nahi many people who don't have integrity can have dissonance but that does not mean ki jaha bhitere cognitive dissonance hochi ta bhitere integrity nahi normal जिनसर भी cognitive dissonance ହେଇ ପାରେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ example ଦଉଛି suppose ଭାବ ଗୋଟେ housewife ଟେ ଅଛି suppose ତାର husband ହଉଛି ବହୁତ abusive okay he is torturing the wife तो the wife wants to tell about this to her parents but ହେଇପାରେ ତାକୁ ଆଗରୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ value ଶିଖାଇଛି ତାଙ୍କ ଘରେ कि ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତୁମକୁ adjust କରିବାର ଅଛି ତତେ तो husband ସାଙ୍ଗରେ because you are going to spend your life with him so now this lady will also have huge cognitive dissonance at one because at one point she understands on one hand कि her husband is abusive and ଯଦି ସେ abuse ଟାକୁ report କରନ୍ତା ତାହେଲେ maybe ସେ abuse ଟା stop ହେଇଯାନ୍ତା but on the other hand she understands कि तार जो cultural value ताको दिया है जबरदस्ती कि नहीं ଯାହା ହେଲେ ବି ତ ତମକୁ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ସହିବାକୁ ପଡିବ and for that she knows कि she is suffering and this will also create dissonance discomfort in her mind कि ताको ଗୋଟେ solution जଣା ଅଛି but ସେ solution ଟା ଖରାପ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି so does she not have integrity she is a very right ମାନେ upright kind of person ବି ହେଇପାରେ ethically correct ହେଇପାରେ ସବୁ ଜିନିଷ because of maybe some faulty understanding there is a cognitive dissonance in this case for example I will say कि ए कल्चरल वैल्यू टा ही गोटे खराब वैल्यू ताको दिया जाय एटा गोटे इनकरेक्ट वैल्यू ताको दिया जाय रादर एई भलिया वैल्यू पई डोमेस्टिक अब्यूजेस हम सोसाइटी रे बहुत अछि द वैल्यू शी शुड हैव बीन टॉट कि जते जा हले फिजिकल अब्यूज इज नॉट एक्सेप्टेड so then she would have if she had been given this kind of value then she would have reported this case and maybe some solution would have come but my point is are you able to understand it integrity sangre किछि लेना देना नहीं ଏବେ इंटीग्रिटी वाला भी केस हमें फ्रेम कर परिया फॉर एग्जांपल सपोज तुम गोटे करप्ट पर्सन ओके सो तुमको पैसा तुम नहीं बट ऑन दी अदर हैंड यू आर आल्सो वेरी मान तुम भयालु टाइप लोक भी मान तुमको बहुत डर लगुच कि यार मोर मोर चाकरी चलती सो देयर आल्सो देयर विल बी ए कॉग्निटिव डिसोनेंस ओके तुम जानिछ व्हाट इज द राइट थिंग टू डू बट यू आल्सो नो दैट यू हैव डन द रॉन्ग थिंग and there is a conflict between these two things so there will be anxiety in your mind discomfort or anxiety इंटीग्रिटी सागरे कॉग्निटिव डिसोनेंस रो डायरेक्ट सेमति किछ लिंक नाही इंटीग्रिटी थिबा लोकंक भितर भी कॉग्निटिव डिसोनेंस हुए इंटीग्रिटी न थिबा लोकंक भितर भी सो नॉट नेसेसरी कि ओनली इंटीग्रिटी न थिबा लोकंक भितर हो समस्त भितर हुए तुम भितर हुए मो भितर हुए समस्त भितर ओनली थिंग आमे जानि नु हम तार टेक्निकल टर्म ता कोन जानि आई गो इन द नोट रे तुम डिटेल एटा पढियो मु तो समराइज करी कहूची कि माने कोन गोटे एटीट्यूड चेंज तो ये सब जिनस थ्रो अच्छा ये जिनसर एंटायर पॉइंट कोन आमे कॉग्निटिव डिसोनेंस ये जिनस देखिलु यार एंटायर पॉइंट होची कि आमे जते सारा देखो जो मेथड्स ऑफ रिजॉल्विंग डिसोनेंस जते गोटे लोक पाखरे कॉग्निटिव डिसोनेंस हे गला से जेमिति हेले ताको रिड्यूस करैको ट्राई करे इधर थ्रू ट्रिविलाइजेशन और थ्रू जस्टिफिकेशन और थ्रू बिहेवियरल चेंज बट वन ऑफ द वेज ऑफ reducing the dissonance is also changing the attitude and एटा को हमें टारगेट करिया आमे कोन करिया कि जेमिति हेले से लोक भितर प्रथमे कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट करिया देन हमें तार एटीट्यूड चेंज करिया सो दिस इज द टेक्निक व्हिच वाज गिवन बाय फेस्टिंगर एंड कार्ल स्मिथ से माने गोटे एक्सपेरिमेंट कले से माने कहले कि देखो हमें केमिति लोकन भितर कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट करी केमिति हमें एटीट्यूड चेंज करि परिया तो से माने कोन कले दुईटा ग्रुप पिलां को नेले ओके ग्रुप 1 ग्रुप 2 बाहर आ गोटे ग्रुप 3 पिला छिड़ा एमान को गोटे रूम को डाकी गोटे बहुत ही बोरिंग काम करिया देले वेरी बोरिंग टास्क ओके बोरिंग काम कर सारा पर एमाने तो एमान बोर लागुची ताको एमान बाहर को गला तांको गोटे ग्रुप को साने $1 ईच देले गोटे ग्रुप को $20 देले माने $1 को कोन बहुत ही कम टंका दिया $20 को अधिक टंका दिया तापर तांको कहा गला कि तुम एई पैसा नै कि तुमको एई पैसा दिया हला पेमेंट कोन पई पेमेंट तुम एई बाहर जो ग्रुप 3 पिला छिड़ा हिचंती
तांकु जाइके तुम कह कि टास्क टा बहुत ही इंटरेस्टिंग थिला तमे तांकु गोटे मिछ कहया पे तांकु गोटे पैसाटा तुमको ब्राइबरी दिया जाइए तुम जाइके कह नाउ द पॉइंट वाज नॉट दिस एक्सपेरिमेंट द पॉइंट वाज दिस ସେମାନେ ଆଗରୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ଏଇ ଗ୍ରୁପ 1 ଆଉ ଗ୍ରୁପ 2 ର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ କୁ ଆସେସ କରିଥିଲେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦିस बोरिंग टास्क तो सब दीटा को ग्रुप कहले कि यार एटा तो बहुत ही बोरिंग सो दिस इज आल्सो एक्सपेक्टेड एंड आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट आफ्टर सम टाइम दे अगेन दे मेजर्ड or assessed कि what is the attitude now and surprisingly one group had changed their attitude towards the task and another group had not changed their attitude now can you tell me which group do you think would have changed their attitude group 3 ର କଥା ହିଁ କିଛି ଉଠେ ପଡୁନି group 1 ଆଉ group 2 କଥା ଚାଲିଛି group 1 କୁ $1 ଦିଆଗଲା ମିଛ କହିବା ପାଇଁ group 2 କୁ $20 ଦିଆଗଲା ମିଛ କହିବା ପାଇଁ and ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରାଗଲା କୋଉ ଗ୍ରୁପ ର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି can you guess କି କୋଉ ଗ୍ରୁପ ର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ ସେ ବୋରିଂ ଟାସ୍କ ପ୍ରତି ସାର୍ $1 ବାଲାର କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ତାର କମ କଗ୍ନିଟିଭ ଡିଜୋନାନ୍ସ ହେଇଥିବ। ତୁମେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଯାଉଛ ଆଉ ଆନ୍ସର ତୁମେ ମାନେ I'm really happy by the way. You are very able to quickly grasp the things. Okay. So are you able to understand ସେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦେଖ $1 ଦେଇକି ତମେ ମିଛ କହିଲ ତ ତୁମ ଭିତରେ ହ୍ୟୁଜ କଗ୍ନିଟିଭ ଡିସୋନାନ୍ସ ତମେ ସହ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡଲାର ନେଇକି ମିଛ କହିଦେଲି ଯିଏ $20 ନେଇଛି ସେ ତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ସେ ତ କହିଲା ଚାଲ ମିଛ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି because ମତେ ପଇସା ମିଳିଲା ଠିକ ଅଛି ଇଟ ଇଜ ଏଜ ଇଫ କି ଯୋଉ ଯୋଉ କଣ କୁହନ୍ତି ଜାତି ଗଲା ହେଲେ ପେଟ ପୁରିଲା ନାହିଁ ତମର ଜାତି ଚାଲିଗଲା ତମ ପେଟ ପୁରିଲା ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ୱାନ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ସରି $1 ବାଲା ଗ୍ରୁପ ଏଇ $1 ବାଲା ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ କଗ୍ନିଟିଭ ଡିସୋନାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହେଲା କି ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ଡଲାର ପାଇଁ ମିଛ କଥା କହିଦେଲି so then they were later on forced to change their attitude ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇଲେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ପାଇଁ ମାନେ ମିଛ କହିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସତରେ ମତେ ଟାସ୍କ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ସବୁ ଗ୍ରୁପ ର ପିଲାମାନେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କରାଗଲା ସେମାନେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତମେ କୁହ ସେ ଟାସ୍କ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋରିଂ ଥିଲା ନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ତ ପ୍ରଥମେ ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିଲା ବଟ୍ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆମକୁ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା ତ ତାର ରିଜନ ବି ରିସର୍ଚର ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ସେ ପିଲାମାନେ ଭାବିଲେ କି ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ଡଲାର ପାଇଁ କେବେ ମିଛ କହିଥିବୁ ସୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି ମିଛ କହିଥିବୁ so therefore their attitude was finally changed but I would not have lied for only $1 so the task must have been interesting so this thing is known as less need leads to more effect कि हमें less reward देले rather there will be more attitude change and this is a counter intuitive idea एटा normally केही जिंस जानि परिबे नाही आमे भाबे कि आमे लोक तो बेसी रिवार्ड कले तार attitude change ହେଇଯିବ बट कथा होची जतल तुम लोक बेसी रिवार्ड करियो ताको लागि कि सेटा होची तार से काम पई पेमेंट ओके they will not take it as something that needs to change their heart so here you can see for example and এটা বহুত real life रे बहुत जिंस ହେଇଛି give it up campaign କଥା ଭାବ ଯେତେବେଳେ LPG ସବସିଡି ଛାଡିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଗଲା ବାଇ ଦ ୱେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ give it up campaign ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ କି ଓନଲି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ସେମାନେ କାଲକୁଲେଟ କରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରୋଲ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସେଠି ବି ଅଛନ୍ତି ହୁ ଆର ୱାର୍କିଂ କି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଉ ୱେରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ ଦେ ୱିଲ୍ ମୋର ଆକ୍ସେପ୍ଟ राइट सो गिव इट अप कैंपेन इन जनरल इफ यू डोंट नो एलपीजी सिलिंडर रे आगु प्राय समस्त सब्सिडी मिलुतला तो बहुत लोग जो अनडिजर्विंग लोग भी समाने करि नैथिले निज निज नारे सब्सिडाइज एलपीजी गवर्नमेंट कहले कि जो माने अनडिजर्विंग अछ तुम माने वॉलंटरली ता छाडी दे काहे की छाडी दियो बिकॉज़ फॉर द कंट्री दिस इज द ऑप्शन 2 फॉर द कंट्री तुम एटा गिव अप कर दियो सो यू आर मेकिंग ए ह्यूज सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री ऑप्शन 1 तांक पाखरे कोन थिला सेमाने कहतांती कि बाबू तुम छाड़ी दियो बिकॉज तुम छाड़िले गवर्नमेंट तुमको अन्य आउ किसी मॉनिटरी अवार्ड दियो दबो तो एटा कहिथिले रादर ए जिंसटा इफेक्टिव हे नथा एंड एक्चुअली इफ यू सी गिव इट अप कैंपेन इज अ सक्सेसफुल कैंपेन बहुत लोक माने क्रोर्स ऑफ पीपल एक्चुअली स्टॉप्ड अवेलिंग सब्सिडी एंड ता द्वारा हमर कोन फालतू रे जो खर्च होतला एटा बंची गला बट आमे जदी तांको मॉनिटरी टर्म में कहितां सेमान ताकू लाइटली नै थांदे एंड माने सेटा एटीट्यूड टा चेंज हे नथा इवन इफ योर बिहेवियर शॉर्ट टर्म पे चेंज हेता ना एटीट्यूड टा चेंज हे सो आमे ताको लेस रिवार्ड देलु but that led to more effect. This is known as less leads to more effect. I have given you one of my examples. For some time ମୁଁ ଯେତେବେଳେ millet ବିଷୟରେ ବହୁତ research କରୁଥିଲି I participated in one quiz ତ ସେ quiz ରେ starting ରେ ଲେଖାଥିଲି you will get a reward ମୁଁ କହିଲି କଣ reward ଚାଲ ଦେଖିବା ଖେଳିବା so I started doing this then finally found out କି reward ଥିଲା finally ଗୋଟେ certificate ଗୋଟେ ଏମିତି image ଟା download ହେଇଗଲା user name ଯାହା ଥିଲା ସେଥିରେ download ହେଇଗଲା you have successfully participated in this Sri Anna quiz. This happened with me personally. I'm telling.
देन आफ्टर सम टाइम ମୁଁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲି ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ମିଲେଟ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ନିଜେ ଭାବିଲି କି ହଁ ମିଲେଟ ଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଇ ଥିଙ୍କ वी शुड ट्राई एंड इट इज आल्सो फैक्चुअली आल्सो करेक्ट बट लेटर ऑन आल्सो अगेन आई रियलाइज कि व्हाई इज दिस एटीट्यूड ऑफ माइंड चेंज बिकॉज ମୁଁ जो एते टाइम वेस्ट करिकी और चलो टाइम इन्वेस्ट करिकी गोटे क्विज खेली लास्ट में मते बहुत ही कम रिवार्ड मिलला तो परे मु निजे को कन्विंस कर देली कि नहीं मते मे बी एक्चुअली आई वांटेड टू I actually like millets. I must have really loved millets. I'm deleting this from the PDF. It's a bit embarrassing, but now you will be able to understand what is the meaning of attitude change. This part will be there if you want to remember this part. Now come to this part. There are other techniques of attitude change also. Other techniques on achi. You can provide people with information or evidence. These are all direct techniques. Okay. By the way, these are all direct techniques. ଆମେ directly ଲୋକଙ୍କର attitude change ଉପରେ କାମ କରୁଛେ for example by giving them information or evidence ଯେମିତି କି HIV ଉପରେ ଆଗରୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଟାବୁ ଥିଲା because ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଟଚ୍ ଥ୍ରୋରେ ବି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରେ so ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଲୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ attitude ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ତ ଇନିସିଆଲି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ମିସକନସେପସନ ଥିଲା କି HIV ଟା ଟଚ୍ ଥ୍ରୋରେ ବି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହଉଛି ତ ତାଙ୍କର attitude towards HIV infected people was also very negative ହେଲା तो सेटा को हम चेंज केमते कलु तांको हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन देलु कि एचआईवी इज नॉट कंटेजियस सो देन देयर एटीट्यूड स्लोली चेंज सिमिलरली थिंक ऑफ कोविड-19 जो वैक्सीनेशन मास्क पीपीई किट यूज करिया सोशल डिस्टेंसिंग ए सब जिंस इन्फॉर्मेशन और एविडेंस थ्रू रे तांको हम लोगन कन्विंस कलु ना कि यदि हमें मास्क पिंदिबु यदि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करिवु ताले हमर चांस माने कोविड हवार चांसेस लेस होला सिमिलरली मास अवेयरनेस कैंपेन्स दीज आर ऑल डायरेक्ट टेक्निक्स कि हमें लोगों का एटीट्यूड करिया एटीट्यूड चेंज करिया ताको इन्फॉर्मेशन और एविडेंस दे सिमिलरली देयर इज अनदर टेक्निक कॉल्ड कंडीशनिंग कंडीशनिंग कौन कंडीशनिंग माने होची रिपीटेड पेयरिंग ऑफ टू स्टिमुली वेरी सिंपली यार सिंपल माने होची दुईटा जिंस को सांगरे पेयर करिया बहुत दिन पर्यंत रिपीटेडली जति ताले हमें कोन गोटे ता भितरु जिंस आसले हमको अन्य जिंस कथाटा मने पड़ी फॉर एग्जांपल जो मझे देखते हो जतले कोविड टाइम रे तुम जहाँ को भी फोन करियो से 5 मिनट प्रथम मुंडा खराब करतला अमिताभ बच्चन वाज टेलिंग अस कि कोविड 2 गज दूरी बहुत है जरूरी समथिंग लाइक दैट मने अछि कि नहीं बाय गॉड गोटे 2 मिनिट पूरा कंटिन्यूअसली चलतला से मेसेज कार मने अछि कि नहीं ହଁ एनीवन ସାର୍ Yes, sir. Yes, sir. ଆସିବେ एटा बहुत चिड़ लागु नथला तो का फोन करे तो जहाँ को भी फोन करियो गोटे 2 मिनिट कंटिन्यूअसली आगो अमिताभ बच्चन तुमको ज्ञान देवे कि बाबू तुम कोविड कोविड रे एमते डिस्टेंस मेंटेन कर बट व्हाट वाज द पॉइंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट वाज द कंडीशनिंग तो जतले तुम आमे तो दिन रे बहुत थर कॉल करू तो सब थर जतले पेयरिंग होची कॉल सा माने किछ गोटे कॉल संगरे तुमरो ए इन्फॉर्मेशन और मेसेज ता सेते मेसेज ता स्लोली इंटरनलाइज हे जी आ जतले तुम कॉल करियो तुम ए मेसेज कथा ना मने पड़ियो this is due to very simple repeated pairing एटा हमर this is by the way this is what is known as classical conditioning this was an experiment done by Ivan Pavlov सब बेसी थियोरेटिकली हम जीवा दरकार नहीं मे भी किसी लोग तुम भीतर किसी जानी थियो तार स्टोरीटा हे जो कुकुर जो सलाइवेट करतला ताको मीट आउ बेल बजा होतला जतबे so that is also a very interesting story classical conditioning research करी देखियो टिक गूगल करी if you don't know this is the same principle okay? रिपीटेड कंडीशनिंग तो या थ्रू रे कोन हम लोगन को एटीट्यूड चेंज कर दवा तो बार बार जदी जणो तुम कहे कि नहीं तो मास्क पिंदो ये करो डेली दिन राती तुम अमिताभ बच्चन एडवाइस दो फाइनली तुम मतलब घर बाहर तुम कहो तो ठीक अच्छे तुम घर नहीं कहो मत दे दियो मास्क पिंधि जाऊँ सो दिस इज द चेंज इन एटीट्यूड वन ऑफ द सब टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग इज व्हाट इज नोन एज mere exposure effect Jazong Robert Jazong बोली there was one psychologist he discovered this thing mere exposure ki only seeing something many a times by only seeing something many a times we develop a likeness to that object ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ ବାର ବାର ଦେଖିବ ତା ଆଡକୁ ଲାଇକନେସ୍ ଆସିଯିବ now when I give you an example you will be better able to understand now ଦେଖ ଏଇ advertisement ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ସାରା advertisement ଦେଖିଥିବ ଠିକ ଅଛି ସ୍ଲାଇସ ର advertisement ହଉଛି କାଟ୍ରିନା कैफ ତ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଟାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି now you tell me what is the point of sliced mango sangre Katrina Kaif? I don't think maybe it is possible she never had a mango before in her life before doing this advertisement. But how is this affecting us? The point is कि advertisers माने जानी चाहती कि लोक माने कटरीना कैफ को लाइक करन
तांकर दरकार अछि स्लाइस तांकर ड्रिंक को बिक्री करिया तो से बार बार जो रिपीटेड पेयरिंग करिवे विथ द एक्ट्रेस प्लस देयर प्रोडक्ट सो लाइकनेस प्रथमे या पई जोडा अछि दैट विल गेट ट्रांसफर टू लाइकनेस फॉर दिस प्रोडक्ट एंड दिस विल कम थ्रू रिपीटेड एक्सपोजर मेनी मेनी टाइम्स एक्सपोजर माने बार बार तुम टीवी रे देखियो एक्सपोजर आसी ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଇଫ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ ଦିସ୍ ଏବେ ଭାବ ସେ ଆଇପିଏଲ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ଆନୋଇଂ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏନି ନା ପେପେ ପେପେ ପେ ମଝିରେ ବାଜେ ଇନିସିଆଲି ମତେ ସେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ବଟ୍ ମୁଁ କିଛି କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲା ପରେ ମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ସରି ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଜିଲା started to enjoy that have you realized this or not there are many songs also initially तुमको जमा ଭଲ ଲାଗିବନି ଏତେ ଥର तुमको ସେ सोसाइटी ରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ कि फाइनली ତମେ ବି ଖୋଜି सर्च କରି ସେ ଗୀତ डाउनलोड କରି ଶୁଣିବ what is this effect this is also conditioning ପାଇଁ ହେଲା and mere exposure effect बार बार से ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା और experience କରିବା ଦ୍ୱାରା and one another example of this is a, a phenomenon known as girl next door effect गर्ल नेक्स्ट डोर इफेक्ट माने गर्ल नेक्स्ट डोर जेमती बॉय नेक्स्ट डोर इफेक्ट भी अच्छी तार अपोजिट तमाने गोटे झील को तुम घर साइड झील को जहाँ तुम बार बार देखुव इट इज वेरी लाइकली दैट यू विल गेट अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन दैट गर्ल साइकोलॉजिकली प्रूव्ड दैट इज एविडेंस प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल बार बार जन को देखिए लाइकनेस आसो डेवलप करिवे सो दिस इज आल्सो एन मान तुम गोटे सबक भी तुम सिलेक्शन हला परे तुम जदी जाई सेठी काहा को पसंद कला एकेडमी रे so you should ask yourself whether it is due to true love or whether this is due to mere exposure effect तो रॉबर्ट जैजन कथा यदि मन पड़ो ताले तुम जानिबो कि नहीं एटा तो mere exposure effect so maybe let us take it slowly similarly rewards and punishments carrot and stick method very simple thing reward and punishment दे कि तुम्हें आमे तांकर एटीट्यूड भी चेंज कर परिया ओके आई हैव गिवन एन एग्जांपल एंड सेथरे भी मन रखियो कि लेस लीड्स टू मोर इफेक्ट कि रिवार्ड और पनिशमेंट रे भी स्पेसिफिकली माने रिवार्ड कथा को पनिशमेंट कथा रिवार्ड रे जतला हमें लेस रिवार्ड दवा सेटा मोर इफेक्ट प्रोड्यूस करे सो फॉर एग्जांपल टैक्स इवेजन कथा भाव सो टैक्स इवेजन को हमें केमिति करे सो इनिशियली मे बी जनकर एटीट्यूड थियो टुवर्ड्स टैक्स कि मु तो भाई टैक्स भरी भी नहीं तो ताको हमें कैरट भी दवा और स्टिक भी दवा कैरट कौन ताको है कि बाबू तुम वॉलंटरली डिक्लेयर कर दो यदि लो रेट ऑफ फाइन तुमको अलाउ कराओ इनफैक्ट आई थिंक गोटे सेमती टैक्स एमनेस्टी स्कीम आसला जो गवर्नमेंट कहला कि तुम्हें एतिकी टाइम भितर यदि पेमेंट किसी करन टैक्स टैक्स इवेड कर गोटे सर्टेन डेडलाइन भितर दब ताहले ओनली 40% ऑफ योर डिक्लेयर्ड इनकम विल बी टैक्स जदि न दब ताहले तुम एंटायर 100% प्लस जेल एटा मिले सो दिस इज द स्टिक आईटी रेड हबो लिटिगेशन केस हबो तुमको हमें जेल पठे दो सो बोथ कैरट एंड स्टिक जतले दिया हबो सेतबेले attitude will also change now in this case how will the attitude change initially the attitude will be I don't want to pay taxes later on that देखो later on attitude होबन कि now I love to pay taxes attitude होइटा हो कि I have to pay tax even if I don't want to okay. this is also a type of attitude कि मते जहा हेले भी पे करियो पड़ियो सो फॉर दिस काइंड ऑफ देखो एमिति के होबन कि जे टैक्स पे करनो तो से खुशी खुशी रे तापर दबो बट ताको हम तारो एटीट्यूड हमें एटलीस्ट ए वे रे चेंज करिया कि he or she understands कि जदि एबे से दबो नहीं टैक्स then he or she will be the sufferer right now come to this part social learning कौन now this is a theory given by बंदूरा अल्बर्ट बंदूरा से कहले कि आमे बहुत बेले बिहेवियर एज वेल एज एटीट्यूड कोड लर्न करू बाय ऑब्जर्विंग अदर्स अन्य को ऑब्जर्व करके लर्न करू so that is why it is called social learning माने socially it is learned आमे सोसाइटी को देखि कि सेटू सिखु so आमे कौन लर्न करू ना to seeing others behave similarly and get either punished or rewarded माने सपोज आमे अन्य काहा को देखिलु कि से माने सर्टेन वे रे बिहेव करछंती and suppose by behaving in that way they are getting either rewarded or getting punished accordingly our behavior or attitude change hejibo and this is also known as vicarious reinforcement don't need to remember these terms but you need to understand the concept कौन सपोज तुम देखिल कि गोटे एमती टर्म अच्छी कि बेरी माड़े कोलथ चपा राइट तो जो बेरी ऊपर माड़ हम कोलथ ताको देखिए चोपा हो इन द सेंस कि कोलथ ऊपर माड़ भी है बट ही इज गेटिंग स्केर्ड कि या ऊपर जो माड़ हो मो ऊपर भी सेटा हो जाई परियो सो नाउ देयर एटीट्यूड एंड बिहेवियर विल चेंज एटीट्यूड संग संग चेंज हो कि से शांत हो से पूरा ओबीडिएंट हो राइट बिहेवियर भी देन अकॉर्डिंगली चेंज कि
the person will become ମାନେ very obedient, right? behavior भी obedient ହେଇଯିବ। so this is also an example of modeling जोଥିरे जणको punishment दियाउतला एटा देखि तार अन्य जनकर attitude and behavior change ହେଇगला। similarly जण दे rewarded होची ताको देखि भी attitude change हो। तुमे देखछो कि आजिकली हम सोसाइटी रे actors actresses एमाने को बहुत reward मिलुची माने they are getting money fame everything, so in that way they can also inspire some people कि आमे भी तांको भली। on the other hand someone else would also see कि IS grand entry video देखि से भी inspired हो। you are seeing someone else getting rewarded and through that you are learning behavior and attitude, this is social learning। माने social learning को माने एटा को कहन एगुड़ा सब phases रे हुए attention retention motor production motivation, no need to go into detail। I'll tell you a very interesting experiment कि केमिति एंती आमे केमिति behavior and attitude को acquire करू। this is a very well known experiment known as Albert Bandura's bobo doll experiment। बोबो डॉल होची से एई वाला डॉल गोटे देखि दियो जार तळे एठी गोटे वेट थाए एटा को तमे जते पुश कर देले से पुनी बैक आसे एमति 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 हेकी बैक आसे देखछो कि नै एई वाला डॉल एठी जो अछि दिस इज द बोबो डॉल, राइट? ताको तमे ठेली देले से पुनी आउथरे छिडा हे जो। सो एई एक्सपेरिमेंट रे कोन करा हला बंदुरा कहली कि चलो देखिया कि आमे छोटो पिला माने वायलेंस को अन्य को देखि के वायलेंस सिखुचंती कि नै। सो प्रथम से कोन गले गोटे ग्रुप एमति किछ चिल्ड्रन को नेले सेमान को गोटे टीवी रे देखा हला गोटे प्रोग्राम देखा हला। से प्रोग्राम रे कोन हला किछि लोक आसी कि ए बोबो डॉल को हम बाडौतले, ओके बाडौतले एंड तापरे माने खुशी खुशी रे पळौतले किछि तांको किछि इंपैक्ट तावर पड़नथला। तो दे वर लिविंग हैप्पीली। तो ए लोक माने जो बोबो डॉल को बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे रे बाडेले। फॉर एग्जांपल जणा होची हैमर रे ताको बाडेला, जणा ताको किक मारला, जणा ताको मुक्का मारला। तो एटा सब माने देखले छोटो पिला माने तापरे कोन हला सेई छोटो पिला जो रूम रे थिले तांको रूम रे गोटे बोबो डॉल रखा हला। देन ए रिसर्चर माने बाहर जाई कि कैमरा थ्रू देखली पिला न कोन करछन एंड यू कैन सी कि दे वर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। से माने भी एग्जैक्टली से सेम काम कले जोटा टीवी रे देखिथिले। सो बंदुरा कहले कि छोटो पिला माने भी एग्रेसिव बिहेवियर को भी लर्न करंती ऑब्जर्वेशन थ्रू रे, ओके। हियर आल्सो वी आर कॉलिंग देम एज मॉडल। एथिरे हमें पॉजिटिव नेगेटिव वे रे यूज करनु मॉडल इन द सेंस कि एमिति गोटे लोक और ऑब्जेक्ट और इवेंट जहा देखि कि हमें किसी गोटे जिंस सिखुछु, ओके। सो इंपैक्ट ऑफ मॉडल्स, मॉडल माने हमको बहुत इंपैक्ट करन, राइट? एंड इफ यू कैन सी कि यार एप्लीकेशन कोन ए सब जिंस रे देखो केते साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल अप्लाई कराई छै। स्वच्छ भारत मिशन ने गवर्नमेंट पुट इन द इमेजेस ऑफ गांधी जी इनिशियली बिकॉज़ लोक माने गांधी को एसोसिएट करंती विथ गुडनेस, राइट? सो फॉर देम इनिशियली गांधी वाज द मॉडल। लेटर ऑन द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ with other ministers he also started cleaning the streets। the point is कि से पब्लिक से निजो को गोटा मॉडल बोली शो कला। the point was again through social learning it is or sometimes also known as observational learning। through observational learning or social learning we are able to change our attitude। so we expect कि by seeing the prime minister or other political leaders even actor actresses seman को आना वाला different celebrity मान को आना वाला sports person मान को आना वाला। पॉइंट है कि लोक माने तांको देखि इंस्पायर्ड होंतु तांको माने सेमाने देखंतु कि यदि इफ दे कैन बिकम आवर मॉडल सो वी शुड आल्सो कीप द स्ट्रीट्स क्लीन, राइट? क्लीनलीनेस बिहेवियर और एटीट्यूड को चेंज करिया। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर क्लास सोशल इन्फ्लुएंस। आफ्टर दैट इट विल बी ओवर। सो सोशल इन्फ्लुएंस होची चेंजिंग एटीट्यूड्स एन मास। एन मास माने कोन? एन मास होची मास बेसिस रे माने एका संगरे इन ग्रुप आमे लोकंकर एटीट्यूड चेंज करे तो सेटा को आजे सोशल इन्फ्लुएंस। तो सोशल इन्फ्लुएंस यार ऑफिशियल डेफिनेशन देखि दो तो केमिति हमें मास रे चेंज कर परिया। फॉर एग्जांपल वन टेक्निक इज थ्रू ओबीडियंस। ओबीडियंस होची कि छोटा अथॉरिटी फिगर रो कथा रे तमे चेंज करबा एटीट्यूड। से अथॉरिटी फिगर किए हे पारे? पेरेंट्स हे पारंती, टीचर्स हे पारंती, पॉलिटिकल लीडर्स हे पारंती, गवर्नमेंट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट अथॉरिटी। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज बाहर कले वी आर बाउंड टू ओबे इट। This is also an example of social influence। For example, COVID-induced lockdown. This is also an example, right? There is one technique called conformity। Conformity माने होची social norms और group norms को conform करिया माने ताको ही follow करिया। आमे यदि गोटे सोसाइटी रो मेंबर और गोटे ग्रुप और कम्युनिटी रो मेंबर then there is a kind of peer pressure on us कि हमको भी सेही भलिया काम करिया पड़े। एटा किछि अथॉरिटी फिगर ऑब्वियस अथॉरिटी फिगर किछि नथिले भी गोटे इनडायरेक्ट पीयर प्रेशर थ्रू रे वी आर
हमको कन्फर्म करिया को पड़े फॉर एग्जांपल इन सेटा पॉजिटिव भी हे पारे नेगेटिव भी हे पारे फॉर एग्जांपल सपोज रेस्पेक्ट टू एल्डर्स इफ यू आर पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी इंडियन कल्चर देन समस्त रेस्पेक्ट टू एल्डर माने एल्डर्स को रेस्पेक्ट करते तुम देखि दियो सेटा तो यू आर आल्सो इनडायरेक्टली प्रेशराइज्ड कि तुमको भी रेस्पेक्ट दबार अछि राइट सेमती फॉलोइंग रिलीजियस राइट्स एंड रिचुअल्स दिस इज आल्सो गोटे पेयर प्रेशर तुम मना करि परिबे का सेमती नेगेटिव नॉर्म्स क्रिएट ही स्पिटिंग थुकिबा हम सोसाइटी रे दिस इज कल्चरली एक्सेप्टेड इन मेनी एरियाज बिकॉज़ हम पान बहुत जगह रे दिस इज वाइडली अवेलेबल सो नेगेटिव नॉर्म्स भी किछ जेंडर बायस और इन जनरल जो पैट्रियार्कल एटीट्यूड है ना पैट्रियार्कल एटीट्यूड रो नॉर्म भी हमरो इजीली it makes us conform to that kind of actions. Now the final kind of method is what is known as appeal to emotions. Emotion को appeal करके भी हमें लोगों को attitude change कर पारे राइट ताको इमोशनल ब्लैकमेल कराबो देखो ए चाइल्ड डाइज एवरी 15 सेकंड्स फ्रॉम वाटर रिलेटेड डिजीज देयरफॉर हेल्प देम एंड डोनेट वाटर एड को पैसा दियो कीटोर बहुत तरह ऐड देखो बार बार आस्तो सब सोशल मीडिया रे ए लोक मरि जाउची से लोक मरि जाउची तुमे 5 टंका तांको एटलिस्ट दान करो दीज आर ऑल अपील टू इमोशंस नाउ एथरे किछि एडिशनल इंफॉर्मेशन अछि ठीक अछि इफ नीडेड यू गो थ्रू इट and this prejudice part this is for your own understanding go through it many of these we have already discussed ame alport scale भी discuss करथिलु जो एमतिया पांचटा लेवल ले how prejudice develops prejudice होची नेगेटिव इराशनल इंटरग्रुप एटीट्यूड ओके जेमति इंडिविजुअल आडो को हमर नेगेटिव एटीट्यूड अछि सेमतिया गोटे ग्रुप आडो को जो नेगेटिव एटीट्यूड थाए ताकू कहते प्रेजुडिस फॉर एग्जांपल योर प्रेजुडिस टुवर्ड्स सर्टेन कम्युनिटी मेंबर्स योर प्रेजुडिस टुवर्ड्स साउथ इंडियंस नॉर्थ इंडियंस so गोटे ग्रुप पई जो प्रेजुडिस थाए वेस्टर्नर्स मानकर प्रेजुडिस टुवर्ड्स इंडियंस दैट कैन आल्सो बी माने नेगेटिव एटीट्यूड टा को प्रेजुडिस ठीक है तमरो प्रेजुडिस टुवर्ड्स वुमेन और मेन माने गोटे एंटायर ग्रुप प्रति जो नेगेटिव एटीट्यूड अछि नाउ ऑल ऑफ दीस थिंग्स you can go through if doubt hela pachariyo if you want I can continue 10-15 minutes I can continue otherwise we'll stop mate kiche problem nahi you tell me whether we should continue or not kiche pila continue kale I'll continue Sir, please continue. okay ठीक ଅଛି let's take 10 more minutes and finish this so what is the meaning of prejudice then this is the negative irrational intergroup attitude that you are having hostility or negative aggressive reaction towards an individual based on his or her membership of a particular group माने आमे इंडिविजुअल आडो को एग्रेशन आसुची बिकॉज द इंडिविजुअल इज पार्ट ऑफ सर्टेन अदर ग्रुप ओके आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माने ता माने होची कि सपोज तुम कहयो कि ए सर्टेन कम्युनिटी मेंबर सपोज तुमरो बहुत राग अछि हिंदू मानक प्रति तो तुमे गोटा लोक जेतला आसिला तुम पाखु तुम पचारलो तुम कि दैट पर्सन सपोज सेड हिज नेम एंड यू रियलाइज कि दैट पर्सन इज हिंदू नाउ इवन बिफोर नोइंग दैट पर्सन हे पारे से लोकटा पर्सनली बहुत भलो लोक हे पारे और इन जनरल आल्सो तुमे ता प्रति काहे कि नेगेटिव एटीट्यूड रखियो but just because you learned कि that person is Hindu then for some reason maybe due to past experience or something then तुम मन रे जदी से नेगेटिव एटीट्यूड ता संग संग डेवलप हेगला तापर तुम कहे बाबू तो तुम संग कथा ही हेबिन तुम जाओ that kind of attitude is known as prejudice कि तुम से लोकटा विषय रे तार पर्सनल विषय रे पर्सनालिटी विषय न जानि कि भी ताको गोटे ग्रुप मेंबरशिप बेसिस रे ताको तुम जज कर दो कि ये यदि ए ग्रुप रे मेंबर ताल तो ये तो एमिति आहिति ये तो भलो ही नथियो so this is known as prejudice right and just like every other psychological phenomenon it is also it has three components affective behavioral cognitive एटा हमें बार बार पढ़ू A B C prejudice रो भी सेमती affective behavioral cognitive अछि if possible you think about it कि suppose गोटे anti community गोटे prejudice जनकर अछि तार affective component कोन ही करे behavioral component कोन ही करे cognitive component कोन ही करे example देले हमें डिटेल attitude रे हमें डिस्कस करछे example देले you'll understand अल्पोर्ट स्केल ऑफ प्रेजुडिस हम डिस्कस करथि प्रेजुडिस केमति धीरे धीरे इंक्रीज करे सोसाइटी क्लास रे हम डिस्कस करथि कि प्रथमे व्हाट से ग्रुप प्रति एंटी लोकेशन माने वर्बल अटैक कराबो तांको ऊपर जोक कराबो तांको गाली दियाबो इंसल्ट कराबो तापरे सपोज धीरे धीरे जिनसटा पुनी एस्केलेट कला प्रेजुडिस ता तापरे आउ केमति इंटेंसिफाई हो तापरे तुम तांको अवॉइड करियो ट्राई करियो तांको संग किछि कथा हबन तांको कि मु त ए कम्युनिटी लोकन संग कथा ही होन तांको
ମାନେ you will become separate group. Then you will come to discrimination ମାନେ ତୁମେ services opportunity ଏସବୁ ଜିନିଷରେ discriminate କରିବ। ମାନେ ସପୋଜ କହିବ କି ଏବେ ଆମ ଗ୍ରୁପ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସର୍ଭିସ ଟା ଫ୍ରି, ତମ ଗ୍ରୁପ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ନୁହଁ। ଅର୍ ଏଲ୍ସ ତୁମେ କହିବ କି ଏଇ ଜବ୍ ଟା କେବଳ ଆମ ଗ୍ରୁପ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ତୁମ ଗ୍ରୁପ ତମ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ଏଟା ନୁହଁ। ଦେନ୍ ଦେयर ଇଜ ଫିଜିକାଲ ଆଟାକ୍। ଫିଜିକାଲ ଆଟାକ୍ କଣ? ତାପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। एंड फाइनली देयर इज एक्सटर्मिनेशन माने पूरा जेनोसाइड। ताकर पूरा एंटायर कम्युनिटी को मारिया को और मासाकर एंटायर कम्युनिटी को मारिया को ट्राई करियो। सो आई हैड गिवन यू एन एग्जांपल आल्सो। मु कहथिले गोटे होटल रुवांडा बोले गोटे मूवी देखियो, वेरी नाइस मूवी, ने बहुत ही हार्ट टचिंग मूवी। एक्चुअली रुवांडा रे जो रुवांडन मासाकर हेतला, रुवांडन जेनोसाइड ता ऊपर मूवीटा सेठी भी सेमती एमती धीरे धीरे तांको सोसाइटी रे एमती स्टार्ट हला वर्बल, तापरे एविडेंस, तापरे डिस्क्रिमिनेशन, तापरे फिजिकल अटैक, तापरे एक्सटर्मिनेशन। एटा जो हुटूस माने थिले से माने मेजॉरिटी थिले, माने टुटसी कम्युनिटी आ गोटे स्मॉल कम्युनिटी थिला, एमाने माइनॉरिटी रे थिले, एमान को ऊपर अटैक करथि। एंड ऑलमोस्ट आई थिंक 60 to 70% of the community were killed in one attack. So we were also discussing कि इंडिया अबे को फेज रे अछि। I was asking you कि धीरे धीरे हमें को फेज रे जाउछ। So there is also a disagreement कि इंडिया exactly को फेज रे को स्टेज रे अछि। So some people are saying कि verbal, कि कला evidence, कि कला discrimination. So anyway, that's a controversial topic, but we are also gradually, I feel personally feel कि somehow it is moving towards that thing. आमे से अल्पोर्ट स्केल ले धीरे धीरे ऊपर को जाउछ। Now the point is how to counter prejudice. Prejudice को आमे केमितिया एड्रेस करे। आमे एंते देखिथिले कि एटीट्यूड को केमितिया चेंज करे, समझा प्रेजुडिस को आमे केमितिया चेंज करिया। प्रथम कथा होछ प्रेजुडिस इज आल्सो काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो एटीट्यूड चेंज रो जति जति टेक्निक अछि, यू कैन राइट ऑल ऑफ द टेक्निक्स हियर आल्सो। तो प्रेजुडिस को सेही कॉग्निटिव डिसोनेंस भी हबो, सेही माने सेही सिमिलर पॉइंट्स विल कम हियर आल्सो। सो ऑल ऑफ दोस पॉइंट्स। Apart from that, there are certain specific techniques for changing prejudice. For example, there was one researcher called Muzaffar Sharif. So he gave one idea कि केमिति हमें इंटर ग्रुप एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करिया। गोटे दुईटा ग्रुप सपोज अछन, तो तांको हमें गोटे कॉमन बिगर टास्क दे दे। सो गोटे कॉमन बिगर टास्क दे देले तांको भीतर प्रेजुडिस टा रिड्यूस हो। ए रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट एटा गोटे गूगल करके देखियो, इट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। कोन हला कि से मुजाफर शरीफ कोन कले, दुईटा स्कूल बॉयज स्कूल चिल्ड्रन को दुईटा ग्रुप रे नेले। ओके, सेमाने गोटे कैंपिंग साइट को गले, कैंप को। सेठी सेमान को प्रथम कोन कला करा गला, दुईटा रैंडमली दुईटा ग्रुप रे डिवाइड करी तांकर गोटे ग्रुप आइडेंटिटी क्रिएट करा गला कि तमे होचो ईगल्स, तमे होचो रैटलर्स। ओके, वन ग्रुप माने एमती सब नाम देकी कि तमे होचो बहुत जणो कहला तमे बहुत स्ट्रांग, जणो कहला तमे बहुत चालाक। इन सम थ्रू सम वे दे क्रिएटेड दिस ग्रुप आइडेंटिटी। देन सेमाने कोन कले, पिला को किछि कंपीट करिया को गेम देले। जे कंपीट करिया गेम देले, सा देखली कि पिला माने बिना मतलब रे ही तांको भीतर प्रेजुडिस डेवलप हिया। माने गोटे ग्रुप पिला कहले अरे एई आरो ग्रुप पिला तो बहुत बदमाश, अन्य ग्रुप पिला ने कहले नहीं तुमे माने तो बहुत, आमे बहुत भलो तुमे बहुत खराब, ए ग्रुप कहले आमे भलो तुमे खराब। देख ए सब स्कूल चिल्ड्रन बोली कथा न, कथा होछ तांको थ्रू रे वी अंडरस्टूड ह्यूमन मेंटालिटी आल्सो। ए सेम जिंस एडल्ट को भीतर भी हुए। वी आर एक्सीडेंटली बोर्न इन वन कंट्री, वन कम्युनिटी, वन कास्ट, व्हाटएवर, दैट वाज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, राइट? बट बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट्स ऑफ बर्थ, जहां भी हमें जन्म ही गलु, नाउ समहाउ हमर तापर धीरे धीरे ग्रुप आइडेंटिटी फॉर्म हो जाए। तापर हमें कोन कहू कि ए अन्य ग्रुप माने एमाने होचन बदमाश, हम ग्रुप भलो अन्य माने बदमाश। ए सेम प्रिंसिपल समस्त पाखरे काम करे। ओके, इट इज वेरी लाइकली दैट इफ मोस्ट ऑफ यू हैड बीन बोर्न इन लेट अस से सऊदी अरेबिया, it is very likely कि माने you would have been very devout Muslims and you would have been very माने तुम्हारा prejudice था अन्य community। if सेमानकर लोक माने सपोज इंडिया रे जन्म हेतांते, एठी आम कम्युनिटी भितर हेतांते, इट इज वेरी लाइकली कि सेमाने आम भळे भी हेतांते। माने सेमाने से हिंदू धर्म को बेटर कहतांते, अन्य धर्म को खराब कहतांते। because at the end of the day it is not about religion at all। रिलीजन केबे किछ खराब जिंस कहया काहा सिखौछि? इट इज द पीपल जो माने निज निज भितर निज को डिवाइड करिकि they are thinking कि आमो ग्रुप बेटर, यांको ग्रुप खराब। so it is the people। so से ही अंडरस्टूड कि आमे एटा केमिति ताले काउंटर करिया, आमे ओटा सुपर ऑर्डिनेट गोल करिया। सुपर ऑर्डिनेट गोल माने ओटा कॉमन बिगर गोल। तो हां, एई केस रे कोन कले मुजफ्फर शरीफ, देन व्हाट ही डिड वाज कि जेतल देखले एमते बहुत प्रेजुडिस डेवलप होछि, देन व्हाट मुजफ्फर शरीफ डिड वाज कि समान को कहला गोटा कॉमन टास्क दियाला। कॉमन टास्क माने कहला कि तुम जाओ गोटा से पहाड़ उपरु ए गोटा जिंस आनियो, मिसी की करियो। ओके, एमितिया गोटा अरेंज करा गले, समान मिसी काम करिया को पड़ला।
सो ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି କାମ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜୁଡିସ୍ ଟା ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଗଲା। सो मुजाफर शरीफ कहले कि इंटर ग्रुप प्रेजुडिस जो हुए ताको हमें केमती रिड्यूस करिया बाय गिविंग देम ए कॉमन बिगर गोल। सेम जिंस यू कैन इवन यूज इन सर्विस। सपोज यू आर पोस्टेड एज डीएम, तुम अंडर किसी ग्रुप एम्प्लॉई माने डिवाइडेड हे किछि स्टाफ माने माने तांकर गोटे ग्रुप अछि अन्य मानकर आउट ग्रुप अछि। तमे कोन कहयो, तमे कहयो नुआ ओडिसा स्कीम रे समस्त काम करी बिकॉज़ दिस इज गोइंग टू टेक द स्टेट टू ए हायर लेवल। सो एमिति कोई कॉमन टास्क देले कोन हो, इट इज लाइकली दैट देयर प्रेजुडिसेस विल रिड्यूस। तार गोटे आ गोटे वर्जन देले आरनसन बोली, से गोटे जिक्सो क्लासरूम मेथड कहले। जिक्सो क्लासरूम मेथड कोन ना, से कहले कि से सेम जिंस आमे दुईटा ग्रुप को काम करेवा संगरे, बट आमे एमिते वे रे क्लूज को डिस्ट्रीब्यूट करिया डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप रे कि समस्त एकाठी आसले ही से जिक्सो टाको सॉल्व कर पारे। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ जिक्सो पजल। तो एमिते क्लासरूम रो डिफरेंट ग्रुप, सपोज दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2, दिस इज ग्रुप 3, ग्रुप 4, समस्त को सही पजल रो माने प्रॉब्लम रो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट दिया एंड तांको एकाठी काम करिया को कहा। ओनली व्हेन दे रियलाइज कि अरे मो पाखरे जो जति जिंस अछि सेति रे प्रॉब्लम टा सॉल्व होनी, मते यारो हेल्प भी दरकार, यारो हेल्प भी दरकार, यारो हेल्प भी दरकार, and then they will come together and that will reduce prejudice. This is also a method of reducing prejudice. Similarly, another method is to increased intergroup contact. Intergroup contact माने दीटा ग्रुप हेता है contact हमें सॉरी इंक्रीज करिया ताले prejudice कम जियो। यार रीजन होची कि prejudice डेवलप ही करे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कांटेक्ट एंड कम्युनिकेशन। ए जिंस तमे निजे भी फील करथियो, मे बी तुम रिलेशनशिप रे भी देखिथियो कि बेसी कथा न हले कहा संगरे, ओके, तुम गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड संगे धीरे धीरे बेसी झगड़ा हो। रादर इफ द कम्युनिकेशन चैनल इज ओपन देन देयर इज लेस फाइटिंग। तुमरो बहुत काम अछि तो देन दैट्स अ सेपरेट मैटर, बट अदरवाइज दिस इज आल्सो एन एग्जांपल, राइट। तो हमें ग्रुप लेवल ले प्रेजुडिस हुए ताको हमें केमिति एड्रेस करिया, ओपन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन चैनल को ओपन कर दियो। सो दिस विल सॉल्व आवर म्यूचुअल सस्पिशन एंड डाउट एंड दिस विल लीड टू लैक ऑफ नो प्रेजुडिस। ऑन द अदर हैंड जदि लैक ऑफ कांटेक्ट अछि ताले प्रेजुडिस हो। बट एई थ्योरी रो गोटे कैविएट दिया, कैविएट माने गोटे तांको वार्निंग दिया है। ये जो इंटर ग्रुप कांटेक्ट हमें करिया दैट शुड बी बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ इक्वल स्टैंडिंग। एमिति नहीं कि गोटे ग्रुप रो हायर स्टैंडिंग अछि आ गोटे ग्रुप रो लोअर स्टैंडिंग अछि। जदि सेमिति आला ताले ए ग्रुप मेंबर माने केबे भी एडजस्ट करिवे नहीं। वी हैव टू फर्स्ट एंसर कि दुईटा ग्रुप इक्वल स्टैंडिंग रे अछि। एमिति देखिथियो सपोज बागर होछि दुईटा साइड रे, पुओ घर साइड सपोज कि झियो घर साइड बहुत रिच, अन्य साइड माने एते सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एते नहीं, तो तांको भितरे प्रेजुडिस डेवलप हो। तो सेताले इंटर ग्रुप कांटेक्ट हमें यदि करिया, इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू प्रेजुडिस resolve what are difficult because the standing same नहीं. So first we have to ensure कि there is a equal standing, and second point is कि it should be conducted in a conducive or cordial environment. तो से contact गुड़ा सब cordial environment रे हबो, नहले झगड़ा झगड़ा होतवा वाला environment रे हेले तांको भितरे भी झगड़ा हो। So external effect is also important, right? And the final point is acculturation. It is specific for cultural prejudices. कल्चरल प्रेजुडिसेस माने गोटे कल्चर रो लोक अथवा अन्य कल्चर रो लोकन को जज करिया स्टार्ट करथि, सेटाको हंते कल्चरल प्रेजुडिस एंड ताको हमें केमते काउंटर करिया थ्रू एक्कल्चरेशन। एक्कल्चरेशन आई टोल्ड यू दैट वन पर्सन कम्स इन कांटेक्ट विथ वन पर्सन ऑफ वन कल्चर कम्स इनटू कांटेक्ट विथ अनदर कल्चर, सेतल तारो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ता बढ़े। सो वैल्यूज आर बीइंग ट्रांसमिटेड। सो इन दैट केस आल्सो ए पर्सन नो जहां बायस थियो प्रेजुडिस थियो दैट विल आल्सो रिड्यूस, राइट। And this phenomenon is known as acculturation. Society कथा रे society part रे हमें एटा डिस्कस करले acculturation, enculturation, ethnocentrism ये सब टर्म हमें डिस्कस करथि, राइट। तो मु तुम गारंटी दे कहू छै एग्जाम रे एते कथा एते भी डिटेल ले केही लिखिबे नै, वी हैव गॉन इनटू वेरी डेप्थ। 3 घंटा रे जति डेप्थ रे हम जाइछु माने आई डोंट थिंक देयर इज लेक्सिकन ने भी जिंस नै को मटेरियल कोठी नै। पॉइंट इज यूज दिस पॉइंट्स इफेक्टिवली। इफ यू यूज दिस पॉइंट्स यू विल गेट गुड मार्क्स, ओके। नहले अनन को भलिया जेनेरिक पॉइंट लिखियो जेनेरिक मार्क्स मिले। So that is the end of the class. If you have any doubts, please ask. By the way, हमरो next class रे हमें आ गोटे छोटो यार टॉपिक रहला एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड पढ़िया तापर इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़िया। This will take maybe 10 to 20% of the class and rest of the class is emotional intelligence. This is the last part of your section A. After that, from this class onwards, we will move on to section B. Okay, that is case studies गोटे देखियो, right? एपन आमे सेक्शन ए सब पढ़ते।
section A ର application ହଉଛି section B. Any doubt so far? Yes. Thank you, sir. Okay. I think we should wind up because it's already getting late. So Sir, thank you for your recorded video ଟା patience. ମିଳିବ ନା? Recorded video. If you have missed any class, then we will provide. Okay. Otherwise, we also request people to attend classes regularly. ठीक है? Okay. ठीक है, guys. Good night. We'll meet in the next class. We'll be updated.